देश हित में बहुत सारे कानूनों का परिवर्तन किया गया, बहुत सारे कानून खत्म किए गए। जब बने होंगे उस समय के लिए अच्छे होंगे, मैं ये नहीं मानती हूँ कि खराब थे, लेकिन जब देश बदलता है, देश की स्थिति बदलती है, देश में परिवर्तन होता है, उस समय बदलाव बहुत आवश्यक होता है। मान लो सपोज बचपन में जो हमें कपड़े मिले थे, हम बड़े हो गए, वो बचपन में कपड़े नहीं पहन सकते, तो परिवर्तन होता है। तो ये जो सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, देश हित में बहुत सारे एक्ट खत्म भी किए हैं, और ये भी एक्ट एक अफसरशाही एक्ट था, जिसको माननीय पीयूष जी एक देश हित में व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और उपभोक्ता का भी संरक्षण हो, ये दोनों विषय हैं। और मुझे लग रहा है कि आज आप सब लोग इस विषय पर चिंतन करेंगे, और चिंतन से जो विषय निकलेगा उसको हमारे मंत्री जी, हमारे मंत्रालय के सभी लोग उसको अंगीकार करेंगे। मेरा तो मानना यह है कि कोई भी रूल देश हित में होता है, लेकिन कहीं देश हित में बाधक बन रहा हो तो उसको खत्म भी करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि आदमी घर बनाता है, फिर उसको दिशा चेंज करता है, कई बार उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो ऐसे ही देश हित में हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री जी की आभारी भी हूँ कि इस मंत्रालय को, अभी मैं 9 बजे मेरे यहाँ कुछ लोग आए थे, मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तेज गति से मंत्रालय ने परिवर्तन किया है और काम कर रहा है, ये बात सही है कि जब मंत्रालय का मुखिया अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है। और मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि इस कोविड काल में, ये विषय अलग है लेकिन इसलिए उनको अभिनंदन करती हूँ, कोविड काल में हमारे विभाग के, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिले में हो, कहीं भी हो, सारा का सारा अधिकारी कोविड के समय पर उपभोक्ताओं को उनके घर में अनाज पहुंचाने में सक्षम हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का उसका श्रेय जाता है, इसके लिए पीयूष जी अभिनंदन के पात्र हैं। और अभी बहुत सारा विषय आपके बीच में छन करके आएगा, आप लोग अपने विषय रखेंगे। मैं तो मानती हूँ कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें विष भी मिला था, उसमें अमृत भी निकला था, उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे। तो आज की इस मीटिंग में आप सब लोगों के द्वारा जो मंथन होगा, तो मैं तो मानती हूँ कि बहुत सारा अगले सरकार चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए अमृत निकलेगा और उपभोक्ताओं और व्यापारियों का संरक्षण होगा। मैं इतना ही निवेदन करती हुई आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राजनीति में अपने अनोखे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। घर घर हो शौचालय का निर्माण, तभी हो लाडली बिटिया का कन्यादान। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने ये नारा दिया था। खुद कार सेवा कर हजारों टॉयलेट का निर्माण भी उन्होंने कराया था। चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने की थी। केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में कई ऐतिहासिक स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन के गवाह रहे। भारत सरकार ने कोविड महामारी के समय में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आपने आईटी प्लेटफॉर्म पर फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, और इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को लाभार्थी के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया गया। ग्राहकों को देवतुल्य यानी ग्राहक देवो भवा मानने वाले श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से अनुरोध है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पर अपने विचार साझा करें। आप सबको हृदय से नमस्कार। आज इस साल में हम सब इकट्ठा हुए हैं, और जैसा कि विषय है विधि माप विज्ञान की कार्यशाला के
बारे में जो हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उस पर फिर पुनर्विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, जो इस विभाग के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग का भी काम आप संभाल रहे हैं। हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, यहाँ बैठे हुए हमारे विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार जी, श्रीमती निधि खरे जी अतिरिक्त सचिव, अनुपम मिश्रा जी संयुक्त सचिव, और विशेष करके जो हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे ऐसे आगत अतिथिगण हैं, अतिथि देवो भव, मैं आपका हृदय से बहुत ही स्वागत करता हूं, सभी मंत्रीगण का और राज्यों से आए हुए पदाधिकारियों का। यहाँ उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे लोकसभा में भी मित्र रहे हैं, दुष्यंत जी चौटाला। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कृषि और मापतोल विभाग दोनों कार्य आप देखते हैं, श्री करुमुरी वेंकटा नागेश्वर राव, माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश, श्री इमरान हुसैन जी, माननीय मंत्री दिल्ली प्रदेश, श्री एल सुसिंद्रो मिताई जी, माननीय मंत्री मणिपुर, श्री रणेंद्र प्रताप स्वाई जी, माननीय मंत्री उड़ीसा, हमारे श्री आशीष पटेल जी, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शासन में उन्हें इस मंत्री के अलावा, इस प्रभार के अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन इत्यादि का भी जिम्मेवारी उनके मत्थे है। ऐसे यशस्वी मंत्री श्री अरुण कुमार उपनित जी, जो सिक्किम से आए हैं, और सभी उपस्थित हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए BIS के डायरेक्टर जनरल भी हैं श्री प्रमोद तिवारी जी, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों और मीडिया के हमारे भाइयों और बहनों, अभी जो बातें आई है, जो हम जानते हैं कि जितने भी देश के कोने कोने में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे हुए हैं, और इसलिए यह बैठक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। आपको यह बताते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनके नेतृत्व की जो सरकार है और उसके मंत्रीगण जो भी कहते हैं, नापे तुले और जो व्यवहार में प्रतिदिन करके गुजरते हैं, उन बातों को ही प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी भवन में 15 मार्च को 2022 को हमने विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया था, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए थे। उसकी समीक्षा के समय हमने पाया कि हमारे उपभोक्ता कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनहित या व्यापार हित में नहीं है, और इस प्रथा को समाप्त होनी चाहिए। और इसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, मैं बोलता हूं, पीयूष का मतलब ही होता है अमृत। अभी कह रही थी, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समस्वे। जहां इन्होंने समुद्र मंथन की बात कही है, सचमुच ये मंथन होगा।
और मैं तो उस घर, हमारा घर ही वहां है जहां वो पर्वत है जिस पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ था, मंदार पर्वत। तो मुझे खुशी है कि आपने आज हमारी बहन साध्वी जी ने बड़ा योग्य बात कही है। वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, हम जब बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो कृषि विभाग में उस समय भी सम्मिलित होता था, आज भी कृषि विभाग में वो विभाग सम्मिलित। पता नहीं, गांव गांव में जाते थे तो गांव के छोटे दुकानदार केवल एक ही आग्रह करता था, बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, ये तराजू है। और न्यायालय भी तराजू के उस पलड़े को न्याय देने का काम करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पदाधिकारी जी, ये लोग आते हैं और ये बांध रखा है इन्होंने, मजदूरी जैसे मजदूर हो। मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे विभाग के माध्यम से हमारे ओजस्वी और तेजस्वी मंत्री जी ने यह निर्णय आप सब लोगों के कंधे पर दिया है। और अभी इसके तुरंत बाद सत्रों में बैठ करके सभी मंत्री की अध्यक्षता में और इस पर मंत्रीगण विचार करेंगे। सभी सचिव भी कई राज्यों से आए हुए हैं। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के विचारों उपरांत कोई उचित निर्णय हो पाएगा और इंस्पेक्टर राज हम समाप्त करेंगे। ये इंस्पेक्टर राज नहीं चल सकता, वो देश के लिए खतरनाक है और इसलिए इंस्पेक्टर राज को खत्म करना हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है। और जहां तक उपभोक्ताओं का हित ही सर्वोपरि है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जो उपभोक्ता होते हैं, और मुझे लगता है कि आज हर क्षेत्र में उपभोक्ता विराजमान है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी लोग उपभोक्ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र हम सब लोगों को, देशवासियों को दिया है, उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे उत्पादन करता है, जो व्यापारी वर्ग है, हम उत्पादनकर्ता और व्यापारी वर्ग के बारे में भी विशेष ख्याल रखते हैं। आज जो यह मिथ्या प्रचार हो जाता है, ये व्यापारी है ना कि व्यापारी चोर है, मतलब वो सीना, मतलब व्यापारियों को चोर कहना ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो व्यापारी दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से आज हम राजनीति में हैं। राजनेताओं का चरित्र क्या है? राज करो और नीति धर्म का पालन मत करो, वो राजनीति वैधव्य के समान होता है। हर वर्ग में कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन संपूर्ण समाज को दोषित करना ये मुश्किल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि चाहे व्यक्ति हो या देश, उसकी प्रगति का आधार जो प्रबुद्ध बुद्धि वर्ग जीवियों का चिंतन, मनन और विचार के उपरांत उचित निर्णय, और वो आज होने वाला है इस मापतोल विभाग के माध्यम से। जहां तक हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, हम कह सकते हैं कि वो विश्व में परिवर्तन हो गया है और पूरा जगत और देश काल की सीमा रहित बाजार आज सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों या व्यापारी वर्गों के हितों का भी संरक्षण करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। यह कार्य जागरूकता, नियमों में पारदर्शिता, इसके बिना यह पूरा नहीं किया जा सकता और इसलिए मनुष्य को सुरक्षित रखती है जागरूकता, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक सहभागिता। बिना लोक सहभागिता का हम जागरण करके कुछ भी नहीं पाएंगे। और साथ साथ जागरूकता तो है, किंतु जागरूकता तब तक अर्थहीन हो जाता है जब तक उसको अधिकार से संपन्न नहीं किया जाए। इसलिए जागरूकता को अधिकार विहीनता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को भी अधिसूचित किया, तो उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021
इसको भी अधिसूचित किया गया। और इन दोनों नियमावलियों का उद्देश्य उपभोक्ता हितों का संरक्षण, संवर्धन और प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में अनुचित व्यापार प्रथाओं को उपभोक्ताओं की रक्षा करना तथा उत्पादक या व्यापारी वर्ग को भी कानूनी सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह कार्यशाला एक अभिष्ट परिणाम दे, इसके लिए हमने जहां राज्य सरकारों को अपने विचार रखने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, राज्य सरकार के माननीय कई राज्यों के मंत्रीगण हैं और साथ साथ हमारे कई सचिव स्तर के पदाधिकारी भी हैं। वहीं महत्वपूर्ण संगठनों जैसे ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन, फिक्की, एसोचैम रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और मुंबई ग्राहक पंचायत प्रतिनिधि को भी हम लोगों ने बुलाया है। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वह सबके हितों के संरक्षण के अनुकूल होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज की कार्यशाला में जो चर्चा का विषय विधिक माप अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों में उसके नियम, प्रक्रिया तथा पैकिंग प्रक्रिया को जो अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उससे हमें मुक्ति दिलाना है। हम अपराध मुक्त सुशासन चाहते हैं और अपराध अगर कोई बार बार करता है तो बताया गया उसके लिए भी नियम और कानून के तहत हम उनको निश्चित रूप से दंडित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि छोटे दुकानदार त्राहिमाम करते हैं और आज भी हम जब क्षेत्र में या दूसरे देश के दौरे में, राज्यों में दौरे में जाते हैं तो आज भी ये शिकायतें आती है कि बाबू हमारे घर पर आए और हमने दिया नहीं, एक नहीं, हमने अभी अपने क्षेत्र में सासाराम में मुझे डीएम को कहना पड़ा कि ये तमाम जो पदाधिकारी को आप अगर नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से वहां जनता आक्रोशित है और अगर उनका आक्रोश प्रस्फुटित हो जाएगा तो ज्वालामुखी के अंदर कभी भी वो विस्फोट होने के बाद सब जल जाएंगे, बस हो जाएंगे। और मैंने तुरंत उन लोगों को, ऐसे पदाधिकारियों को वहां से हटाया भी, कार्रवाई के लिए भी बिहार सरकार को मैंने लिखा। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया या पैकिंग प्रक्रिया को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया, उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत और उन प्रावधानों को यदा कदा जो उल्लंघन किसी असावधानी वश हो गया है तो या जानबूझकर किया गया तो उन्हें अपराध की श्रेणी में न माना जाए। सामान्य भूल चूक अगर हो जाता है तो संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं उस पर भी विचार किया जाए और हमारी सरकार अपराध एवं सशक्त कानूनों के नियमों में शिथिलता बरत रही और ऐसी शिथिलता कर या व्यापारी, उपभोक्ता सभी के हितों की रक्षा हेतु कटिबद्ध है, हम संकल्पित हैं। और आज के इस यहाँ पर कार्यशाला में जहाँ हमारा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक विकसित कर रहा है, हम दुनिया भर में भारतीय मानक ब्यूरो को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वह उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, हॉलमार्किंग और अनिवार्य पंजीकरण जैसी योजनाओं पर काम कर रहा है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपना कार्य सुगमता और सरलता से कर सकें और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि आज जितना ही संरक्षण उपभोक्ताओं का करते हैं उतना ही संरक्षण सुविधा सहूलियत व्यापारी वर्ग को भी उपलब्ध कराते हैं। पारदर्शिता, पारस्परिक विश्वास, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और संवर्धन इसका ही प्रतीक होता है। इस उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे, विचार होगा और विचारों उपरांत जो निर्णय होगा वो शिरोधारी होगा। भारत सरकार आप सबको इसके लिए आमंत्रित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी, स्वस्थ, आनंद रहे, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय, आपके दिशा निर्देश के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। Shri Piyush Goyal ji is the Honorable Minister of Commerce and Industries from 2019 till present, Consumer Affairs, Food and Public Distribution 2020 till present, Textiles 2021 till present, and Leader of the Rajya Sabha 2021 till present.
He was earlier the Minister of Railways 2017 till 21. He has also held the additional charge of Minister of Finance and Corporate Affairs twice in 2018 and 19. His previous portfolios include Minister of Coal from 2014 till 19, Minister of State of Power, New and Renewable Energy 2014 till 17, and Mines 2016 till 17. As Minister of Railways, over the last 2 years of its tenure, Railways achieved its best ever safety record of zero passenger deaths in accidents. This was achieved through holistic measures such as elimination of unmanned level crossings from the broad gauge network, production of safer coaches, etc. Additionally, Mr. Goyal oversaw the launch of the first indigenous semi-high speed train Vande Bharat Express between Delhi and Varanasi. The Power, Coal and New and Renewable Energy Ministries led transformational changes in India's power sector, including the fast tracking of electrification of nearly 18,000 unelectrified villages in some of the remotest and inaccessible parts of the country. The rollout of the most comprehensive power sector reform ever, Uday, and the success of the world's largest LED bulb distribution program, Ujala, for energy efficiency, and massive proliferation of renewable energy through the world's largest renewable energy expansion program. Other achievements include the elimination of coal shortages to improve the energy security of India and successful conduct of transparent e-auctions of coal blocks. He has also received the fourth annual Carnot Prize in 2018, recognizing the path-breaking transformation in India's energy sector. Ladies and gentlemen, I would now be inviting the Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to release the e-books after a brief introduction. Legal Metrology Packed Commodity Rules 2011 were first notified in 2011. Since then, it has been amended 13 times to ensure that it keeps pace with changes in the business environment. However, all these amendments were not available in one place in a consolidated manner. Honorable Minister had in the past advised the department that on the lines of the Reserve Bank of Indian Master Circular, all the changes are reflected in one place so that one does not have to refer to the earlier versions. Sir, आपके दिशा निर्देशानुसार, the department has prepared a compilation of all amendments to package commodity rules in the form of an e-book. I now request the Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to kindly release the e-book. Ladies and gentlemen, we release the e-book. And now the release of frequently asked questions on legal metrology packed commodity rules 2011. On legal metrology packaged commodities rules 2011, there are many doubts among various stakeholders, and therefore, to bring clarity, few FAQs have been compiled. Department has prepared a legal metrology packaged commodities rules 2011 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न in the form of an e-book. I once again request Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to kindly release the e-book. Thank you, sir. Both the e-books released today would be greatly helpful to all the stakeholders associated with the legal metrology ecosystem. The book after release shall be available on the website of Department of Consumer Affairs. I request all present here to give wide publicity to it. And now, ladies and gentlemen, it is indeed an honor to invite on the dais Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to address the August gathering. Let's welcome him with a thunderous round of applause. हमारे विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, माननीय सौ निरंजन ज्योति जी, सभी गणमान्य राज्यों के मंत्री जो यहाँ पे आए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स श्री रोहित सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती निधि खरे जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनुपम मिश्रा जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के
श्री प्रमोद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित केंद्र और राज्य सरकारों में इस विषय से संबंध रखने वाले सभी अधिकारीगण, कई संस्थाओं के भी आज प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पे उपभोक्ताओं के साथ जो संबंध रखते हैं। कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के भी मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मीडिया के मेरे मित्र भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अच्छा लगता है जब सभी विषय को गंभीरता से लेके गंभीरता उसकी समझते हुए चर्चा के लिए समय निकालते हैं, समय देते हैं, विषय की गहराई में जाके उसमें से समाधान निकालने के लिए जब संयुक्त प्रयास होता है सभी का, तब मैं समझता हूं कि आउटकम्स अच्छे मिलते हैं। मेरी तो उम्मीद रहती थी कि ज्यादा राज्यों के मंत्री आए और सौभाग्य हो इस महत्वपूर्ण चर्चा में। सर्टेनली थोड़ा दुख होता है कि राज्य इस विषय को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए, और अच्छा रहता अगर बाकी राज्यों के भी मंत्री आते तो एक सभी के व्यूज टेबल पे आते, सभी की सहमति अच्छी बनती। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री आए हैं वो शाम तक रहें और देखें कैसे इस पूरी चीज और इसके साथ भी अगर कोई और जुड़े हुए उपभोक्ता मामले के विषय उनके संज्ञान में हो तो उसके बारे में जितना हमें इनपुट दे सकें हम उससे लाभान्वित होंगे। हमारे काम की प्रक्रिया में, हमारे कानूनों में काम को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें अगर कोई और सुझाव भी हो आज के दिन भर की बैठक में और उसके बाद भी, तो हम उसका स्वागत करते हैं, खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करते हैं। पर ये जरूर इन्फॉर्म करना, जो जो मंत्री नहीं आए हैं, जो जो राज्यों के और उनके अधिकारी आए, होपफुली यहाँ पे होंगे, please do convey to your ministers that we missed them and we would have been very happy if they would have joined us and participated in this very important discussion. आज जो भी निर्णय लेना है, आज शाम तक उतना को निर्णय लेके ही उठेंगे और मुझे लगता है हमारे पास एक अच्छा नॉर्थ ईस्ट से भी है, नॉर्थ इंडिया से भी है, दक्षिण से भी है, केंद्र दिल्ली से भी है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, तो मुझे लगता है वी आर वेल रिप्रेजेंटेड और इनकी सहभागिता हो तो बाकी सबकी हम समझे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनकी सहमति है हमारी बातों से। और इससे ज्यादा मतलब हमने कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के दिनों में चर्चाएं की, हमने कई बार इस विषय पे यहाँ पे भी चर्चा की है। अब इससे बियॉन्ड तो और ज्यादा कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो सकता, तो आज कुछ आउटकम्स के साथ ही हमने उठना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आता है जो काफी फेमस है, एक किताब में पढ़ा था, अ गुड डिस्कशन increases the dimensions of everyone who takes part. ऐसा नहीं है कि जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ हो रहा है या केंद्र सरकार को या इस विभाग को लाभ हो रहा है, चर्चा में से आप सबको भी लाभ होता है, आप सब भी उसमें से कुछ निचोड़ लेके जाते हैं, आप सबको भी अपने अपने काम में कुछ ना कुछ नए तरीके से, जैसा दीदी ने कहा, परिवर्तित रूप से सोचने के लिए, आगे काम करने के लिए शायद कुछ नई विचार आए, कुछ प्रोत्साहन मिले, तो इससे ये गिव एंड टेक होता है। डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे और इसीलिए आप सबने समय निकाला, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आज इस कार्यशाला में उपस्थित है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी किताबें क्यों लेके आया। आजकल मैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूं और ये भी मुझे एक राज्य के मंत्री ने ही दी थी कुछ समय पहले, अब वो नहीं है मंत्री, लेकिन जब उन्होंने दी थी और मैंने पढ़नी शुरू की तो आप सोचिए कितनी पुरानी है। कब चाणक्य ने
इस विषय को गंभीरता से पूरा डॉक्यूमेंट किया। और ये मैं इससे कह रहा हूं कि हम तो आज बैठे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के सब कानून देखते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया द चीफ कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अर्थशास्त्र में लिखा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया। मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, पनिशमेंट की सिर्फ एक ही लाइन है, ओनली वन लाइन। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये काम बड़े जिम्मेदारी का है। तो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जितने अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, पहले कैसे होता था, क्या होता था, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। उसके बारे में जाऊंगा तो मुझे अपने खुद के स्वयं के अनुभव भी याद आएंगे जब मैं बिजनेस करता था। फिर याद आएगा मुझे कितना हैरेसमेंट झेलना पड़ा है इस विभाग से। फिर याद आएगा किस तरीके से आके बंदूक रख के सिर पे बाकी जो भी होता था। तो मुझे वो याद नहीं करना, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है याद करना, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बल दिया गया कि हम सबकी सामूहिक कर्तव्य है। ये जो विषय है, ये ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और एक खुली छूट मिल गई। ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय ना हो। पर हमारा कर्तव्य उतना ही व्यापारी की तरफ या उद्योग की तरफ भी है कि उनका भी जीना हराम नहीं कर सकते, उनका भी जीना या उनको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनका भी काम सरल तरीके से चले। कौन बेईमानी करता है और क्या बोनाफाइड मिस्टेक है, उसको बड़े सरल तरीके से सब समझते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे, कहां पे मेंसरिया है और कहां बोनाफाइड है डिसीजन। उदाहरण के लिए, जहां पे वेट एंड मेजर का कैलिब्रेशन होता है, अगर वहां कुछ गलत हो तो पूरी सख्ती से हमें उतरना चाहिए, क्योंकि वहां फिर बोनाफाइड नहीं माना जा सकता। आखिर आपको एक लाइसेंस मिला है, आप सर्टिफाइड अथॉरिटी हैं, जिसके सर्टिफिकेट की इतनी वजन है, उसका खुद का इतना वजन है कि उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। और वहां कोई गलत करे तो मैं आखिरी व्यक्ति हूं जो कहूंगा वहां कोई रियायत देनी चाहिए। इसमें भी लिखा है, all measuring instruments shall be inspected and stamped once every 4 months on payment of stamping fee। अब सोचिए कितने सदियों पहले की ये विचारधारा है। फिर पूरी डिटेल में कंट्रोल भी लिखा है कैसे होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स shall be inspected and stamped once every 4 months, और ब्रैकेट में आगे लिखा है ऑल डिटेल्स अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स 1। सोचिए तब से इसके बारे में कितनी गंभीर चिंता थी कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और फिर बाकी अलग अलग चीजें हैं। तो रियली कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का बेसिक डॉक्यूमेंट इतना है, दैट्स इट। छोटे मोटे अपेंडिक्स में थोड़ी डिटेल्स और है। और आज पे आए अगर, ये है आपकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अलग अलग उसके पहलू और उसके रूल्स। कौन सा व्यापारी, कौन सा उद्योग, मैं तो समझता हूं बड़े से बड़ा भारत का उद्योग, कौन सा उपभोक्ता इसके ऊपर समझ के कार्रवाई कर सकता है। मेरे समझ के बाहर है, मुझे मालूम नहीं अधिकारियों को ज्यादा इसकी जानकारी होगी। मैं अभी अभी इसका एक हिस्सा देख रहा था, मुझे अभी ध्यान आया बैठे बैठे तो एक किताब मंगाई। भाई मार्जिन ऑफ एरर क्या दिया, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। तो अधिकारियों ने मुझे अभी मार्जिन ऑफ एरर बताया, शायद 10 किलो पे 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम्स, 10,000 ग्राम में
1.5 ग्राम। अब मैं उसको इससे नहीं आर्ग्यू कर पाया क्योंकि मुझे बता दिया गया ये अंतरराष्ट्रीय मानक है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वैसा है तो मैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से दूर नहीं जा सकता। इनफैक्ट शायद 50 किलो पे तो वो 7.5 ग्राम है। मेरी समझ के बाहर है। जो गोनियों में आप अनाज देते हो, हमारा ही विभाग है ना दूसरा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो 50 किलो की गोनी होती है, उसमें 7.5 ग्राम कोई मेजर करके बता दे मुझे। 7.5 ग्राम की एक्यूरेसी पे हम खरीदते हैं। आई थिंक इट विल बी एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम। मैं इससे ये कह रहा हूं कि हमने सबने मिलके सोच समझ के और सरलीकरण करना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस ईमानदार व्यवस्था की तरफ जाए। जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा क्या संभव है क्या नहीं है। हो सकता है कि आपके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो हमें जाना है, लेकिन वो किन प्रोडक्ट्स पे किस टाइप की चीज के ऊपर अप्लाई करेगा। हाँ, अगर कोई सोना खरीदने जाए तो शायद ग्राम्स में भी मिलीग्राम्स की टॉलरेंस होगी। ऑब्वियसली 50,000 रुपए किलो का कितने का सोना बिकता है, पर 50,000 रुपए किलो का एक प्रोडक्ट और 20 रुपए 15 रुपए 50 रुपए का एक प्रोडक्ट जो ठेले पे दुकानदार अपना सब्जी वाला बेचता है, ये तो सभी को अप्लाई करता है ना। और प्रताड़ित कौन किया जाता है सबसे ज्यादा? छोटा ही आदमी। जो आपने 1 लाख केसेस के अभी आंकड़े दिए, अभी मैं आंकड़े भी देख रहा था, 1 लाख कुछ केसेस के आंकड़े थे ना आपकी प्रेजेंटेशन में। 1,13,000, 1,26,000, फिर कोविड काल में थोड़े कम हुए पिछले 2 सालों में। अब आपने वो आंकड़े देखे सबने। कैन यू पुट दैट स्लाइड ऑन अगेन प्लीज, whoever is controlling the computer? अब मैं आप सबके को रिक्वेस्ट कर जरा गंभीरता से देखें। अब इसको आप गंभीरता से देखिए इस स्लाइड को। मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े वैसी ये स्लाइड है। और मीडिया के हमारे बंधु इस रूम में हैं। मैं इससे मीडिया को भी साथ में रखा इस सत्र में कि मैं चाहता था कि मीडिया इस बात को देश भर में उजागर करे और उससे देश के जो सब राज्य हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है डिक्रिमिनलाइजेशन इस एक्ट को, उन सबका पर्दाफाश हो। क्या सोच है वो, क्या आपके मन में क्या खोट है जिसके कारण सब इस डिक्रिमिनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं राज्य। ये बात जनता के बीच में जानी चाहिए। अब आप देखिए, पहला ऑफेंस बुक होता है, कंपाउंड भी हो जाता है, 2-5 हजार 2,000 1,500 जो भी फीस होती होगी, उसके अंदर मैं नहीं डिटेल में जा रहा। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, मुझे अब इस विभाग में 1.5 साल हो गया और 1.5 साल से इस काम के पीछे लगने के बाद कुछ मात्रा में दुखी होकर आज की एक कार्यशाला रखी है। मुझे आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। लीगल मेट्रोलॉजी के कुछ ऑफिसर्स मुझे सुनाते रहते हैं, नहीं साहब लोग इतना डर जाते हैं पहला ऑफेंस के बाद कि दूसरा ऑफेंस होता ही नहीं है। इस देश में तो फांसी की सजा भी जिस चीज पे, उस पे भी सीरियल ऑफेंडर्स और रिपीटेड ऑफेंडर्स इससे ज्यादा होंगे फांसी की सजा के। अब पहला जो ऑफेंस है,
1,13,000, इसमें सबसे अधिक है फॉर यूज ऑफ अनवेरिफाइड वेट और मेजर। अब एक बार उसने ये ऑफेंस किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर, उसके बाद पूरे साल भर, किसी कोई अप्रैल में भी बुक हुआ होगा, पूरे साल भर उसने कभी नहीं किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर। तो फिर तो हर साल ये आंकड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, अभी आस्ते आस्ते जीरो पे आ जाना चाहिए था। अगर 11 महीने के लिए आदमी सुधर गया तो लाइफ लॉन्ग सुधर जाएगा। पर जब डिटेल्स निकाली तो सेम ऑफेंडर को 3 बार इन 4 सालों में चालान कटा है। मैं आपके सामने सिर्फ ये प्रश्न उठा रहा हूं। सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स आए हैं ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट किया या अपने अपने मंत्रियों को या सरकारों को कन्विंस कर दिया कि इस पे डिक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। इतना आपकी ताकत है और 2-3 हजार रुपए के चालान की इतनी ताकत है कि आदमी फिर 11 महीने कोई ऑफेंस नहीं करते और फिर अगले साल फिर से आप पकड़ लेते उसको। इसमें उपभोक्ता का कहां लाभ हो रहा है? अच्छा, वैसे तो ये जरूर बात सच है कि कई लोग मिसयूज भी करते हैं, और कई लोग, अगर ऐसे आप 50 किलो पे 7.5 ग्राम का, चाहे अंतरराष्ट्रीय मानक ही क्यों ना, अगर आपकी टॉलरेंस है तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू सी कि आपके यहाँ सिस्टम क्या है। मेरा तो मानना है कि जो अधिकारी जाके दुकान पे चेक करता है, मुझे तो उसकी मशीन भी कैसे 7.5 ग्राम 50 किलो की मशीन एक्यूरेट रहेगी जब वो उसको उठा के लेके जाएगा अपनी गाड़ी में या जैसे भी जाता होगा। गाड़ी तो होगी सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स के पास। पर गाड़ी में भी लेके जाए और दिन में 3 जगह लेके जाए तो चौथी जगह तक उसकी एक्यूरेसी रह ही नहीं सकती है। फिर मुझे समझाने की कोशिश की, मैं इससे बाहर गया था समझने के लिए, क्योंकि आज ध्यान आया कि मैं उतनी डिटेल में नहीं गया हूं कि अफसर चेक कैसे करते हैं दुकान में जाके। बोला नहीं, वो मशीन लेके जाते हैं, उसके पास उसका स्टैंडर्ड अप्रूव वेट है, उससे कैलिब्रेट करता है फिर मशीन, और फिर व्यक्ति का वजन उस पर चेक करके डिसाइड करता है। तो अगर ये बात सच है कि आपको हर बार चेक करने के पहले अगर आपको ही खुद की मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? तो आप मुझे बताइए कि दुकानदार की मशीन जो दिन में 50, 100, 200 बार सामान बेचती होगी, वो क्या हर बार सामान बेचने के पहले, हर 10वीं बार सामान बेचने के पहले कैलिब्रेट कर पाएगा? या जाएगा कोई दुकान में लैब में कैलिब्रेट करने के लिए? आपकी खुद की इंस्पेक्टर की मशीन जब थोड़ी सी भी हिलती है तो आपको रिकैलिब्रेट करनी पड़ती है। पर ये आंकड़े ही पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, मैंने ये अक्टूबर 20 से शुरू किया था ना मामला, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए 21-22 मेरे मन में था कि अब ये मामला उजागर हुआ है तो शायद अब सेकेंड ऑफेंस बढ़ा के जस्टिफाई करने की कोशिश होगी कि जरूरी है, क्योंकि लगभग कई राज्यों ने इसको ऑब्जेक्ट किया, पर वो भी नहीं है। सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, और ईमानदारी ऐसी आ जाती है एक 4,000 2,000 के चालान के बाद कि 3 ही सेकेंड ऑफेंस 20-21 में। कोविड में दुकानें कुछ समय के लिए जरूर बंद हुई थी, पर ऐसा नहीं हुई थी कि सेकेंड ऑफेंस कोई कर ही नहीं रहे। अच्छा, वैसे तो कोविड में दुकानें बंद हुई 3 महीने के लिए सब, उसके बाद जब खुली होगी तब तो वैसे ही बहुत केसेस मिल जाते सेकेंड ऑफेंस वाले। अब इस पे आप लोग सब विचार करना, और फिर आज की जो कार्रवाई होगी दिन भर की, उसके बाद मैं समझना चाहूंगा कि क्या सबकी सोच है, कैसे अंतरराष्ट्रीय मानक को रखते हुए क्या हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस पे आ सकते हैं, क्या अलग अलग वस्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस या सोचने के विचार करने की आवश्यकता है। जो ये 1 लाख केसेस है उसका कितना एनालिसिस आप सबने किया है? क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि गहराई में जाएं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के ऑफेंडर्स हैं?
क्या ठेले वाले के ऊपर वही मापदंड लगेगा जो सोने की दुकान पे लगता है? ये सब चीजों को मैं समझता हूं। मेरा पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस एफर्ट वाज कि आप सबका मन खुले और आपके दिल में थोड़ी संवेदना हो। तो भाई अभी तो सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, ऐसी भी कोई हालत नहीं है कि सरकार में काम करने में कोई तकलीफ है। क्या हम थोड़ी संवेदना के साथ एक ऐसी अच्छी ईमानदार व्यवस्था इस विषय में बना सकते हैं क्या देश भर में? और जो कैलिब्रेट करते हैं भी उसको जरा भी रियायत मत दीजिए, जो सर्टिफाई करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर जाके गलत वेट के बावजूद अप्रूव करते हैं, उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई मंत्री भी इंटरफेयर करते हैं आपके काम में और बोलते हैं कह रहे उसने गलत वेट था पर उसको छोड़ दो, तो वहां पे भी आपको रियायत नहीं देनी चाहिए, आपको कंप्लेन करना चाहिए। और जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग भी कार्रवाई करेंगे, या केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हम पे कार्रवाई करें, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन हम सबको मिलके इस पूरे विषय को गंभीरता से देखना पड़ेगा। आप सबको भी अपने अपने राज्यों में, और जो नए मंत्री नहीं आए हैं उनके जो अधिकारी आए हैं, आप सबको, and please convey this to all the ministers who haven't come, and my displeasure that they are not coming. और मेरे ऑफिस में भी जरा देख लें कि जब उन मंत्रियों को मेरे से काम पड़े और समय मांगे तो हम भी बहुत बिजी हो जाएंगे उस टाइम पे। और क्या तरीका है? आखिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से मंत्री आ सकते हैं, सिक्किम और मणिपुर इतनी दूर से हमारे मंत्री आ सकते हैं। यार विषय मंत्री आने नहीं आने का नहीं है, विषय है कि कैसे उपभोक्ता का भी कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन समझदारी से कानून बने और गलत काम इस विभाग में कैसे बंद हो, इसके ऊपर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर कौशल्या ने 2500 वर्ष पहले से भी अधिक, शायद मुझे इतना, अगर उन्होंने भी इस बात की चिंता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य के रूप में देखी, तो मैं समझता हूं हम सब भी उससे कुछ दिशा निर्देश दें, कुछ सीखें समझें। देश का विकास करना है, देश का तेज गति से विकास करना है, उसके लिए लोगों को सहूलियत मिले, व्यापार करने के लिए सरलता से व्यापार हो सके, बेबुनियाद समय लोगों का बर्बाद ना हो, लेकिन साथ ही साथ हर जगह ईमानदार व्यवस्थाएं स्थापित करने की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अटूट भी है और अटल भी है। उनका वाक्य एकदम फेमस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये हम सबके लिए अप्लाई करते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सिर्फ जागो ग्राहक जागो एक मात्र स्लोगन नहीं बना के छोड़े, विषय को गंभीरता से देखें, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करें, कंज्यूमर्स को समझाएं कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप आवाज उठाइए, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद कोई और गरीब उसका नुकसान भुगतेगा। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी आज उपस्थित हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा, और इसमें खासतौर पे जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हमारे जो मिडिल क्लास है, उसने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पे इस विषय को उजागर करना चाहिए। कई बार सामान्य आदमी इतना ज्यादा उसके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा
इन चीजों को सोचता है कि भाई ये तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही बहुत अनाज दे दिया, 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने 25 महीने तक मिले, बहुत अनाज दे दिया। गरीब आदमी शायद सोच सकता है कि ठीक है, आधा किलो कम मिला है या 100 ग्राम कम मिला, मैं कहाँ भागूंगा, कल वो फेयर प्राइस शॉप वाला मेरे पीछे पड़ जाएगा या अधिकारी मुझे ही तंग करेंगे और मैं कहाँ कंप्लेंट करूं। हो सकता है उनके लिए कठिनाई भी हो, पर जो जागृत समाज है, जिसको इन चीजों की चिंता है, जिसको ध्यान आता है कि छोटी छोटी चीजों से समाज बिगड़ता है, समाज की सोच बिगड़ती है। और मैं कई बार यह उदाहरण देता हूं कि अगर 6 दुकानें हैं और उसमें एक व्यक्ति भी गलत काम करता है, तो बाकी 5 दुकानों को या तो अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा अगर वो ईमानदार रहना चाहे, या आस्ते आस्ते दूसरा, तीसरा, चौथा सब बेईमानी करनी शुरू करें, तो वापस लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। पर क्या ये इस देश और समाज के लिए अच्छा है? क्या हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के पास छोड़ना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को ये विरासत में हम सब की वजह से ये छोड़ के जाना चाहते हैं? इस पे जरा आप सब लोग विचार करिए। और मैं समझता हूं हम सबका संयुक्त दायित्व है, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं भी अच्छी हो, सरल हो, बेईमानी बंद हो, लेकिन उपभोक्ता का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और प्रैक्टिकल तरीके से, रिकॉग्नाइजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों की भी सुननी पड़ेगी कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है कि नहीं। क्या आस्ते आस्ते हम कोई तरीके से सबको डिजिटल वे स्केल्स की तरफ लेके जा सकते हैं क्या, कि पुराना ही वो वजन काटा अभी तक चल रहा है? डिजिटल में किस तरीके से उसको रखना पड़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से क्या उस पर इंपैक्ट आता है। आखिर अभी आप बता रहे थे जब मैंने पूछा आपको कि ट्रांसपेरेंट कुछ लग सकता है क्या, जो ट्रेडिशनल था कि यहाँ पे जो वेट है उसके अंदर पीछे होल कर देते थे, ये तो पुराने जमाने की बात है, पता नहीं आज भी चलता है कि नहीं। तो एक सुझाव किसने दिया था कि जो भी लोहे का वेट है अगर उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग हो जाए, या कोई ट्रांसपेरेंट वेट ही बन सकता है क्या इस एक्यूरेसी का? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ साइंस पर्सन, मैं तो सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे टेक्निकल इसकी इतनी जानकारी नहीं। पर कैन वी फाइंड वेज जिससे उपभोक्ता को भी ध्यान में आए कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे अधिकारी जो भी इस विषय को देखते हैं, जमीन पे धरातल पे जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेहरबानी करके इसको कैसे बिना किसी का शोषण किए अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करें, बोनाफाइड और मैलाफाइड के बीच में डिफरेंशिएट करें, एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करें लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेकिन स्पिरिट को भी अहमियत है, कानून सिर्फ अक्षरशः जो लिखा होता है वही नहीं होता है, उसका प्रियम्बल बताते हैं उसकी स्पिरिट क्या है, कानून का टाइटल बताते हैं उसकी स्पिरिट क्या है। और वास्तव में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब ने प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें आप सबकी सहमति आवश्यक है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट तो आप लोग करते हैं। मैं रूल्स भी देख रहा था, माय गॉड, ये रूल्स तो, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, पर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। कोई एक पैराग्राफ, एक जगह रूल मैंने देखा जिसमें 8 अलग अलग पैराग्राफ्स को रेफर किया गया, मतलब वो समझने के लिए शायद ऑर्डिनरी लॉयर भी नहीं, हमको कोई सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। नहीं सर, जो है सर बाद में आप अपने जब आपका सेशन होगा उसमें, तो मेरा सुझाव है कि सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, इन सब चीजों को हम बहुत सीरियसली काम करें, और नॉन कंप्लायंस जहां भी है
उसको कैलिब्रेटेड वे में कैसे इसको हमने एक्शन लेना है, क्या तरीका हो सकता है जिससे ईमानदार व्यवस्थाएं नीचे तक पहुंचे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे अच्छा हो सकता है, पर साथ ही साथ बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस आए, निवेशकों को कॉन्फिडेंस आए कि भारत में आओ, आपके साथ अगर आपने गलत किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जरा भी कुछ बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जहां भी ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन दे दिया जा सके, उसके प्रति भी हम सब सहानुभूति से काम करेंगे। ये बदलाव हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज वगैरह को भी एक्रेडिट किया है इंस्पेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए। उन सब में भी ये मैसेज क्लियर हो कि एकदम ईमानदार व्यवस्था से करना है। अगर गलत काम एक बार, दो बार, तीसरी बार पाया जाए तो उनको ऐसा ब्लैकलिस्ट करे कि सिर्फ यहां नहीं, पूरी लेबोरेटरी और कोई काम ना कर पाए। वहां उस स्टेज पे डर होना आवश्यक है कि उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, हमारे इंस्पेक्टर्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी नौकरी है, उनका काम है। लेकिन अगर गलत काम को इस तरीके से चला जो अभी स्लाइड हमने देखी कि भाई पहली बार कंपाउंड करके उसके बाद खुली छूट है या कुछ और होता है, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, तो फिर उसके ऊपर हम जरा भी छोड़े नहीं। आप लोगों ने जो कैंपेन किया है रिसेंटली हेलमेट्स पे किया, हेलमेट्स की गुणवत्ता देखने के लिए, उसमें जो कल्पना के बाहर जानकारी आई, मतलब ऐसे हेलमेट्स बिक रहे थे जो प्रोटेक्शन छोड़ो शायद और डैमेज कर दे अगर कोई एक्सीडेंट हो, बॉडीली डैमेज हो जाए, क्यों अगर वो अंदर ही क्रश हो जाए तो और ज्यादा नुकसान होगा जिसने पहना। मैं आपको बधाई दूंगा कि आप सबने उस पर बहुत अच्छा काम किया। देशव्यापी हेलमेट्स के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के दृष्टिकोण से कार्रवाई की गई है। ऐसे ही प्रेशर कुकर्स, कुकिंग गैस सिलेंडर्स, इन सब के ऊपर भी ऑफ लेट काफी काम हुआ है, काफी चिंता की गई है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। पर अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, अगर भारत के बने वस्तुओं को विश्व भर में अहमियत और उसका सही स्थान दिलाना है, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बी वोकल फॉर लोकल एंड टेक लोकल टू ग्लोबल, अगर हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मैं समझता हूं आप सबका काम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे वो क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देश में बिके, हर सामान अच्छा बने जिससे देश विदेश में एक ही सामान जाए। मैंने पहले भी कहा था, वो मेड फॉर एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसको अपनी सोच और देश की सोच से निकालने की आवश्यकता है। क्वालिटी चाहे देश में बिके चाहे विदेश में, एक ही होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। वन नेशन वन स्टैंडर्ड की दिशा में भी काफी प्रगति हो रही है, हमें उसको भी और तेज गति से बढ़ाना है। मैं समझता हूं 20 मई को जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का अवसर होगा, तब तक हम ये कोशिश करें कि हम सब मिलके एक कैंपेन रूप में अगले 10-11 दिन इस विषय को रोज चाहिए तो डिस्कस करें, हैमर करें, विचार विमर्श करें, लोगों की सलाह मशवरा करें, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इस पे मंथन हो और 20 तारीख तक कुछ ना कुछ एक नया पारदर्शी ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला और साथ ही साथ ग्राहकों को की चिंता करने वाला एक अच्छा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की दिशा में प्रगति करें, अच्छी प्रगति करें या उसको तैयार करें, पब्लिक डोमेन में डालें फाइनल कंसल्टेशन के लिए। इससे देश का भी हित होगा, उद्योग और व्यापार का भी हित होगा और उपभोक्ताओं का भी हित होगा।
आप सब आए, उसके लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज की ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी और आज का ये दिन सभी की याददाश्त में रहेगा कि इस दिन हमने फाइनल किया था देश के भविष्य को, भविष्य में सरल व्यवस्थाओं को और ईमानदार व्यवस्थाओं को। अच्छे दिन भर के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। अलग अलग मंत्री अलग अलग विषय के पैनल को चेयर करेंगे या को चेयर करेंगे और मिलके हम एक नया इतिहास रचे। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है। उस दिन ये अच्छा कार्य हो रहा है, मैं समझता हूं। इज दैट राइट? नहीं, 7 तारीख को था, माफ करिएगा। आज पार्लियामेंट में फ्लोरल ट्रिब्यूट था, इससे मुझे ध्यान आया। पर अगर तो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इतने पावन, इतने शुभ दिन पे हम सब मिल रहे हैं, तो जो उन्होंने कल्पना की थी इस देश की, उस कल्पना को साझा करने के लिए एक हम सबके पास मौका है। मैं उनको आज श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your remarkable and eye-opening address. Thank you very much for your guidance and wholehearted support. और अब निवेदन है श्री अनुपम मिश्रा जी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, कि वह उद्घाटन सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन से करें। नमस्कार। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला के इस महत्वपूर्ण दिवस पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक सम्मान और गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से, हमारे माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री पीयूष गोयल जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो कि अपने अत्यधिक बिजी शेड्यूल के उपरांत हम सबके मध्य आज यहाँ उपस्थित हैं। Honorable Minister was keen to have this workshop at the earliest, and it's only his vision and commitment to this objective that has brought all of us under one roof. विभाग की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आपके द्वारा निर्धारित रोड मैप को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मैं हमारे माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का उनके अत्यंत प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेरणादायक शब्द हमें नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सर, इस सेक्टर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। मैं माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और रूरल डेवलपमेंट के राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैडम, आपके अनवरत सपोर्ट के लिए हम आपको कोटिसा धन्यवाद। हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश से लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित विभागों से आए माननीय मंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रेजेंस ने इस कार्यशाला में नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया है और यह सतत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। मैं सचिव उपभोक्ता मामले श्री रोहित कुमार सिंह और मैडम निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स का भी दिल से धन्यवाद देता हूं। यहाँ हम भाग्यशाली थे कि हमें वरिष्ठ अधिकारियों का पूरी तरह से समर्थन मिला, जिन्होंने इस आयोजन को पूरा करने के लिए प्रत्येक चरण में हमारा मार्गदर्शन किया है। I also express my sincere gratitude to all senior officers of the state government and UTs, senior officers of central ministries, विभिन्न उपभोक्ता संगठनों, representatives from industry associations, media, who have always been very helpful and supportive in taking our message on consumer awareness forward. Such events cannot be completed without the groundwork and support of the team
who worked tirelessly to ensure successful completion of the program. I thank Mr. Vineet Mathur, my colleague and Joint Secretary in the Department of Consumer Affairs, and his entire team of officers for all the logistics. Mr. Natarajan, Technical Director, NIC, for his entire team and his entire team for all the IT-related support. Dixit ji, Director, Legal Metrology, Ashutosh Agarwal and Salend, and the entire team of officers of the Legal Metrology Division who have worked tirelessly towards making this event a grand success. The success of today's event is the result of cumulative efforts and the teamwork of all of us. इसके साथ ही उद्घाटन सत्र के समापन की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद। Thank you. We request the So we are continuing the session, so we request the honorable ministers to please stay on stage. Ladies and gentlemen, we'll take a short 10 minutes tea break. Post that, we will start this session on sharing of perspectives of the state by the honorable ministers from the state. Kindly be back in next 10 minutes. We will start the next session at sharp 1 p.m.
We request all of you to please settle down, and the ones who are still outside, we request you to please call them inside. We are starting in no time, ladies and gentlemen. You may request your colleagues to please come inside and settle down. We request the delegates who are outside to please come inside and settle down. We are starting. Ladies and gentlemen, it's a humble request for all of you to please settle down. You may please call your colleagues who are still outside. Ladies and gentlemen, we request if your colleagues are outside, you may please call them inside, as this mic is not audible outside. So we request your cooperation. You may please call them inside if your colleagues or friends, other delegates are outside. As we are running behind the schedule, so we request your cooperation. Thank you. We request all of you to quickly grab a seat. Please settle down as we are starting the session. Welcome back, ladies and gentlemen. Up next is sharing of perspectives of the state by the honorable ministers from the states. Please join me in welcoming the esteemed dignitaries present on stage. We have with us Sadhvi Niranjan Jyoti ji, Honorable Minister of State for Ministry of Rural Development, Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
Shri Ashwani Kumar Chaube ji, Honorable Union Minister of State for Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Environment, Forest and Climate Change. Shri Dushyant Chautala ji, Deputy CM Haryana. Shri Karumuri Venkat Nageswar Rao ji, Honorable Minister Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Government of Andhra Pradesh. Shri Amren Pratap Singh ji, Honorable Minister, Ministry of Agriculture, Government of Bihar. Shri Imran Hussain ji, Honorable Minister, Food Supplies, Environment and Forest and Elections, Government of NCT of Delhi. Shri L. Susindarao Mitai, Honorable Minister, Ministry of Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Government of Manipur. Shri Ranendra Pratap Swain ji, Honorable Minister, Food Supplies and Consumer Welfare Department, Orissa. Shri Arun Kumar Upreti ji, Honorable Minister, Urban Development and Food and Civil Supplies Department, Government of Sikkim. Shri Ashish Patel ji, Honorable Minister, Technical Education, Consumer Protection, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh. Can we all please once again welcome the esteemed dignitaries present on stage? Thank you very much for sparing your valuable time for us and joining us for this session. Ladies and gentlemen, this session will be chaired by Shri Ashwani Kumar Chaube ji. And over to the Honorable Session Chair. मुझे भी जाना था आपके कर लो Once again, a very, very warm welcome to Shri Piyush Goyal ji. Thank you very much for joining us for this session. I will now invite Shri Dushyant Chautala ji, Deputy CM Haryana. Shri Karumuri Venkat Nageswara Rao ji. नमस्कार सब लोगों का ऑल इंडिया से ऑल स्टेट से आए माय कोलिग्स मिनिस्टर्स भारतीय मिनिस्टर्स केंद्र मंत्री पीयूष गोयल साहब ऑल स्टेट्स ऑफिसर्स सब लोगों को नमस्कार मैं कारमूरी वेंकट नागेश्वर राव मिनिस्टर Civil Supply and Consumer Affairs, Andhra Pradesh. My state, is not in favor of the proposal of determination of finance under section 26, 27, 30, 36, 42, 43, 47 of Legal Metrology Act 2009. Is most of the offence under the Act are committed with nullified criminal intent or the violation of the with in fact the larger public interest adversely my Andhra Pradesh मैं इसको कैसा भी रहना बोल के मैं आंध्र प्रदेश से मैं बात मिनिस्टर साहब नमस्कार Thank you. Shri Imran Hussain, Honorable Minister, Food Supplies, Environment and Forest and Elections, Government of NCT of Delhi. Honorable Minister for Consumer and Industry, Consumer Union Minister Piyush Goyal ji,
Honorable Minister Ashwani Kumar Choube ji, Honorable Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti ji, Rohit Kumar Singh ji, Secretary Consumer Affairs, Nidhi Khare ji, Additional Secretary Consumer Affairs, Anupam Mishra ji, Joint Secretary Consumer Affairs, Honorable Minister Odisha Ranendra Pratap Soin ji, Honorable Minister Sikkim Arun Kumar Upreti ji, Honorable Minister Andhra Pradesh Rao Sahib ji, Honorable Minister Manipur L. Surindro Metai ji, Honorable Minister Bihar Amrendra Pratap Singh ji. सबसे पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आज की जो वर्कशॉप इन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी के लिए रखी है, वेट एंड मेजर्स को लेके बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली पीयूष गोयल जी के लिए होनी चाहिए। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपने जो कहा था कि मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अरविंद केजरीवाल सरकार और मैं खुद भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमें जो कैलिब्रेशन के लिए जो लोग बाग हमारे पास आते हैं या हम जाते हैं, या कोई भी व्यापारी अगर अपने किसी भी चीज माप तोल को, किसी भी बट्टे को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर वो कैलिब्रेट कराने जाता है, ऑफिस में जाता है या लैब में जाता है, तो हमें इसको जो है ना फेसलेस करना चाहिए। हमें इसको इतना आसान करना चाहिए कि उसे, और मैं ये समझता हूं अगर इसको आसान करना चाहिए, क्योंकि जो भी जाता है वहां और जब वो इंटरेक्ट करता है किसी के साथ, तो उसको वहां कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में मिलता है, उसे कहीं ना कहीं वहां दिक्कत आती है। तो हमें इस सिस्टम को जो है ना आसान करने की जरूरत है। और एसेंशियल कमोडिटी के अंदर अभी कोविड की बात हुई थी कि कोविड के बाद जब बाजार खुले तो उस वक्त इतनी ज्यादा बाजारों में रश था, या कोविड के टाइम पे इतना ज्यादा रश था। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इतना रश था। तो जब लोग बाग घरों से निकल रहे थे और कोई भी सामान लेने जा रहे थे, पैकेज, चाहे वो ऑयल हो, मैं एसेंशियल की बात कर रहा हूं, चाहे तेल हो, चाहे और कोई पैकेज कमोडिटी हो, आटा हो या और कोई चीज हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस चीज से भी गुजरना पड़ रहा था। अगर उस पर प्राइस लिखा है 100 रुपए, तो कहीं ना कहीं उसे 110 रुपए देने पड़ रहे थे। हमने एक दो जगह भेजा भी, टीम को भेजा, और वहां हमने उसे पाया भी, उसे हमने पकड़ा भी। हमारी टीम्स गई, लीगल मेट्रोलॉजी वाली और वेट एंड मेजर्स के लोग गए, और ऐसा क्योंकि शिकायत आई तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। तो हमें उसमें भी थोड़ा सा जो है जरूरत है। और जब हम अपने व्यापारियों को हम सहूलत देंगे, मैं समझता हूं जब व्यापारियों को सहूलत देंगे और उनको अगर हम इन सब बातों से बचाएंगे, ये जो वो जाते हैं और वहां अगर उनके पास ही कोई अधिकारी आ जाता है या कोई आ जाता है, वो हरेस करता है, तो मुझे लगता है व्यापारी भी बहुत ज्यादा लोगों को सहूलत देंगे। अगर कोई व्यापारी बार बार कोई भी सामान बनाता है, कोई भी साबुन बनाता है या कुछ बनाता है, अगर बार बार वो उसकी कंप्लेंट आती है कि उसमें कम सामान है, कम उसके वो है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलती से हो जाता है कभी, तो ऐसा नहीं कि उसे भी जेल में डाल देना चाहिए या उस पर भी ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार ये मानती है पूरी तरीके से कि हमें अपने व्यापार हमें अपने लोगों के जो उनके हक हैं, जो एक कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, उसको तो हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है। उसको तो उसके साथ कोई गलती, उसे सामान पूरा मिलना चाहिए, उसे सामान अच्छा मिलना चाहिए, उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको तो हमें प्रोटेक्ट करना ही है। लेकिन हमें व्यापार को अभी बताया बढ़ाना भी है, इंटरनेशनल व्यापार को भी बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें व्यापारियों को, उद्योग वालों को भी फैसिलिटी देने की बहुत
आवश्यकता है। इसके लिए हमें लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर जो भी हम सरलता कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। और आज यहाँ सारी स्टेट्स के 6-7 स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, तो मैं वैसे तो लाया भी था कई सारे एक्ट्स लिख के, तो अभी क्योंकि यहाँ बाद में सेशन होगा उसके डिस्कशन के अंदर बैठ के उसे रखेंगे। मैं एक बार दोबारा पीयूष गोयल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी मिनिस्टर्स को, अधिकारियों को, जितने यहाँ मौजूद हैं, इस सेशन में मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you. I'll now invite Shri Amreen Pratap Singh Ji, Honorable Minister, Ministry of Agriculture, Government of Bihar. इस सत्र की इसकी अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे नेता आदरणीय अश्विनी चौबे जी, भारत सरकार की ऑनरेबल मिनिस्टर हमारी बहन दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी, इस मंच पर आसीन राज्यों से आए सभी माननीय मंत्रीगण, एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे जी, सेक्रेटरी श्री रोहित कुमार सिंह जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनूप मिश्रा जी, हमारे बिहार से आए हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी और सभी राज्यों से आए समस्त पदाधिकारीगण। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज बैठक हो रही है। इसके पहले भी आदरणीय पीयूष गोयल साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय इन्हीं सब बातों को रखा गया था। भारत सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी, लेकिन सरसरी तौर पर उस समय हम लोग समझ नहीं पाए। और हमें लगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, कहीं उसकी अनदेखी तो नहीं हो जाएगी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने उस समय हमने भी सुझाव दिया था कि दंड यदि कानून यदि भय रहित हो तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। कानून तो इसीलिए होता है जो भय पैदा करे, और उस भय के कारण कानून भी अपना काम करे। तो इस भय को यदि समाप्त कर दिया जाए तो इस कानून का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ये समाप्त होना चाहिए। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये मन में दिमाग में ये बात उठी थी उस समय। तो हमने आग्रह किया था कि आगे भी इस पर विचार किया जाए और इस जल्दीबाजी में इस पर फैसला न हो, इस पर और मंथन हो। लेकिन हम लोगों ने भी मंथन किया और भारत सरकार ने अपने आदरणीय पीयूष गोयल जी ने जिस साफगोई के साथ और विस्तार के साथ और उद्देश्यों से हमें अवगत कराया, इस विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय रोहित जी ने भी जिन बातों को रखा खुल के हम समझ पाए। और हम अपने अधिकारियों के साथ, हमारे भी सेक्रेटरी और जो माप तौल विभाग के उसके जो कंट्रोलर हैं, उन लोगों ने भी बहुत मंथन किया।
हम लोगों ने पाया कि जो हम कानून हमारे यहाँ राज्य में 2009 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है जो 2011 से प्रवृत्त है, उस कानून का ठीक तरीके से वो कानून लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आवश्यक उसके रूल्स और रूल्स में जो प्रोविजन होने चाहिए थी उसके प्रवर्तन में, तो उसके बिना यह कानून लागू है और पुराने उन कानूनों को और उसी तरीके से उसको लागू किया जा रहा है। इसलिए ये कानून तो इनइफेक्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों इसे हम ढो रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया। और फिर सेकेंड ऑफेंस में तो कुछ है नहीं, 0-0 है हमारा, कोई मामला ऐसा नहीं है। फिर उसमें कारावास इम्प्रीजमेंट जो है और वो चलता रहे, और वह भी चलता है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो एक्ट है 1976 और 1985 जिसका अमेंडमेंट हुआ, और प्रैक्टिस में वही सब चल रहा है। वो पुराना कानून का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन प्रैक्टिस में चल रहा है। तो यह भी हम सब लोगों ने अनुभव किया कि यह ठीक नहीं है। इसलिए भारत सरकार का जो प्रस्ताव है वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ध्यान में रखते हुए उचित लगता है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य के अंदर ये भूख नहीं हो, ये तड़प नहीं हो कि हमारे यहां अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो, और उसके लिए जरूरी है निवेश, इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टर्स आए तो उनको सहूलियत मिले। इस दृष्टि से बिहार ने कई और उदाहरणीय और अनुकरणीय काम किए हैं। मैं उससे भी, यहाँ अन्य राज्यों के भी प्रतिनिधि आए हैं, सबको मैं और माननीय मंत्रीगण आए हैं, अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारियों को, इन्वेस्टर्स को, निवेशकर्ताओं को सुविधा देने के लिए RTPS, राइट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, हम लोगों ने लागू किया है। जरूरतों के हिसाब से समय के पाबंदी के साथ उस कानून को हम लागू किया कि इतने समय में आप जो चाहेंगे आपको वो सुविधा ये कानून देगा। सत्यापन और मूल्यांकन शुल्क भी जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा हम लोगों ने दिया है। और यही नहीं, जो एप्लीकेंट हैं तो वो अपने बिजनेस के बारे में तो ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग कर सके, ये सुविधा भी हम लोगों ने एक एक्ट के माध्यम दिया है। एक इंस्पेक्टर एक वर्ष में एक दुकान में एक ही बार जांच कर सकता है, दोबारा नहीं जा सकता। इसलिए यह भी सुविधा हम लोगों ने दी है जानबूझ करके कि किसी प्रकार से और व्यापारियों को कम से कम परेशानी हो। वर्तमान अधिनियम में सेकेंड ऑफेंस के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है। जब हम दंड शुल्क को वसूल नहीं कर पाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रथम अपराध के तहत वो शुल्क जो है उसको वसूलने के लिए बाध्यकारी प्रावधान है, और उसी में इम्प्रीजमेंट है। लेकिन वर्तमान में बिहार माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2014 के अभियोजन की प्रक्रिया क्या होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, लेकिन फिर भी इम्प्रीजमेंट जारी है। हम लोगों ने इसे बारीकी से देखा, हम सब लोगों ने अनुभव किया। हमारे सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, अन्य अधिकारी भी कई आए हुए हैं। हम सब ने अनुभव किया कि केंद्र का जो सुझाव है
इस सुझाव के प्रति हम लोगों को पूर्णतः सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट जो है उसको हम इन्फोर्स कर पाए तो ठीक तरीके से कर पाए, वरना इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि सेकंड ऑफेंस में इस एक्ट में कितने मामले हैं। देश भर में 11, 2, 4, हमारे स्टेट में तो 0 है, 0 आया ही नहीं दूसरा मामला। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत के तहत व्यापार जगत में सरकारी नियंत्रण को कम करने का प्रयास हम लोगों ने किया है, जिसके तहत अभियोजन की प्रक्रिया और कारावास के प्रावधान को समाप्त करने का जो आग्रह है भारत सरकार का, उससे हम लोग सहमत हैं, इन टोटो सहमत हैं। ये होना चाहिए। हम लोगों ने बारीकी से विचार किया है और इस निर्णय पर हम लोग पहुंचे हैं कि निवेश के लिए जितना आवश्यक है उतना हमें करना चाहिए। और जो एक दूसरा पक्ष है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसकी भी चिंता हमें है, केंद्र सरकार को भी चिंता है। भारत सरकार एक संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा एक संवेदनशील व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, हम लोगों का सौभाग्य है। पीयूष गोयल साहब एक क्रांतिकारी और इस रूप में रेडिकल चेंजेज के लिए माने जाने वाले मिनिस्टर हैं। वो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जहां भी रहे कुछ उन्होंने परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन भी चाहेंगे। तो वो परिवर्तन हम लोग भी चाहते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हमारे ध्यान में प्रमुखता से है। हम उपभोक्ताओं के भी और उनको भी संरक्षण देते हुए और उनके हितों की रक्षा करते हुए ही और हम आगे बढ़ेंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि भारत सरकार ठीक तरीके से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करते हुए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत से सहमति और उसको आगे बढ़ाते हुए जो आवश्यक कदम उन्होंने उठाया है उसको आगे बढ़ाएं। हमारा स्टेट, हम लोग इस प्रस्ताव के साथ सहमत हैं, उसका समर्थन करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I will now invite Shri L. Sundaro Matai, Honorable Minister, Ministry of Commerce, Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Government of Manipur. Respected sir, on the dais, अश्विनी कुमार चौबे जी और मैडम सदीप निरंजन ज्योति और हमारा सब स्टेट से जो आया हुआ मेरा कलीग्स, मिनिस्टर और ऑफिसर लोग को सबको प्रणाम। मैं इस विषय में थोड़ा सा मैं सजेशन ही देना चाहता है। ये जो सर डिक्रिमिनेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में इसमें जो द क्लोज ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स में बी रिमूव, ये थोड़ा सजेशन देना चाहता है। और दूसरा है इम्प्रिजनमेंट में बी रिप्लेस्ड बाय द सस्पेंशन एंड द क्वांटम of fine may be double or triple from the existing rate of the detained offenders. Or number 3 में term of suspension of license may vary with series of the offenses and the sequence of repetition of it.
ये एक हो गया। और सर ऑफिसर्स का पेनल्टी में भी, ऑफिसर्स का पेनल्टी सेक्शन नंबर 25 to 27 lay out the various offenses which are being committed, which are like to be committed by the business operators or person in the commercial phase. Number two, the Legal Metrology Act aims to deter people from the malpractice in the right and measure, and to ensure that the people receive their commodities in correct weight and measure and other, and that they are not dumped on their hard-earned money. और नंबर थ्री में efforts, नंबर थ्री में ये बोलना चाह रहे सर, जो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया उसको दूसरा नाम पे फिर लाइसेंस देना, न्यू लाइसेंस देना, इसको बंद करना चाहिए। ये बार बार होते रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम होते रहेगा, इसको बंद करना चाहिए सर। और एक ये भी होना चाहिए सर, इन एडिशन सर, द लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट नीड टू स्टेशन कैम इन मेजर मार्केट। मेजर मार्केट मीन्स लाइक 100 शॉप होने से एक रखना चाहिए उधर में, एक मेजर मार्केट में एरिया टू एनी पर्सन मे कम एंड वेरीफाई द वेट फॉर द मेजर इन द कमोडिटी परचेस। प्रेजेंस ऑफ सच कैम नीड टू बी पब्लिश इन द बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। ये एक रखना चाहिए सर। तो 100 शॉप होने से तो एक रखने से लोग आके उसको मेजर करके सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये होने से थोड़ा सा कम हो सकता है। ये हर जगह में नहीं है, इसको एक लागू करना चाहिए सर। सर इतना ही है मेरा सजेशन। हम बस 10 दिन ही हुआ है मंत्री हुआ इसमें, इसीलिए इसीलिए इतना पता नहीं है, और फिर भी थोड़ा मेरा जानकारी में इतना तो हम करना चाहता है, यही इतना बोलना चाहता है। जय हिंद। Thank you. Please welcome on the dais Shri Rajnendra Pratap Swain, Honorable Minister, Food Supplies and Consumer Welfare Department, Odisha. Honorable Minister of State, Susri Sadhvi Niranjan Jyoti ji, Honorable Minister of State, Ashwini Kumar Choube ji, all other colleagues, those who are on the dais, and my friends and colleagues, those who are in the gathering, representative of different stakeholders of the country, those who have a stake in legal metrology and consumer affairs, individual stakeholders and entities of industry having a stake in these laws and rules, legal experts, those who have barged into this conference, all principal secretaries, officers, and representatives of different states and organizations, friends of media, ladies and gentlemen. I am thankful to the Honorable Piyush Goyal ji, who has taken the pains to conduct this physical meeting after his virtual meeting way back on July 2nd last year amidst COVID. Now, I would like to dilate upon the subject, the opinion on this issue. Now, the world is changing. The world order is also changing. Standardization across the world is also changing. China is setting standards
as well as the West is setting standards for the European Union and others. You must be aware of it. But over the past few years, Government of India has been steadily bringing down legislations and proposed decriminalization of minor offences in such legislations, namely the Companies Act. One must be aware of it. Negotiable Instrument Act, among various others, for creating a conducive business atmosphere across the country. This is a welcome step, keeping in mind the changing business ecology, and that ecology is changing day by day. However, there must be a balance between ease of doing business and interest of the consumers. We are caught between this Kaila and the Charbidis. It is to be noted that in any conflicting situation between a consumer and a business, ask yourself this fundamental question. You'll come to know it is the business which has always been on the upper hand. When there is a conflict, business gets the upper hand. That is our experience. There is no two ways on it. In order to protect the unsuspecting consumer, we have the new Consumer Protection Act of 2019 and also legal metrology. In order to maintain the balance, the Government of Odisha, while agrees to most of the proposed amendments, we have reservations to a few of them. To note it, for example, we feel Section 30, Section 34, Section 37(2), and Section 41(1) because it relates to the second and subsequent offense, as the intent of the legislation is to make the penalty for second and subsequent offense more deterrent. Now, our Honorable Piyush Goyal was dilating upon Kautilya's Arthashastra. He mentioned very rightly that one sentence is there, that is, responsibility is there, good chapter, but Kautilya has never forgotten punishment. That is age old. That is 3,000 years back also, that was ruling the roost. Now, in consonance with that, as the intent of the legislation is to make the penalty for second and subsequent offense more deterrent, the existing provisions bring fear in the mind of offenders and prevent them from committing the second and subsequent offense because there are provisions for undergoing imprisonment for the second and subsequent offense. Now, I'd like to know the data which was provided on which we are dilating and discussing, whether that data is sacrosanct. Does it reflect the hoi polloi of the country, their problem? I think I have a grave doubt on that. The millions and teeming millions of this country's consumers, they are in the hinterland. Those who do not come within the ambit of law, they never complain. They just resign to their fate. So, while giving justice to them, we should not do away with the penal provisions in certain sectors. I will not tell that it will vary in degrees. It should vary in degrees as well as in kind. So you cannot equate a thelawala with a man who is selling gold. Now, this is important, keeping in mind the constant growing of businesses and commensurate chances of cheating, willful fraud on the parts of the goods and services providers. So don't keep that in mind. Entire Make in India exercise will vanish into thin air because fake in India prevails in India's hinterland. You like it or not. For example, there are hundreds of fuel dispensing pumps. Then you are driving on the national highway, anywhere you are fueling station, it is not possible for the existing staff of the legal metrology. We have paucity of manpower to undertake regular inspections. So if the fear of imprisonment and cancelling of license is not there,
any erring pump will continue to indulge in repeat the offence as if and when it is caught for a repeat offence, the owner will not mind to part with some profits earned through such cheating as penalty. It is only the fear of going to jail that they are not indulging in such willful defraud. I'll recall Kautilya on this. We can take another example, and that is a precious metal, especially gold. It is good that central government has implemented gold hallmarking. I think this is going to be a pan-India matter within a short period. I'm sure it will be extended to the entire country in a phased manner very soon. However, imagine how a slightest fault in the calibration can rake in a huge amount of ill-gotten money. Man comes from the village, wants his daughter to be married off, purchases gold in a place, and he is duped. That is a common factor in our state. The owner of a company will not raise his eyelids a bit to pay a hefty fine if caught for a second time. This will in fact incentivize to indulge in cheating and take risk with the law whenever earning through deceit is greater. If the earning through deceit is greater, he will like to go on paying second time, third time, fourth time, fifth time without getting it. So in this, if anything deters such willful cheats, it is the fear of going to jail. Again, I quote Kautilya. So in the interest of consumers, some amount of deterrence must be maintained. Only enhancing penalties steeply may not deter such dishonest businesses. I wish the government of India will dilate upon this subject and will bring in such a thing which will give protection to the consumers. Ease of doing business should go hand in hand together with the protection of the consumers. However, for minor offences, there is no two ways that it is time for decriminalizing such offences. I agree with all the other colleagues, those who have given their opinion to this effect. The experience in my state in Odisha also points towards that. It is only because of fear in the mind of the unscrupulous businessman about the provisions of the imprisonment of the act, the other things are deterrent. One size fits all principle may not be desirable for all kinds of compounding offences. Hence, the government of Odisha feels that except in cases as mentioned specifically that I have told, the proposal for decriminalization of certain provisions of the Legal Metrology Act 2009 needs thorough examinations. But on this point, I want to emphasize the discussion made on July 7, 2021, the virtual mode. The offence which attracts minor penalty may not be decriminalized. I went to reiterate it. But in case of major penalties, we must think seriously whether decriminalization of such offences will encourage the offences to commit such offences in the second and subsequent events, as there will be no provision for undergoing imprisonment for the second and the subsequent offence. Hence, I suggest Section 30, which deals with penalty for transactions in contraventions of standard weights and measures. Section 34, which deals with penalty for sale of delivery of commodities, etc., by non-standard weight or measure. Section 37(2), which deals with penalty of contravention by the government approved test center, about which PUC has been firm in his opinion, and I adduce it. And Section 41(1), which deals with penalty for giving false information. For such offence, the prescribed penalty is fine, which may extend to 5,000 rupees, and for second and subsequent offence, imprisonment for a term, which may extend to 1 year and also fine. In all those provisions, where I am telling provisions which should not be decriminalized, in all those provisions, there must be prescribed punishment for the second and subsequent offence, which is more deterrent than the first offence. The proposal of the Government of India is agreed to accept Section 30, 34, 37(2), and 41(1) because of the larger public interest that I have dilated upon. Thank you very much. Thank you for giving me a chance.
Thank you very much. Please welcome on the dais Shri Arun Kumar Upreti ji, Honorable Minister, Urban Development and Food and Civil Supplies Department, Government of Sikkim. Namaskar. National Workshop on Legal Metrology Act 2009 के जो कार्यक्रम में विशेषतः उपस्थित आज हमारा केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विन कुमार चौबे जी, माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, विभिन्न राज्यों से आए हुए मंत्री गण, केंद्रीय मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सचिव महोदय तथा उनका सहकर्मी, विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय अफसर्स तथा माननीय विभागीय मंत्रीगण या विभागीय अधिकारीगण, मैं अब आप सबको यह कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक देश का एक सबसे छोटा राज्य सिक्किम को प्रतिनिधि करते हुए आज आपके सामने एक दो शब्द रखना चाहता हूं। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा जो भी मापदंड हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग के राज्य उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसमें मैं एक दो बात रखना चाहता हूं कि देश को आर्थिक रूप से आगे ले जाना है, उसके लिए हम विशेषकर हम जो राज्य अथवा देश चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग को दोनों तरफ को ख्याल रखना पड़ रहा है। एक तरफ जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको सेफ्टी देना हमारा काम है, और दूसरा तरफ जो हमारा इकोनॉमिक डेवलप कर रहे हैं, जो उद्योग धंधा चलाने वाले लोग या छोटा छोटा जो व्यापार करने वाले लोग, उन लोग को भी उन लोग का हित को भी हम लोग को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा एक कहावत है कि सांप भी मरना चाहिए और जो लाठी है उसको भी नहीं टूटना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम लोग को काम करना चाहिए ताकि कस्टमर को भी फायदा मिले और जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उन लोग को भी राहत होना चाहिए। अगर किसी भी अवसर के वजह से व्यापारी लोग व्यापार करने में वो लोग को डिस्करेज हो जाए, अगर तो भी देश को उन्नति करने में देश को बहुत कठिनाई हो सकता है। तो ये दोनों चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को मतलब विलेज में जो बस्ती में जो लोग हैं, उन लोग को दुकानदार या कोई भी दुकानदार कितना वेट दे रहा है वो लोग को पता नहीं चलता है। तो क्या भारत सरकार हम लोग को जो वेट करने का जो लेटेस्ट मशीन है वो क्या सब्सिडाइज रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकता है क्या? ये एक प्रश्न है। अगर क्योंकि जो बिजनेस करने वाला लोग है वो अपना जेब से खर्च करने के लिए थोड़ा सा वो कंजूस करता है, क्योंकि उसका अपना पैसा जाता है, तो उसको कस्टमर का उतना ध्यान नहीं रहता है, वो अपना प्रॉफिट के लिए वो लगा रहता है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार द्वारा
कोई सब्सिडाइज रेट में हो या फ्री ऑफ कॉस्ट में हो, छोटा छोटा व्यापारी को फ्री ऑफ कॉस्ट में और बड़ा बड़ा व्यापारी को सब्सिडाइज रेट में कोई वेइंग स्केल अथवा जितना भी ये सब सामान है वो मिल जाए तो एक अच्छा काम वो गरीब आदमी के लिए भी हो जाएगा, पब्लिक के लिए भी हो जाएगा और बिजनेस करने वालों के लिए भी हो जाएगा शायद। और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मशीन है वो अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें उतना मतलब डिफरेंस भी नहीं आएगा, तो कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और मुझे को लगता है कि कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और जो बिजनेस करने वाला लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये हमारा तरफ से एक छोटा सा सुझाव है। तो इसी तरह से अभी जो भी कानून अगर को रेक्टिफाई करना है उसके लिए अगर पब्लिक का हित में हो, अगर बिजनेस के हित में हो, ये दोनों का तालमेल में जो अगर डिसीजन निकलेगा उसमें हमारा स्टेट की तरफ से उसमें एकदम स्वागत रहेगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम लोग को मुझे यहाँ पर आके 2 शब्द कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं हमारा लीगल मेट्रोलॉजी केंद्रीय लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सचिव महोदय तथा वहाँ का संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में मैं मेरे आंतरिक हृदय से मेरे मन से श्री आदरणीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। देखने में तो ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट जैसा लगता है लेकिन ये छोटा डिपार्टमेंट को आज इतना बड़ा बना दिया, इसलिए मैं पीयूष गोयल जी को मेरा आंतरिक हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय को होकर गर्व करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you very much, and I'll now invite Shri Ashish Patel, Honorable Minister, Technical Education, Consumer Protection, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh. धन्यवाद मैडम। इस लीगल मेट्रोलॉजी के एक्ट पर इस आयोजित कार्यशाला में आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, मेरी बड़ी बहन आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी सहयोगी मंत्रीगण और इस भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण विभाग के डायनेमिक सेक्रेटरी रोहित जी, सबको सबसे पहले मैं भारत के सबसे बड़े राज्य, जो सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में मैं यहाँ सबसे पहले सबका अभिवादन करता हूँ। और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों माननीय मंत्रीगणों से अपने राज्य की ओर से कुछ बातें रखने का, जो हमारे राज्य ने अब तक इस विभाग में जो किया है, वो कुछ विषय रखने की अनुमति चाहता हूं। मेरे एक सहयोगी ने कहा कि मुझे 10 दिन हुए हैं, तो मैं भी उनकी तरह मुझे 1 ही महीने हुए हैं और वो तो पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, मैं तो पहली बार मंत्री पद संभाल रहा हूं। तो मेरे राज्य ने कुछ चीजें की हैं और जब से मैंने इसका प्रतिनिधित्व संभाला है तो कुछ परिवर्तन करने का भी प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 लागू करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान शाखा की स्थापना की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर इंस्पेक्टर्स, सीनियर इंस्पेक्टर्स तहसीलों में हैं, मंडल स्तर पर असिस्टेंट कंट्रोलर हैं और जोन स्तर पर डिप्टी कंट्रोलर हैं, जो एक कंट्रोलर के अधीन जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जब से बागडोर संभाली थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तथा उद्योग जगत को पारदर्शी अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंतर्गत समस्त लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी सेवाओं को पूर्णतया ऑनलाइन कर दिया है। ये हमारे राज्य ने एक ये अचीवमेंट किया है तथा इन्हें राज्य के इसके साथ ही राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र पोर्टल से भी इंटीग्रेट कर दिया है।
व्यापारियों को बाट माप सत्यापन संबंधी सेवाएं प्रदेश के 18 जनपदों में ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें पूरे प्रदेश में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ऑनलाइन। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में पकड़े गए मामलों से लगभग 2/3 मामले हमारे यहाँ पेनल्टी द्वारा विभागीय स्तर पर ही निस्तारित करा लिए जाते हैं। शेष वो मामले जिनका पेनल्टी नहीं हो सकता या जिन पे पेनल्टी से नहीं हो सकता है, उन्हें सक्षम न्यायालय में हम लोग निवेशित करते हैं। इस प्रकार के समस्त मामले माननीय न्यायालयों द्वारा केवल जुर्माना करते हुए निस्तारित करा दिए जाते हैं। इस सत्र के पहले वाले सत्र में हमारे माननीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल साहब ने कुछ विषय रखे। उन विषय को मुझे हमारे बहुत सारे सहयोगियों ने उन विषय को रखा, तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे राज्य का ये मानना है कि उद्योग और व्यापार के विश्वास एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के उन अपराधों को जो सामान्यतः लापरवाही से किए जाते हैं, जिनमें आपराधिक इरादा निहित नहीं है, उनके डिक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में है। डिक्रिमिनलाइजेशन के प्रस्तावित ड्राफ्ट में अधिकतर प्रकार के फर्स्ट और सेकंड जो है कि में दंड के रूप में कारावास के स्थान पर बढ़े हुए अर्थदंड का प्रावधान उचित होगा, ये हमारा राज्य मानता है, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता बनाए रखने के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सकेगा। हमारा राज्य ये भी मानता है उन अपराधों जिनमें आपराधिक उद्देश्य प्रथम दृष्टया ही अंतर्निहित है, जो जानबूझ करके अपराध किया जा रहा है, जैसे बाट माप में धोखा देने के उद्देश्य परिवर्तन धारा 26, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा उल्लंघन धारा 37, निदेशक अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जांच कार्य में बाधा पहुंचाना धारा 40, काउंटरफीट सील का प्रयोग धारा 44, लाइसेंस के बिना बाट माप का निर्माण, बिक्री एवं मरम्मत धारा 45-46, प्रदत्त लाइसेंस से छेड़छाड़ धारा 47 को उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं अधिनियम की प्रभावशीलता बनाए रखने के दृष्टिगत यथावत बनाए रखने का हमारा राज्य सुझाव दे रहा है। निर्णय केंद्र को करना है। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। हमारा राज्य लगभग 24 करोड़ पॉपुलेशन के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो हमें उपभोक्ता के हितों का भी ख्याल रखना हमारा धर्म है। हमारा राज्य यह भी मानता है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम का डिक्रिमिनलाइजेशन इस प्रकार किया जाना उचित होगा कि अधिनियम की प्रभावशीलता भी बनी रहे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मध्य इस प्रकार का संतुलन हम लोग स्थापित कर दें कि उपभोक्ता का भी नुकसान ना हो और बिजनेस भी बढ़े। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि भारत ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो उसके लिए बिजनेस को भी बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां उपभोक्ता, मैं स्वीकार करता हूं उस विभाग का मंत्री होने के नाते, मेरे सामने सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, ये मेरी मदद करेंगे तो हम उसको बेहतर करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण का विषय उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसमें 24 करोड़ उपभोक्ता हैं, सबसे कम चर्चा वाला विषय है और सबसे कम काम किया जाने वाला विषय है। तो मेरा एक उस विभाग के मंत्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के नाते इस कार्यशाला में मैं बिल्कुल स्पष्ट माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं, आप तो स्वयं उस राज्य से आती हैं, दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। फिर भी मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले ये आपको आश्वस्त करता हूं कि इस कार्यशाला से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उत्तर प्रदेश उसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य होगा। आप आज इस कार्यशाला में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल साहब ने जो भी विषय रखे हैं, उन विषयों को हम सब लोग जब अभी मंथन करेंगे तो मैं पूरा विश्वास जताता हूं कि निश्चित तौर पे हम लोग एक अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे और देश को एक नई दिशा, नई धारा देने में कामयाब होंगे। इन्हीं सबके साथ मैं अपने राज्य की ओर से इस कार्यशाला के सफल संचालन के लिए, सफल उसके लिए मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Thank you very much. Ladies and gentlemen, with this we come to an end of this session. A round of applause for the distinguished dignitaries present on stage. Thank you very much for sharing your thoughts and perspectives with us. And we will now pause for a half an hour lunch break. The same is organized in atrium at the ground floor. We request the gathering to please proceed for lunch and please reassemble at sharp 2:35 for our next session. Thank you very much. मंत्री जी आपको मोबाइल छूट गया है। अरे मोबाइल देखो कौन छोड़ा, मोबाइल तो ले लो। आप ही का है क्या पटेल जी? तुम्हारा नहीं है ये। देखिए तो उठा लेते हैं देखभाल करते हुए सेक्रेटरी रोबल आओ।
Ladies and gentlemen, we are about to start the session. We request all of you to please settle down. You may request your colleagues to please come inside and join you. As we are running behind schedule, we request your cooperation. Thank you. Yes, this needs to change. Ladies and gentlemen, we once again request all of you to please settle down. You may request your fellow participants to please join you inside the hall in case they're outside. Thank you.
Welcome back, ladies and gentlemen. After a rejuvenating lunch break, we now start a panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and electronics and manufacturing industries. With due respect, I will invite the eminent speakers on the stage. Session Chair, Shri Karumuri Venkat Nageswar Rao ji. Shri Ashish Patel, Honorable Minister, Technical Education, Consumer Protection, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh. Shri Amitesh Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of Electronics, Information Technology. Context setting by Shri Pankaj Mahindru, Chairman, India Cellular and Electronics Association. Shri Veer Vikram Yadav ji, Secretary, Government of Odisha. Shri KRM Kishore Kumar, IPS, Controller Legal Metrology AP. Shri KC Chaudhary, Controller Legal Metrology Jharkhand. Shri Shirish Deshpande, Mumbai Grahak Panchayat, Grahak Bhavan. Ms. Roshni Sen, Principal Secretary, Government of West Bengal. Shri Tabrez Ahmed, Group Director, Dell.
Ladies and gentlemen, we are waiting for the session chair to join. And I'll once again announce that this is a panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and electronics and manufacturing industries. We request Shri Ashish Patelji, Honorable Minister, Technical Education, Consumer Protection, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh, to please join us on stage. And meanwhile, our session chair join us on stage. Can we please welcome the session panelists, ladies and gentlemen? Thank you very much for taking the time out and joining us for this session. Ladies and gentlemen, without any further ado, let's kickstart the session. Our session chair will be joining us in between. I'll now invite Shri Amitesh Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. You are. Ms. Asha to please come and take the session forward. Good afternoon, everyone. So government is promoting manufacturing in the country, and electronics manufacturing is one of the thrust areas of the government. Government is aiming at making India a design and manufacturing hub in electronics as a part of Atmanirbhar policies, economic policies. So Ministry of Electronics and IT is broadening and deepening its electronics manufacturing ecosystem in the country. And we are also aligning our initiative with various policies by incentivizing the investors to come in India and invest in India and start manufacturing in India. We have notified different kinds of schemes like the production link schemes, spec schemes, modified special incentive package schemes, so that the manufacturers come here and invest here and contribute in India's economic growth. And electronics is the largest and fastest growing, fastest changing sector. And
if we see our production targets in 2015-16, we were only producing around 37 billion of electronics. Now, in 2021, we have reached around 74 billions because of our manufacturing policies that are conducive. So, on the one hand, we are promoting manufacturing in the country. We want that the manufacturers across the globe should come in India and invest in India. So, we should support them with our policies, and our policies should be conducive to their interest also, and to facilitate them for their ease of doing business. But at the same time, we should also see that the interest of the consumers in India are also protected. So we have different acts to safeguard the interest of the consumers in India. And we have notified different kinds of regulations also to protect the interest of the consumers. Like one of the acts is the Legal Metrology Act 2009, for which we are deliberating here. It deals with the standards of weights and measures and regulates the trade and commerce relating to weights, measures, and other goods which are sold or distributed by weight, measure, or number. So in this act, there are many deterrent provisions for offences, which includes penalties as well as imprisonment. Electronics, if you see to it, it's a fast-growing sector, and we are targeting of a 300 billion economy by 2026. So if we want to achieve that target, our policy should be conducive. We should support them with the ease of doing business. The Chapter 5 of the Act sets out various offences and penalties, and if these penalties provide for imprisonment as well as penalties, financial penalties. So as far as the financial penalties are concerned, they are for maybe for first offense or subsequent offenses, but there are imprisonment clauses also which are deterrent to the manufacturers that are contributing to the growth of the India. So criminalization of minor procedural offences often leads to legal proceedings, and the ensuring uncertainty in legal processes and time taken for resolution in the courts hurts the ease of doing business. So criminal penalties, including imprisonment for minor offences, acts as deterrent. And this is one of the major reasons impacting the business settlement and hindering the investments both from the domestic and foreign investors. So decriminalization of minor offences is one of the thrust areas of the government, and we should see that whatever are the offences, the punishment should be according to the type of offence it is. Maybe it's a minor offense or a major offense. So it has to be, we have to define the act as a bona fide or mala fide act accordingly. The electronic sector is highly dynamic in nature, and the product life cycle is very short. Overburdening the sector with regulations and deterrent provisions will hurt the business interest of the manufacturers also. And so we have to balance between the manufacturer's interest and the consumer's interest. So we have to trade off between how the policies should be, that the penal provisions are there and they are creating a deterrent to the whosoever are the criminals or whoso are doing wrong things, but at the same time they are not hurting the business interest of the manufacturers and consumers. So in this regard, like we have heard earlier also, that there are different kinds of sectors, like the jewelers is one sector, jewelry is one sector, the electronics manufacturing is one sector, the people selling on the roadside are different sectors. So we have to see how a balance can be between how the industry can be targeted. And as far as the electronics industry is there, so the people using those electronic products, they are all using the latest technology equipments and whatever is there. So they are well versed about the products, and they take the products before going to the market. They see all the technical specifications of the products. And for most of the electrical and electronic products, we have technical regulations also in the country. The standards for the products define the marking requirements for the products also. So whenever they stipulate which marking is essential, so my opinion would be that we should have defined the
offences in the category of minor offences and the major offences, and accordingly the penalties on imprisonment should be there. And if the penalty is not impacting the national security or public interest, or they are not financial frauds or loss of life, then they should not be considered as a major penalty, and imprisonment should not be considered for those things. And in fact, we can consider the global practices around the world to see that how these things can be enabled and what kind of penalty structure could be. And we could have a graded penalty structure for first offense and subsequent offenses also. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Ashish Patel, Honorable Minister, Technical Education, Consumer Protection, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh. This session will be chaired by Shri Ashish Patel. So would you like to take this forward, or shall I invite the next speaker? The context setting will be done by Shri Pankaj Mahindru, Chairman, India Cellular and Electronics Association. Good afternoon. We are running behind schedule, so I'll go very quickly. There is a presentation which Rajesh, can we put that up, please? Yes. Sorry. So I'll skip all the pleasantries. I'll just the Honorable Minister, greet him and all the dignitaries here. See, the mobile phone and electronic industry is a very widely spread in the nation now. Almost 90 crore people own mobile phones now. So consumer interest is absolutely paramount in mobile phones and electronics. But the legal metrology is, an organic kind of act, which was based on weight, length, etc. The organic part of this. In electronics, especially in mobile phones and other electronics, we are becoming smaller. So, and there is a premium for more power and smallishness. So it's, it's turned the entire logic on its head. And I'm very impressed with what our senior director presented. It's, she's acted like the opening batsman, Sehwag. So I have very little to add after that, except some very specific things. The complete thinking of this sector, my request is that it should be very different. Maybe it should be a different chapter altogether, which governs it. Some of the challenges which we are having, let me give you a little download on the industry first, how it has been behaving in the last few years, including the state of Uttar Pradesh. Mobile phone manufacturing, which I specifically want to mention, has grown about 1,500% in the last 5-6 years. And a large part of it is in the state of Uttar Pradesh. 150,000 crores is our manufacturing, which we are doing in the state of Uttar Pradesh. Our other states which we are very active are Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. These are the places where our manufacturing is resting. I had a discussion with the secretary recently and the additional secretary and the joint secretary that, please challenge us. If you see the cases which go to consumer court and you see the size of our industry, you will find that it's a very minuscule dissatisfaction index in our industry. And this is an industry which invites regulation. It's a very unique industry which invites regulation. If you all remember 10-15 years back, there was, a very intense grey market in the country. Almost 30 to 40% of the products were, cheap Chinese products which were, low quality, etc. And that time we recommended the compulsory registration, which is a regulation of MITI and BIS put together, which has served us very well. You will find that the entire sector has got cleaned up, and you find
mostly good products. I mean, it's not that this is the exercise is completed. There is still a lot more to be done, but there is a very large improvement which is self-initiated by our industry. So the industry is very happy and very proud of that, that in partnership with BIS and MIT, we have established a regime which is working very well for us. I'll just skip this. I think most of you have seen this. Now, decriminalization of provisions, what is the effect of this? Any possible criminal action, and that also which is on a product, I'm not going into other categories, you know, everybody has given logic for that and so on. But the electronic and digital industry is the largest industry in the world, which is, you know, nearly $4.5 trillion. And this is an industry which has its uniqueness, as I said, in the technology, etc. So this requires a different regulation. And most of these companies are very large companies, you know. The largest companies in the world are from this sector, like Apple, Samsung, etc. These are companies which go into trillions of dollars. So, Punjabi mein kahavat hai na ji, जिन्हां दे कर दाने उन्हां दे कमले भी स्याने. But these are very wise companies. And India should not have a question mark in the mind of any such company that this is a country which doesn't regulate rationally. So, ये हमारी जो sovereign की साख की बात है कि we should be considered as a absolute first class and top class regulation country. So we have given the specific reasons why these act as a chill factor. And we've had very silly examples of regulation. For example, when the R came, the Rupaiya, you know, some of the companies, I don't want to name the company, they didn't put that. And the legal metrology person from Delhi threatened that, you know, I was there, unfortunately for him, when this was happening. He didn't know because I was wearing a t-shirt and jeans. It was Saturday. So he said, मैं तो आपके global chairman को भी जेल में डाल दूंगा और मेरे तो power है ये सारी चीजें, right? And unfortunately, the person who was the policy guy, he reported all this to headquarters also. That this is what is being threatened by this guy. So it took almost 5-6 hours for us to explain to them what R is about. Rupaiya, and you know, of course, it was not followed in letter because it had to be there. But this can be the consequence of any such thing, and it does us, you know, no credit to the nation that such field forces. This is what the minister said, that law should be interpreted in the spirit also. So we cannot risk this. I think he was so explicit in how he hinted at rent seeking, etc. Our industry doesn't suffer that so much, but the risk of it is too much. We also have a new idea which will run very well with, especially with good global companies, that we could have like a advanced approval authority, where if you send your packaging and once it is approved, then it is within the law. Then nobody can question it. I think the senior director also mentioned about graded penalty structure. We agree with that, and we request that there should be a separate dispensation for mobile and electronic products, keeping the reality of this industry in mind. And these specific suggestions, what we are saying, we have proposed a very high level of penalty, which is 2 lakh rupees, because we believe that the companies in the sector can afford to pay it, even for an act of omission, which is a genuine mistake. And we request that this first exemption and change should be made. And the second is that the directors of the company should not be held responsible. There should be a responsible officer in probably each jurisdiction who can be called and who can be asked to join the investigation, etc. But
this loose cannon approach of, I'll reach your chairman and I'll reach who's not involved in the operations is not doing us any good. The last point is that we want to thank the Department of Consumer Affairs. We are having a challenge of the size of the packaging because the products are getting smaller and the requirement of what are the fields required on the packaging has been going up, and we have requested that needs a urgent change, because packaging in our sector, as the mighty representative was also saying, is actually for the brand, right? And different regulations have been put there, which probably had a logic at one point of time. But the informed consumer, I mean, I would ask you, have you ever seen the packaging of a television when you go, or a mobile phone? What is the buying pattern? What is the buying behavior? So that behavioral aspect should be incorporated in the Act also. So which clearly suggests that we need a different dispensation for these. Thank you very much. Thank you very much. Our next speaker is Ms. Roshni Sen, Principal Secretary, Government of West Bengal. Honorable Minister and other dignitaries on the dais and in front of me, we have Additional Secretary in the department, very dynamic officer, we have the Joint Secretary, we have representatives from various consumer associations, we have ministers from various states, we have the media, we have people who work for consumer rights. The session is on electronic industries, which was actually a change for me. I was supposed to speak on the retail trade part, which is the main, I think 90% of the cases that we do relate to retail trade, and electronics is only a small fraction. I think not even 1% of the cases, I was just checking with my office, relate to electronic goods. But yes, it's very important, it's coming up, and now the measuring instruments also are becoming electronic. And as pointed out by my previous speakers, we have to rethink the Act and the rules in terms of the innovations, the changes that are happening so far electronics is concerned. Now, as per discussions by, very learned discussions by the esteemed speakers who spoke before me, we think we have to actually look at the entire Legal Metrology Act with a new perspective. We have to look at it from the perspective of consumer rights, consumer protection. That should be our focus. The rights of the consumer, best interest of the consumer should be the focus, rather than the prosecution of the traders. So once we change the perspective, once the paradigm changes, the entire Act has to be rewritten. So the focus has to be more on consumer protection with the best interest of the consumer in mind, rather than enforcement and prosecution of the traders. So this initiative of the ministry and the department to decriminalize the Act is indeed extremely laudable. I think it was long due, and the department has thought about it. We are all very grateful for that. It's indeed a wonderful step so far. Business confidence is concerned, confidence of the businessman is concerned, investor friendliness is concerned, ease of doing business is concerned, and our state wholeheartedly, our state of West Bengal wholeheartedly supports. From the practitioner's point of view, I'm not going into the legal or the technical issues. I just want to say one or two points, like as pointed out by the Honorable Minister,
there's hardly any second offense. In my state, also in the last 2 years, there has been only 2 second offense. That is because if the offense is committed again within a span of 3 years, then only it's a second offense. Otherwise, again, it becomes a first offense. So when there are 1, 2 in the entire country, only 10 second offenses, what is the need of having the provision of a second offense at all? That is my thought. An offense is an offense. Somebody commits an offense, necessary action has to be taken. By keeping the provision for second offense, we really do not improve things. And this I'm talking from the practitioner's perspective. It will not change things much. So we have to think of an offense as an offense. Whenever it's committed, we have to take action. Often it is found that the offenses are due to ignorance from, lack of awareness. So we also have to look at offenses from that perspective too, and for that, we have to have some sort of a roadmap, a sort of a guideline regarding which sections to decriminalize completely and where we should have a little bit of criminalization left. I was just thinking there are some sections where this also minister mentioned mens rea, criminal intent is there. For example, actual tampering has happened intentionally, or counterfeiting has happened, or they are working without any license. Some sort of stricter punishment may be there. So those have to be, actually it was also mentioned by my previous speaker, major and minor offenses. That classification is very much essential. Another very important classification is regarding the small traders and the big traders. So we may think of the punishment in terms of a percentage of turnover, of annual turnover. There was also a talk of cancellation of license in the proposals that have been given. But that also is again a difficult issue unless clear guidelines are given. Because there's some trade where there's several, like in a petrol pump, I've heard there are 12 to 13 licenses that are needed, starting from explosives license to licenses, trade license, licenses related to land, licenses from pollution control board. Several licenses are needed. So which license exactly to cancel? That's also an issue. And another issue which was discussed before me also, in many cases, the small traders, even after cancellation of license, will again apply, get the license, do the business, and commit the same offense. So the issue of cancellation of license has to be really thought of in a little depth. There are certain issues like electronics, of course, is an example. There's also the issue of single-use plastics coming up now. Now, till July, 75 microns is permitted, after that 120 microns. But who measures that? Legal metrology is not equipped to measure thickness of plastic. So which one is the agency for measuring plastic? And this will become a very important issue. Which plastic is 120 micron, which one is 175 micron, and the measuring instruments thereof. So this is one issue that will come up. Actually, I don't know, there may be some organizations who measure the thickness, but it's not really spelled out anywhere in any of the clear-cut responsibilities of any government organization. Another issue that has come up is regarding a helpline for the traders, for the retailers, for the packers. We have a helpline for consumers. Consumer Affairs Department had helped us set up, but now we are funding it. The state government is funding it from that corpus fund only. But there should be a helpline for especially the packers, because this was mentioned that what is to be written according to the legal metrology, the packaging rules. Sometimes that also is not very well known or not very clearly followed by all. So if one helpline is there, it will be useful for the packers and the retailers.
I had noted down some points regarding small traders, itinerant traders who have very small turnover, practically many of them like vendors and all who have no licenses. So how to deal with them? But I don't think it's very relevant here. But there's definitely a difference between a small mobile repairer shop to a huge mobile company. So that perspective should not be lost. As was pointed out by my previous speaker, sometimes the act and the law is misused by certain officials to threaten. That is very individual, very rare. But if the explanations are there, that who actually can be punished, what is the quantum of punishment, what is the nature of punishment, then this fear will go. And once the fear goes and the situation is more cooperative, keeping the rights of the consumer in mind, because one issue has come up repeatedly, that in the whole discussion of easing out the Legal Metrology Act, the consumer protection should not be affected. No, consumer protection is the first and foremost thing. And then keeping that in mind and the ease of doing business and business friendliness in mind, we have to design all the rules accordingly. Thank you. I guess the Pollution Control Board will monitor the thickness of the, it won't? Or, No such direction. but since it's their law. It will do the awareness, it will sort of make people aware. I was with Pollution Control Board. I didn't have the expertise to measure. Yeah. I will do the awareness. Awareness to cut the Awareness किया जा सकता है, but practically it is very difficult. It's just an instrument here. So who will handle it? That is the point now. Who will manage? Madam ने अच्छा point उठाया. Who will manage? Who will manage it? And who will implement? Thank you very much. Our next speaker is Shri Veer Vikram Yadav, Secretary Government of Orissa. Okay. Please welcome Shri KRM Kishore Kumar, IPS. Okay. Shri Shirish Deshpande, Mumbai Grahak Panchayat Grahak Bhavan. Honorable Chairman and distinguished dignitaries on the dais and in front of me. At the outset, let me first thank the Department of Consumer Affairs and also the Honorable Minister of Consumer Affairs for initiating this dialogue or a debate, if I may say, and involving all the stakeholders. And I think in this I see consumers, one of the rights is being accomplished, right to be heard. In fact, if you see, the government of the day has got adequate majority, and it could have bulldozed all these amendments if they wanted. But instead of that, the Honorable Minister has preferred to have a dialogue, debate with all the stakeholders, and government is ready to listen to different divergent views on this. So this is definitely a welcome sign. And from that perspective, I'm going to place a few points very briefly. Number one is this. It is being said that twin objectives actually dictated this decriminalization of the LM Act, Legal Metrology Act. The twin objectives that are said are, investment is going to be encouraged with this move, and is also going to ensure the ease of doing business. Now, I have my own doubts and reservations about this. And why I say so is, again, because of the statistics that is shown today
and was quoted by a couple of the honorable ministers also. If we see that the second offense, a number of cases filed for last 4 years, it is 4, 3, 3 and 7. If this statistics is to be believed, then I fail to understand that if these are the only few cases, then where is the need for talking about the decriminalization? Only few of them are going to be the sufferers. Is the industry a sufferer? These are minuscule things. I don't know, I can't imagine the percentage of it. So it defies the logic. So that statistics may not justify. But notwithstanding that, definitely, I will say that the Act calls for the revisiting and a relook at the penalties provided. There are certain penalties which, of course, can be, where the imprisonment is provided, you decriminalize that, minor offenses. But at the same time, if we see section 25, 26, and 27, we have our own reservations, and our humble opinion is that these three sections, 25, 26, 27, similarly, section 30, then section 34, I'm not going into details, I'm just numbering them, section 35, section 36, 1 and 2, and section, these are all. So these are the sections which need not be decriminalized. I will repeat again, section 25, section 26, 27, section 30, section 34, section 35, section 36, 1 and 2 need not be decriminalized. Having said that, there is another aspect to this whole process of change or amendments in the LM Act proposed. In the process of decriminalizing and removing the imprisonment provision, the penalty is being increased. And this is where we have an apprehension. इसमें भाव तो बढ़ा गया ना कि this particular provision of, particularly again if you see section 25, 26, 27, penalty up to rupees 10 lakhs. What is the guarantee that this provision will not be misused or abused by the inspectors? And is it going to again lead to the corruption? And what are the ways for that? This is going to be a problem. And this provision is going to be this thing, so government must have a reconsideration on this. You are increasing the penalty, all right, but is there any provision to see that the corruption can also be tackled simultaneously? Otherwise, whose money it is? It is ultimately, even if the industry has to pay, industry pays the money from the pockets of the consumers. So ultimately, it is the consumer's money which goes in a different way. So government must have a consideration on this point also, that penalties you are imposing, but such heavy penalties as a trade-off or as a bargain that, okay, we give up imprisonment, you're trying to please the industry, fine, but you are asking for the penalty which is totally disproportionate. But at the same time, I would say, again, when it comes to some very important provision, that is new provision, section 36(1)(a), there the provision is very, penalty is very meager. It is only 25,000 for the first offense and then 50,000 for the 50,000 to 1 lakh. This is for the whoever sells, distributes, delivers or otherwise transfers any pre-packaged commodity more than the retail price. That means selling excessive in excess of the MRP. There, even for the second offense, you are providing actually only up to 50,000. Whereas it is a common knowledge that those who are regularly indulging in this small MRP charging excess, 2 रुपया दूध पे 2 रुपया ज़्यादा लेते हैं, but the volume is too huge. 50,000 is just nothing. Any defaulter will happily and merrily pay this and get away with that. Are you addressing the issue? According to me, no. So this is the provision again, that is section 36(1)(a). That is where the penalty has to be in proportion to the profit that has been made. That one has to see. And that has to be the proportion of way of going about it. So my request to the government is always, okay, decriminalization, welcome state, but only where it is necessary.
sections, as I have said, I will not repeat again, should be actually given the second look, and only where it is minor offenses, the decriminalization should take place. Thank you. Thank you very much. As we are running behind schedule, it's a humble request to all the respected speakers to kindly make their presentation as brief as possible. And now I'll invite on the dais Shri K.C. Chaudhary, Controller, Legal Metrology, Jharkhand. आदरणीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायस पे बैठे सारे डिग्नेटरीज, विभिन्न राज्यों के सीनियर ऑफिसर्स, कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, निधि खरे मैडम, एडिशनल सेक्रेटरी, अनुपम मिश्रा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 2-3 बातों को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। डिक्रिमिनलाइजेशन से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सारे प्रावधान जिसमें इम्प्रिजनमेंट है उसको अगर हटा दिया जाए तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हटाने से पहले इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 64 पर एक बार विचार कर लेना उचित होगा। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 64 में यह कहता है, चूंकि जिन केसों में अर्थदंड हो या सजा हो, और ऐसे मामले में यदि कोर्ट उनको केवल अर्थदंड देता है और वह अर्थदंड की राशि को अगर जमा नहीं करता है, तो उस संबंधित धारा में जो सजा का प्रावधान है कोर्ट उसको इन्वोक करता है। लेकिन अब तो डिक्रिमिनलाइजेशन की बात यह हो रही कि हम इम्प्रिजनमेंट को ही हटा देंगे। तो अगर इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया जाए तो कोर्ट किसी ऑफेंडर को जो फाइन मुकर्रर किया गया है और वह फाइन जमा नहीं करेगा तो कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट क्या करेंगे, इस पर विचार किया जाए। और अगर सजा नहीं देंगे, अगर ये भय खत्म हो जाए ऑफेंडर में कि हमें जो अर्थदंड 2000, 5000, 10,000 या लाख जो भी कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये मैं जमा ही नहीं करूंगा, इंटायर प्रोसेस ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन विल फेल। दूसरा बिंदु, आंकड़ा के द्वारा बताया गया कि सेकेंड ऑफेंसेस का संख्या बहुत कम है, इसलिए सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात। लेकिन इस बिंदु को नजरिए का फर्क हम कहते हैं। जैसे आधे गिलास भरा हुआ है, उसको आप कह रहे खाली है, मैं कह रहा हूं भरा हुआ। अगर संख्या कम है तो फिर डिक्रिमिनलाइजेशन की औचित्य ही क्या है? जब संख्या ही कम है तो डिक्रिमिनलाइजेशन की ऐसे भी, इसका मतलब है सेकेंड ऑफेंस का जो डिटरेंट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, अवरोधक क्षमता के रूप में यूज कर रहे हैं, उसका प्रभाव है और इसलिए सेकेंड ऑफेंस नहीं हो रहा। तो फिर इंडस्ट्री परेशान कहां, किस बात के लिए परेशान? अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी विचार कर लिया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड पहला राज्य होगा पूरे देश में जो 2017 में सारे उनके प्रावधान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने लागू किया। हम डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, अगर उसके जगह हम ऑनलाइन केस मैनेजमेंट की बात करते तो सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होता। झारखंड पहला राज्य है जहां सारे केस, जो भी हम केस बुक करते हैं वो सारा केस ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ये है हम नोटिस ऑनलाइन देते हैं, हम उसका कंपाउंडिंग ऑनलाइन देते हैं और उसका सैंक्शन भी ऑनलाइन होता है। और जिस दिन कोर्ट हमारे डिजिटल सिग्नेचर को ऑब्जेक्ट करेगा, एक माउस के क्लिक से मेरा केस विद इन सेम डे कोर्ट में चला जाएगा।
तो हम तो प्रोसेस ऑफ जो टाइम जो हो रहा है, जो राइट टू गारंटी सर्विस एक्ट की बात हो रही है, उसमें भी हम समय का ये कर रहे हैं। तो जो चीज करना है उसको हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग विषयांतर हो जा रहे हैं कि इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया जाए। ठीक है, हटा दिया जाए तो सेक्शन 64 आईपीसी को भी सुधार कर लिया जाए। और जहां तक बात है इम्प्रिजनमेंट का, इम्प्रिजनमेंट केवल डिटरेंट के रूप में काम किया गया है। अगर देश के पास एटम बम है तो क्या उसका फोड़ना जरूरी है? वो तो डिटरेंट है, वो तो इसलिए है कि हमारे देश पर कोई एटॉमिक अटैक नहीं करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सेकेंड ऑफेंस नहीं हुआ तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, मैं इस तर्क से सहमत नहीं। इसलिए मेरा आग्रह होगा डिक्रिमिनलाइजेशन करने से पहले इन सारे बिंदुओं पर विचार कर लिया जाए और फिर आप लोग का जो दिशा निर्देश होगा उसको मैं अक्षरशः लागू करूंगा। झारखंड हमेशा अग्रणी राज्य रहा, मैं सारे प्रोविजंस को इन्वोक करने में, लागू करने में हमेशा आगे रहूंगा। धन्यवाद। Thank you very much. The last speaker for this session is Mr. Tabrez Ahmed, Group Director, Dell. Good afternoon, everybody. Honorable Minister and dignitaries on the dais, of the dais. Let me first thank Ministry for organizing this dialogue. This is very important in the sense that there are constant change happening and in different sector at different speed with its own nuances. In this situation, if country has to do well in terms of protecting interest of consumer, at the same time managing growth, relocation of supply chain from outside to India, creating job, then we need to create this dialogue and create a balance. Unless until we do that, country, what Honorable Prime Minister has the vision, may fall short. So let me first congratulate Ministry for organizing this. I'm Tabrez, I look after the public policy of Dell, but I'm representing here MATE. And MATE is basically association of electronic hardware companies, big and small, multinational, domestic, micro, and large. So we represent every segment in electronic hardware. I'm thankful to my senior colleague Pankaj for championing industry and communicating our point of view. So I will not repeat what has been told, but I will go to the point where some aspects are missed. In this industry, the rate of obsolescence is really high. And this is not FMCG, where the product goes inside body, or other sectors where the regulation has to be tighter. This is the electronic industry. It empowers us, it creates growth, and it's in line to fulfill the digital mission of Honorable Prime Minister and the nation's aspiration. So we need, and I will restrict my discussion to only this sector. Please do not think that I'm advocating something which is for other sectors. I'm not entitled to, neither I'm learned enough. Now, some of the provisions where we need to really look at, for example, Section 49. Many directors and senior management actually do not have the physically involved in day-to-day activity, nor they have the intent, as Pankaj rightly said. These are representative of big companies really trying to bring things which will empower every segment of economy to be more productive. So we don't have the intent, and in such cases, making director liable under Section 49 of LMA is probably not right. And I agree to, sir, when you said the online, I have exactly, you took away my suggestion that pan-India, we should look at not how to bring online in terms of offline, decentralized physical system of complaint and dispute resolution. If we do that, that will be great, sir. My next point, I'm also honored that, honorable state officials are here.
Industry feels many times that what center's interpretation is and what a state's interpretations are, it differs between a state and center. For a pan-India company, it becomes really difficult for our members to look at and manage different interpretations. So my humble request, industry request is there should be same interpretation. And it's not in LMA only, ma'am. To be very honest, sir, this is also in environmental issues. So wherever there are multiple states, there will be, it has to be that there will be difference of opinion in terms of interpretation. It's very important that we have a dialogue there also. As a lawyer and somebody who has got education in US and practiced in US, there should be some provision of plea to bargain at first opportunity. That will help a lot, both industry and overburdened government departments. It helps in the trial, and trial takes maximum time and energy of any legal system. So my humble request is that there should be plea to bargain at the first opportunity. Labeling, when it comes to MRP labeling, it's only allowed at the custom warehouse. Industry suggestion is that it should be manufacturers demarcated warehouse where it should be allowed. And it helps when we are launching a product and something have to be imported, it becomes real difficult if there is any change. So industry want to go by the right labeling, but to do the compliance, if the cost of compliance or the ease of compliance becomes easy, where industry can comply quickly, that will be very helpful. Pankaj also mentioned on the label on the package, things, and he rightly explained that it's becoming a smaller. I will give a kind of example. In patent, for example, sir, when patent was, every patent which is granted has a number, and it was that every product should have patent. Now, when I have a mobile, it has a small chip, and a small chip has multiple patents. Now, putting those numbers are not physically possible. And that's why we can learn from the other sector that how that in that IP, the intellectual property space has adopted to a new reality. So we should do that in case there is a difficulty in putting detail. There are some provisions where maybe I will have to differ with you, sir. Provision 29, where 29, 31.1, 36.1, 36.2. Basically, all this says publishing, selling, importing of non-standard unit. Okay, all these, and all these sections have imprisonment of 1 year and financial liability. In case of electronic industry, this may not be such a serious thing. Because nobody is eating it, and non-standard product is not going in the body. There are n number of labs who look at the standard, who look at testing. So there is a safeguard also, and it's not as injurious or as detrimental as FMCG. So we need to really look at and do away with the imprisonment. There should be financial, and if there are criminal intent, then it should be prosecuted for sure. And last point is section 49, where the company name and place of business can be made public. Our suggestion is that liability is of company, and here the directors should not be made liable and then pay for the consequences. I'm really, when I was listening to you, sir, and I really, I felt very happy when you said that there is a need to balance, and along with you, I have heard other dignitaries also say there is a need to balance between really protecting the interest of consumer, no doubt about it, but at the same time, managing business interest. So that's the need of our. MATE is very happy to engage with government, both central government and state government, to take this discussion forward, give our input, continue to be part of it, and look forward to that nation has
amendments which is going to create that right balance. Thank you very much. Thanks. Excuse me. मिस्टर तेवरेज ने एक अनुरोध किया कि मोबाइल्स में सारे इंफॉर्मेशन चिप्स में डाल देने से उनको काफ़ी आसान हो गया व्यापारी में, बिजनेस में। हमारे जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया, हमारे देश में लगभग 90 करोड़ कंज्यूमर्स है मोबाइल के। हमारी लिटरेसी रेट क्या है, और उसमें भी कंप्यूटर लिटरेसी कितना है? जो चिप्स को देख सकेगा, जो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेगा, क्या केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या कंज्यूमर राइट होगा? कंज्यूमर राइट तो 130 करोड़ जनता के लिए होना चाहिए। तो छोटा इंफॉर्मेशन, हमारा जो फिजिकल फॉर्म में जो पीसी रूल्स का जो हम 6 डिक्लेरेशन मांगते हैं, उसको देने में इनको आपत्ति क्या है? क्यों इस चीज से घबराते हैं? और 2 लाख कर दिया जाए, 10 लाख कर दिया जाए फाइन, सब्जी वाले क्या करेंगे? जो फुटपाथ पर फल बेचते हैं वो क्या करेंगे? उनका तो 2 लाख का पूंजी नहीं होता, क्या उनके लिए अलग फाइन करेंगे? और मैंने पहले भी कहा कि इम्प्रिजनमेंट अगर हटा देते हैं तो कानून के डर से अगर 10 लाख भी फाइन करेगा कोर्ट, तो क्या वो जमा करेगा? सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स पे है जी, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ऑफेंस किया। एक्सक्यूज मी, पहले हमें बताया जा, आपको कोर्ट ने 10 लाख फाइन किया, आपने जमा नहीं किया। बट सब्जी का कोई रेलेवेंस नहीं है सर, आपका विषय जो है उसके पहले आ गया है। और ये सर क्यूआर कोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक सेशन हम लोग का पहले भी डिस्कशन हुआ है, और इसमें ये अनुरोध किया गया था कि हम क्यूआर कोड में, आज के डेट में फैक्ट ये है कि जब हम लोग इंस्पेक्शन किए मार्केट में तो क्यूआर ही फेक है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। मेरा चौधरी सर मुझे लग रहा है आप अपना 1-2 मिनट में जो विषय रखना हो रख लें, और इसके बाद फिर आप बोल चुके। सर बस जस्ट रिप्लाई दे रहे थे सर, चूंकि पैनल डिस्कशन है, छोड़ उन बिंदु में जो भी बिंदु आए हैं उस बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना सदन का और डायस का मैं अपना कर्तव्य समझता था। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, a round of applause for the distinguished panelists for sharing their thoughts and perspectives with us. Thank you very much for joining us. अगर पैनल डिस्कशन नहीं हो तो देयर इज नो नीड। अगर किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ ले, लेकिन इसको मेरा एक अनुरोध है इसमें, इसको जो है ना 2-4 लोग ही पूछें, फिर एक साथ होगा, फिर अगले पैनल से भी पूछने के लिए कुछ छोड़ दें, फिर उससे। अच्छा, माननीय मंत्री जी नमस्कार, तो मेरा नाम परवेज है, वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भविष्य है, और भारत सरकार के कंज्यूमर मंत्रालय से लास्ट 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बंगाल में बेस्ड है। ये जो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसके पहले भी विजुअल कॉन्फ्रेंस से भी माननीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हो रखी है, तो उसी में सुझाव निकल के आया था कि एक आमने सामने पैनल डिस्कशन की आवश्यकता हो। आज के जिस विषय पे हुआ कि हम तो कंज्यूमर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सभी कंज्यूमर ट्रेडर नहीं है, लेकिन ये जानकर सबको खुशी होगी कि जितने लोग ट्रेडर हैं सभी कंज्यूमर हैं, चाहे वो किसी भी चीज का यूज करे, सभी कंज्यूमर हैं। तो मैं कंज्यूमर परिप्रेक्ष्य में 4-5 चीजें कहूंगा कि ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन हम हटाने की बात कर रहे हैं, इसको करने से पहले जो मंथन की बात सवेरे माननीय मंत्री जी ने कही है, इसके लिए बहुत ही डीपली और गहन अध्ययन की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले इस पैनल में डिस्कशन हो रहा था कि मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिवनेस माना जाए, डायरेक्टर को नहीं माना जाए। सर, हम उस देश में वास करते हैं कि जहां पे एक रेल का एक्सीडेंट होता है तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा देता है। अगर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेगा डायरेक्टर में, और मैनेजर को तो बलि का बकरा बना दिया जाएगा, तो डायरेक्टर को तो रिस्पॉन्सिवनेस रखना ही पड़ेगा, तभी देश में सेल्फ रिस्पॉन्सिवनेस होगा। जब सेल्फ रिस्पॉन्सिवनेस होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तो ऑटोमेटिकली आते आते डिसिप्लिन हट जाएगा। डायरेक्टर को क्यों हटा रहे हैं? आज की सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, हर 20 तारीख से पहले हर डायरेक्टर को याद रहता है कि भाई जीएसटी भरा कि नहीं भरा,
क्योंकि लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो गए। तो अगर इसमें डायरेक्टर को इन्वॉल्व रखा जाएगा, सिर्फ मैनेजर को ही बलि का बकरा ना बनाया जाए। दूसरी चीज है, जो पैकेज कमोडिटी पैकेजिंग एक्ट में कहा गया है, जो लेबलिंग पे रहती है, मिनिस्ट्री की तो अपनी हेल्पलाइन है, कंज्यूमर स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्पलाइन है, जागो ग्राहक जागो की भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है। हर एक साबुन के पैकेट पे भी पीछे में कंज्यूमर हेल्पलाइन लिखा रहता है कंपनी का, लेकिन इसके बारे में लॉ पूरी साइलेंट है। अगर उस साबुन के कंपनी के नंबर पे लगाइए तो नंबर काम ही नहीं करता है। तो ये कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये जो कमोडिटीज ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उसको सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा। भाई अगर हमसे आपसे शिकायत है, खुदरा व्यापारी के पास तो जाके दुकान पे हम चिल्ला के शर्ट वापस कर देते हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन उनका पहले काम करे। उसके सीजी फिर हम जो पेनल्टी बता रहे हैं कैटेगरी वाइज, हमारे देश में इनकम के आधार पर इनकम टैक्स लिया जाता है। यहाँ तो बिना इनकम के मापदंड को तय किए हुए, जैसे चौधरी सर बता रहे थे, हम पेनल्टी लगा रहे हैं। तो इसकी भी एक धारणा गहन अध्ययन करनी चाहिए। लास्ट में माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज कहा कि 20 तारीख तक गहन कैंपेन हो। तो इतने बड़े पैमाने पर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही संभव है। मैं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, जोन वाइज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की, ट्रेजर ऑर्गेनाइजेशंस की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, क्योंकि आप एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं लीगल एंड कमोडिटीज में, तो इसकी अच्छी से गहन अध्ययन करके, मंथना करके एक ड्राफ्ट पॉलिसी क्रिएट करके पब्लिक के डोमेन पर डालें। फिर जो है उसको करें, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये जोनल वाइज हो। क्योंकि आज मंत्री जी भी बता रहे थे कि बहुत लोग आ नहीं पाए, तो ये संभव नहीं है कि दिल्ली हर कोई आ जाए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कंपनीज हैं, सबके यहाँ TAD की सुविधा है। वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट पे आता है। इसी तरह और दो विषय पे आपके करूंगा, जो हमारे मैडम जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने बहुत ही अच्छी कहा कि किसी भी वेट एंड मेजर्स के ऑल्ट्रेशंस पे, जांचकर पेट्रोल पंप में अगर टैंपरिंग होती है तो उसको हम कैसे देखेंगे, इसमें भी एक चेकलिस्ट की जरूरत है। और मैं यही कहूंगा कि डीक्रिमिनलाइजेशन से पहले हम अपना ढांचा पहले मजबूत कर दें। ढांचा मजबूत करने से मतलब है कि जिस तरह से झारखंड, यूपी और भी दूसरे राज्य डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो पूरे देश में भारत सरकार एक पायलट मोड के तहत पे डिजिटलाइजेशन को एक जगह करते हैं, जिसको तबरेज साहब भी समर्थन कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन हो जाए तो सब इंफॉर्मेशन अपने आप सामने रहेगी। यही शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं और लास्ट में मंत्रालय के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि गहन अध्ययन के लिए जोनल वाइज कार्यक्रम को करना हो, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते थे इधर से कोई कह रहा था, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। परिचय दे दीजिएगा। Myself, legal metrology officer, Government of Haryana, मुकेश कुमार। सर, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है सर। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी कंज्यूमर है सर। उन इंडस्ट्रियलिस्ट के राइट भी इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से जुड़े हुए हैं सर। तो उन इंडस्ट्रियलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सर ये एक्ट काम करता है। अगर ये एक्ट हट जाएगा सर तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट करेगा सर? ये मेरा क्वेश्चन है सर। ये हटने का विषय कहाँ आ रहा है? ये सर जो डिक्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा एक्ट का, तो एक्ट कमजोर हो जाएगा सर। नहीं, उसका प्रोटेक्शन का एक बनेगा, जब ये क्योंकि जो इंडस्ट्री है सर, इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल खरीदना है। मुकेश जी, हम सारे लोग मंथन पे जो बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि कुछ प्लस कुछ माइनस दोनों पे विचार हो, और फिर कोई एक, मैंने अपनी जो विषय जब रखा था कि हमको दोनों को बैलेंस करते हुए करना है, हमको इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, हमको कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो सर जैसे कंट्रोलर साहब ने भी बताया कि बहुत ही कम परसेंटेज में सेकंड ऑफेंस हो रहे हैं सर, फिर इंडस्ट्री को कौन अधिकारी लग नहीं रहा कि वो परेशान कर रहे हैं? कोई अधिकारी परेशान करना चाहते हैं क्या? नहीं, वो परेशान नहीं कर रहे सर, क्योंकि सेकंड ऑफेंस तो हो ही नहीं रहे सर दर्ज। तो सेकंड ऑफेंस से फिर प्रॉब्लम क्या है सर? चलिए, अभी तो अंत में निष्कर्ष निकलेगा। और किसी को कुछ? गुड इवनिंग सर। सर एक फीडबैक देना चाहता हूँ। अभी जैसे कि पंकज जी ने डायरेक्टर नॉमिनेशन, अपना परिचय दे दें। हाँ जी।
सर मैं राजुल जैन है मेरा नाम, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जी। और लीगल मेट्रोलॉजी के अक्सर ऑफेंसेस को मैंने काफी डील किया और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ तब आप किया। बेहतर बताएंगे। हाँ जी, तो इसमें पंकज जी ने जैसे कंसर्न रेज किया कि भी डायरेक्टर नॉमिनेशन का जो हमारा मुद्दा है कि डायरेक्टर्स को नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी डायरेक्टर्स एक टॉप मैनेजमेंट पे हैं, वो डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसके कारण उनको जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। बट इसका एक और पहलू है, सेक्शन 49 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप अपने मैनेजर्स को भी कर सकते हो नॉमिनेट। एक्ट आपको बाहर नहीं कर रहा है कहीं पे भी। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे इंडस्ट्री मेरे पास आई, उसने कहा कि वकील साहब आप कुछ ऐसा तरीका बताइए, हम अपने वेंडर का नाम नहीं बताना चाहते किसी को, उसमें गलत इंफॉर्मेशन देके कि भी क्योंकि इससे एडवर्स कंपटीशन फैलता है, इस तरीके के भी बहुत इश्यूज हैं। तो वहां पे तो डायरेक्टर को ही हम लायबल कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैनेजर का क्या लेना देना बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये इससे इंडस्ट्री काफी दिक्कत भी है, जैसे एक एडवर्स कंपटीशन का कि नोबडी वांट्स टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ देयर वेंडर्स। तो इसके कारण मेरे को लगता है कि ये डीक्रिमिनलाइज अगर हम इस एक्ट को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बात सही है कि भी छोटे लोगों को जो दिक्कत हो रही है, बट इससे बहुत बड़े लोगों को फायदा भी बहुत ज्यादा पहुंचेगा, ये भी बात फैक्ट है इसमें। तो आप आइसोलेशन में कह ही नहीं सकते कि भी मैं इधर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, बट मैं इससे काफी ज्यादा है कि भी इस एक्ट को पूरे तरीके से डीक्रिमिनलाइज करके कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा छोटा सा, हालांकि सदन में कोई नाम लेके ऐसे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आई एम नॉट बाउंड बाय द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फ्रॉम माय क्लाइंट। मेरे क्लाइंट हैं जो कि हमारे देश की जानी मानी कंपनी है हैटिक इंडिया। तो जिस आपने अब एक उनका सब कुछ पैकेजिंग लेबलिंग सब कुछ ठीक है, और आप ही की स्टेट से अलीगढ़ से एक इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने नोटिस भेजा उन्हें और उन्होंने कहा फॉन्ट साइज कम है। फॉन्ट साइज बिल्कुल रीडेबल है जिसके ऊपर, और उन्होंने प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल की उन्होंने टोटल नाप के भेज दिया कि इतना स्क्वायर सेंटीमीटर्स का फॉन्ट साइज है। सर इसमें एक ये भी इशू है कि दिल्ली स्टेट जैसे प्रिंसिपल जो डिस्प्ले पैनल के ऊपर जो टोटल साइज है उसके ऊपर एनफोर्स नहीं करती है। यहाँ पे दिल्ली के भी लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलर साहब मेरे ख्याल से आए होंगे, तो हम क्योंकि हमने दिल्ली की भी बहुत एनफोर्समेंट की है और यूपी की बहुत की है सर हमने एनफोर्समेंट, तो हमें स्टेट वाइज आइडिया है कि कौन सी स्टेट क्या कर रही है। इस वक्त दिल्ली स्टेट नहीं करती है, दिल्ली स्टेट कोई भी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के ऊपर अगर फॉन्ट साइज की कोई गलती है, क्योंकि वो टेंजिबली आप देख सकते हो उसमें क्या आपने गलत डिस्प्ले कर दिया। हैटिक इंडिया के पैकेट पे कुछ नहीं है, मेरी लॉ फर्म ने उसे रिप्लाई किया, इंस्पेक्टर इज नॉट एग्रीइंग ऑन दैट। ये कोई मैं इस फोरम के थ्रू ये कंप्लेंट आपके पास बिकॉज आपका डिपार्टमेंट है ये नहीं लेके आ रहा हूँ, उसको हम बाय लॉफुल नहीं, इसमें मैं ब्रेक करके कह दूं, आप बता रहे हैं हम उसको सुधार करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। थैंक यू सर। तो इसमें एक ये भी मैंने देखा कि भी लीगल मेट्रोलॉजी क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में आ रही है, फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेशन एक है हमारा और जो कि एनफोर्समेंट रूल्स हमारे डिफरेंट स्टेट्स के हैं, तो मैंने यहाँ बहुत महसूस किया, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमने महसूस किया कि अननेसेसरी ट्रायल्स थोड़े कम हैं, यूपी में हमने महसूस किया थोड़े ज्यादा हैं, और बल्कि यूपी के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे पीसीआर वायलेशन के जो नोटिस इशू होते हैं सबसे ज्यादा है, 80,000 नोटिस एज पर माई इंफॉर्मेशन यूपी से इशू होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। तो ये जो न्यूसेंसेस है सर, मतलब इट्स नॉट द डायरेक्ट हिट ऑन योर डिपार्टमेंट, मेरा आपकी हिट नहीं है, बट एक आपकी स्टेट एक बहुत क्लासिक एग्जांपल बन चुकी है एक्चुअली। कंज्यूमर ज्यादा है वहां ना। कंज्यूमर भी ज्यादा है सर, और इससे हमारे को ये भी देखने को मिलता है कि हमें स्टेट वाइज कमेटियां बनानी पड़ेंगी इन मैटर्स को एड्रेस करने के लिए, जोन करने के लिए, जैसे कि जो हमारी संस्थाएं हैं फिक्की है या एसोचैम है, जो भी इंडस्ट्रियल हमारी संस्थाएं हैं, जैसे पंकज जी जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक जोनल रिपोर्ट्स ले सकती है कि किन स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो स्टेट्स भी अपने आप को पूरे एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने की बजाय स्टेट्स इंडिपेंडेंट काम करें अपने एनफोर्समेंट रूल्स के ऊपर। और बल्कि यहाँ तक कि जैसे आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे पास एक सजेशन है कि जैसे आप अपनी स्टेट में एनफोर्समेंट रूल्स के अंदर आपके पास पावर है कि आप एडवाइजरी गाइडलाइंस कर सकते हैं। जैसे दिल्ली स्टेट ने
एक मेरे पास उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आप मेरे को कहेंगे तो मैं आपको सेपरेटली दूंगा उसका नोटिफिकेशन नंबर वगैरह। तो दिल्ली स्टेट ने जैसे गाइडलाइन इशू करी हुई है कि भी आप फॉन्ट साइज पे ट्रायल ना करें, किसी को भी नोटिस ना करें आप फॉन्ट साइज को लेके। तो ये उस तरीके की चीजें हम, जैसे यूपी स्टेट इससे कर सकती है क्योंकि यूपी से बहुत ज्यादा है, या दूसरी स्टेट है जहां से हो रहा है, तो उसमें इंडिपेंडेंट अगर हम फीडबैक देंगे, क्योंकि सर एट द एंड एक चीज बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेडरल करेक्टर छोड़ना चाहेगी नहीं, या तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दो सब कुछ। ठीक है, आपका विषय लगभग जो है हम लोगों के उसमें आ गया है। मैडम, इनका जो विषय है, इन्हें या तो इनकी जो सजेशंस हैं इन राइटिंग मंगा करके सर के सामने एक बार उनके सामने डिस्कस कर लेंगे। तो हम तो आपके ही सारी गाइडलाइन पे बाउंडेड हैं, हम लोग तो करेंगे। आपने अच्छे सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more questions, you can connect with the respected speakers offline. Thank you very much. Once again, a round of applause, ladies and gentlemen, for a very effective session. Thank you very much for joining us. फोटो इसको पीछे आप छोड़िए, आप छोड़िए। लेकिन वहाँ तो इंस्पेक्टर नहीं है। We request all of you to please be seated as we're about to start with the next session. So you may please be seated. You need inspectors for that. Thank you very much. Ladies and gentlemen, coming up next is a panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and retail trade. We request all of you to kindly be with us, stay with us till the end. Ladies and gentlemen, we request all of you to please be seated, and we request all of you to please maintain silence as we are starting with the next session. Thank you. गाल बताइए।
Yeah. What is his name? Kajal Dekna. Assutosh. Yes. Kajal Dekna, senior member Assutosh. CRO, DFM Films. Thank you. Ladies and gentlemen, we are now starting the panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and retail trade. Please join me in welcoming Session Chair, Shri Amrite Pratap Singh Ji, Honorable Minister, Ministry of Agriculture, Government of Bihar. We request Shri Amritendra Pratap Singh Ji to please join us on stage. Sir, please join us. Can we all please welcome Honorable Minister, Ministry of Agriculture, Government of Bihar, Shri Amritendra Pratap Singh Ji on stage. Thank you. A very warm welcome to you, sir. Shri Ashutosh Padnekar, Secretary, Consumer Affairs, Rajasthan. Shri Ashutosh Padnekar, Secretary, Consumer Affairs, Rajasthan. नहीं आए मैडम, राजस्थान से नहीं आए. Shri G.R. Shrikant from RAI. A very warm welcome to you, sir. Ms. Pushpa Girimaji, consumer activist, she'll be joining us virtually. Shri K.R.M. Kishore Kumar, IPS, Controller, Legal Metrology, AP. A very warm welcome to you, sir. Shri Amit Bhasin from FICCI. A hearty welcome to you, sir. Shri Amit Bhasin from FICCI. A hearty welcome to you, sir. I will now invite on the dais Shri Ashutosh Padnekar, Secretary, Consumer Affairs, Rajasthan. So would you like to start? What's your name? Let's welcome on the dais Shri G.R. Shrikant from RAI. Yeah, hi, good evening, everyone. First of all, thanks for everyone for being here, and special thanks to the department, Secretary Sir, Additional Secretary Madam, and other officials who the last so many months they are working on this project, the decriminalization, and over a couple of times we met virtually with along with other industries, associations and all. We discussed a lot. Since morning also we discussed a lot about the decriminalization. There are different opinions, majorly unequivocally everyone wants this decriminalized, but they need to balance this. Yes, I represent here from Retailer Association of India. We represent small and large retailers. We represent around 5 crore employees across the country. We have more than 5 lakh establishments all across the country we represent.
and 90% of our members are small and medium players. Only 10% are organized retailers, or rest of all are very small retailers, like what we discussed, Honorable Minister, in the morning. They work come from rural areas, urban areas, and semi-rural areas. So first of all, why we need to have this decriminalization? Emotions apart, let's talk about the facts. So some of the speaker earlier told that we need to have the best global practices. So I'll start with the best global practices. See, this Organization of International Legal Metrology is the governing body for across all standards, and around 190 countries are the members of this organization. And believe me, and you can search on the Google also, none of the country has these provisions of criminalization except for intentional, except for mens rea, which you already many speakers have spoken since the morning. I'll take you two examples of the two countries where consumer interests are more protected than anyone else. You have US, you have UK. Let's start with the UK. UK, you have United Kingdom Weights and Measures Act 1985. That doesn't have a criminalization provision. That doesn't have an imprisonment provision. What they have? They doesn't have penalty? No, and they have the penalties. They have a graded penalties, like many speakers spoke in the morning. So what is the graded penalties? It starts from scale 1 to scale 5. Depends upon the degree of your offense, it will be penalized. And our penalties, the proposed penalties going to range up to 10 lakhs. But even today, in even UK, the maximum penalty is 5,000 pounds. So we need to consider that while imposing penalty, we need to consider what is the gain, what is the profit that particular trader has made. The similar provisions is there in Food Safety Act. Before imposing any penalty, the adjudication officer has to look into the profit made by the trader, seller, whoever it is, then need to impose the penalty accordingly. Similarly, I give an example of UK. You go to US also, the same provision exists. You go to any Europe, until unless the act is malified and intentionally done, this is not been criminalized, is not been sentenced, sent for imprisonment. So one more best example what we can do, we just borrow a couple of provisions from Food Safety Act. Many of the speakers have spoken about the consumer interest. Yes, we are all consumers, no doubt in that, and we need to protect the consumer interest. That is not because all decision with any industry or any retail, anyone makes it's all decision will make around the consumer and consumer interest. No company will exist if they prohibited, forfeited, or ignored the consumer interest. No one exists. No company will exist. So consumer interest is the prime important. So in food safety, it's the most stringent law than a legal metrology law. In food safety, a manager can be a nominee. There was a question coming that only director need to be there, otherwise the act will be diluted, otherwise the interest of the company will be diluted. The answer is no, because you have the neighboring law, food safety law, which is more serious than your legal metrology. There you have the provision for appointing a manager. Now you have the food safety law. If the offense is very minor, it can be compoundable. Only in case of serious offenses, then it matter will go to the criminal court and will be sentenced. Otherwise, it will go to the additional district magistrate. It will be compounded. Now coming to the penalties also, while imposing the penalty, the adjudicating authority will assess how much profit that particular trader has made upon of this. Then only the penalty will be imposed. So this can also address about the small traders and large traders. What we discussed in the morning, that penalty should be equal, whether the penalty should be equal to everyone, this can be addressed to this. So the answer is, if nominee is, manager can be a nominee, then it's act, the seriousness of the act or the seriousness of the company will be diluted. The answer is no. Then why we need to have this? Because like honorable speaker, honorable ministers told in the morning that law has to change. Yes, law has to be changed. Why? You might have read that very recently Supreme Court in two major cases had decriminalized the act. One is IPC 377 and IPC 497. Supreme Court clearly said that the laws which made 100 years ago has to be changed, because law should not be static, law should be dynamic. According to decriminalization, yes, there was a need at that time, that now the time has changed and the consumer awareness is increased,
And more importantly, no consumer is going to benefit if someone goes sent to behind the prison. Or else we can look at the alternate provision to incentivize the consumer in case he is some deficiency has happened to him. In that case, we need to incentivize, we need to provide some kind of a compensation to the consumer. But giving levying penalties and imposing penalties will not solve the purpose. Further, very recently, Food Safety FSSA of India has issued a notice to all the state commissioners saying that minor penalties, minor deficiencies can be addressed by issuing an improvement notice instead of straight away filing the cases. So similar provisions can also be incorporated here, or similar, because there was some certain clarification has been issued by the Director Legal Metrology, but the same thing has not been executed or implemented at state level. So our one more request is to issue the improvement notice at the first offence, and second offence and onwards it can be penalties, but we request that penalties should be reduced considering the retailers we represent are very small. And in case, what happens then? In case of any intentional act, in case of any malified act, you have IPC 264 to 267. This is there since last more than 100 years, and this provision will address in case of any tampering of weights, in case of tampering of any measures. So with this, we support the department in fully in proposing the decriminalization, and through the industry, especially retail industries, Retail Association of India, we welcome this move. Thank you for this opportunity. Thank you very much. Now Ms. Pushpa Girmaji will join us virtually. Okay. Thank you. Thank you for giving me. Is my voice audible? Hello. Yes, ma'am, your voice is audible. Hello. Yes, audible. You're audible. Yeah. Okay. Well, I have a slightly different view in the sense that I do feel that this whole concept of decriminalization of the Legal Metrology Act is based on two surmises. One, that the business is very honest, and two, that the state is unnecessarily harsh and cruel. Neither is true. In fact, this whole argument or the campaign for decriminalization of LM Act has come from big businesses who are claiming that even for small inadvertent mistakes on a prepackaged commodity, say vis-a-vis label information, they're subjected to harsh penal provisions. Now, how can big businesses with their battery of legal advisors make such inadvertent mistakes? Besides, how do you determine what is deliberate criminal and what is an honest mistake? I remember some years ago when a consumer organization in Ahmedabad was testing some packaged goods. They found that in a number of packaged commodities, they were underweight. And then when they checked, they found whole batches to be underweight. Now, the thing is, by even slightly tampering with the weighing scale or the manufacturing at the manufacturing unit, the manufacturer can make huge illegal profits. And the loss to consumers as a class proportionately is very large. So do you let off a manufacturer because he says it was inadvertent, despite the fact that it's cost consumers so much loss? Even if the manufacturer did not deliberately do it, selling underweight packages is not only against the law, but also shows the negligence of the manufacturer. Another important point to be noted is that the law provides for only a small fine for the first offense, and it's only the second offense where there is penal provision. And then several speakers have already spoken about how there's hardly any second offense, and if an offense is committed the next year, in fact, it is considered as a fresh offense. So there's hardly any second offense. So that means the penal provisions are hardly being used. So I don't really see what this is all about. And of course, in some sections, there are provisions for imprisonment as the first offense. That can certainly be looked into, provided depending on how grave the consequences would be in case of violations.
Otherwise, I really don't see why so much is being made about the penal provisions. In fact, for sale of prepacked commodities not conforming to declaration on the package as provided in the Act, the first, even the second offense is only a fine. And even in the subsequent offense, it's fine or imprisonment. So let's not also forget that the Legal Metrology Act is not just about prepacked goods. It covers a wide range. That is, I'm only talking about the retail sector. It covers a wide range of goods, including sale of petroleum products at the retail outlets, and then LPG, jewelry. In fact, at many of these outlets, tampering with seals or, scales, tampering with seals or selling underweight goods is not uncommon. And in case of sale of jewelry, for example, the loss to the consumer, given the price of gold, is really enormous. So the law cannot take, these offenses lightly. And of course, the argument that I have heard from many businesses is that the directors of MNCs are being summoned by the judicial magistrates of, somewhere in Balia or Tumkur and things like that. Well, those who are saying this are really attacking, I feel, the very foundation of our democratic system. One of the pillars of democracy is Article 14 of the Constitution, equality before law and equal application of the laws. So our judicial system does not look at the offender status or bank balance to decide whether or not to issue summons. And what surprises me here is that every consumer protection law has penal provision. In fact, the new Consumer Protection Act of 2019 also now has penal provisions. So why should an important law like LM Act, meant to protect consumer interests, be shorn of penal provisions? In fact, let's not forget that today there are, around 340 to 400 million people below the poverty line, and they're not literate. And it is the duty of the state in general and the Ministry of Consumer Affairs in particular to protect them. In fact, I would call for modernization of the LM Act. I think this is really good. This is the time, I think, for us to look at modernizing the Legal Metrology Act to bring in more modern concepts of consumer protection. For example, the law should have a provision for compensation or even refund to consumers affected by violations of the law in retail trade, for example, wherever consumers have suffered because of underweight packages or something like that, or because of, tampering with seals at petrol pumps and things like that. There should be a provision for refund of the money to consumers. And similarly, I do feel that the fine should be more practical and just. A radiowala who uses a stone as a substitute for weight obviously cannot be equated when it comes to fine with a jeweler or even a multinational company. The fine should reflect the illegal gains of the seller and manufacturer. I do feel, of course, several speakers have spoken of graded fines earlier. And I do feel that we must, that it is very important to ensure that while fines are being calculated, one must look at the illegal gains made by the perpetrator, to calculate the fine. And then also, I feel it is very important to ensure transparency in the enforcement process, because there are often complaints about corruption or malpractices in the enforcement process. So there should be transparency, and the law should provide for involving, say, local citizens so that there is more transparency. And of course, earlier, I think the secretary also mentioned that, the enforcement should not be just to kind of meet targets, but or to make money for the, exchequer, but to actually ensure justice. So the law enforcement also has to be just and fair. Lastly, I would just like to emphasize that ease of doing business should not mean diluting the provisions of a law meant to protect consumers. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. I will now invite on the dais Shri KRM Kishore Kumar, IPS, Controller Legal Metrology,
from AP. Honorable Minister, the officers, good evening to all of you. From the Andhra Pradesh point of view, I would like to highlight one or two points. Basically, it has been made very clear that there is a need to balance the requirements of the industry and the consumer protection. This balancing can be achieved by having certain safeguards. I have also suggested to Pankaj earlier, who has raised this aspect of this example we can take of the directors of the companies. Instead of telling that the directors of the companies will not be liable, we will have to say, in case of you want to take action against the directors, the Ministry of Corporate Affairs, the central government approval has to be obtained. There can be safeguards to various people, so that in case of any apprehension, in case of any other thing, that can be appealed to them and it can be done. As he has rightly quoted that example of an inspector threatening, that type of thing will not happen. What has happened is, in Legal Metrology Act, we have not done anything that grading that we generally do in criminal law. With the, I belong to 89 batch of IPS, with the background of implementation of the criminal law in police. I feel Legal Metrology Act, every power is with the inspector. That is why you are getting into this much of nuisance. The best thing that need to be done is the safeguards has to be protected. Instead of decriminalizing, in the sense you will remove the criminal. No. If it is a crime, it will be a criminal only. By just declaring or removing, it cannot be done. So there will be some other law by which that will become criminal. So safeguards have to be done in the Legal Metrology Act, particularly in relation to the directors. You say that, and your directors thing is a corporate affairs business. So there is a justification for you to say why the central government approval has to be done. That is one. Second, this increase in the penalty. Yes, there also the same. Grading has not been done. If you say that 2 lakh of penalty can be done, you say that an inspector is competent up to 20,000. A AC, assistant controller, is competent up to 1 lakh. DC is competent up to 5 lakh. You can even say 10 lakh petition can be the controller. So once you have various authorities, various people will apply their mind why that has to be done, and is there a reason, and there is an ability. Instead of taking away the whole thing or having that entire 2 lakh on that trader, some sabji wala ka kar diya, sabji wala ka an inspector can do, but he will do only 20,000. If he has to do 2 lakh, it will have to come to the headquarters. Then that person will apply his mind, why I should punish this fellow with this huge number, things like that. So my feeling is, clearly we have understood balancing. How to do the balancing? The balancing is through in terms of creating of the safeguards. We have done safeguards in other criminal laws also. There is a conference on this prevention of atrocities, SC/ST atrocities in the same hall. In that act also there is a safeguard. The IO has to be a deputy superintendent of police. It cannot be SI or inspector. SI or inspector is the investigating authority in all the cases in India, except these PCR cases, SC/ST cases. Similar thing, you should have the safeguards for the director, for the these various levels of punishment, etc. That will only solve the problem. Taking away the director is also a very, very dangerous thing. Like you had a Bhopal incident, we could not. And really, if you openly say that the director is not responsible, then there will be a lot of incentive for them to do and kar do. That's all. मैं देख लूंगा, because he is not responsible for that. Please do not do it. You get into a major nuisance if you do like that. Particularly this 27th section. Read through this section.
Penalty for manufacture. It is not doing. It is for manufacture of non-standard weights or measures. If you say that there is no crime, tomorrow onwards I will manufacture hundreds of ivory is that weighing instrument. I will do pevery. Then that pevery will be sold whole of India. It is a non-standard, non-approved manufacture. Everybody will know. उसमें डाला तो 1 kg नहीं 900 ग्राम को हो जाएगा. उसको पेनल्टी भी नहीं है, उसको जेल भी नहीं है, उसको पेनल्टी है. Wherever you found that dowry, you will have to pay some 10,000 rupees fine. You can get away with it. No. If somebody producing manufacture and sale or sale of non-standard weights and measures, yes, that fellow will have to go to jail only. Several states have agreed. Fortunately, Odisha has agreed, UP has agreed on this section 27. Then 26 also, penalty for tampering or altering of standards. This has been existing for years together. Weight tampering with that, adding something, all that is there. There, my only request is, yes, if you are feeling that there is a small fellow is being affected, channel it, make it. In case of this tampering, you say even this for 10,000 or this penalty can be levied only by an assistant controller, can be levied only by this person. One amount has to be there, but a penalty removal is very dangerous. In section 37, that is also very dangerous thing. This packaging, 37, 6, 1 and 7, people have raised that point also. Penalty for selling, etc. of non-standard packages in declaration. I think this has not been maybe properly understood. See, non-standard packaging in electronics also you was telling. What is the problem, non-standard packaging? Why this standard packaging we have been insisting? Like, recently, everyone, if very many of you who have bought that cooking oil, you would have understood the prices have increased dramatically from 130 rupees per kg. It has gone to 180 rupees, 200 rupees, etc. In AP also, we are attempting to control lot of things. Anybody had an opportunity of buying, going personally, because very many of the offices we don't go and buy. Buying, you will know, you would have known some 4 months back, if you go Freedom Oil, it is written 180 rupees, it will be sold for 140 rupees. It is the practice of this cooking oil industry to print a very high price, to take care of the fluctuations and sell at a discount. Madam ji, ye 140 ye aap लीजिए, discount है उसको देगा. And now once they wanted to raise, they have raised it to 180 rupees. Now we are not able to control anything. And when we said you don't raise, now they are printing 200 rupees. Now that it is also legal. Then another fellow has done the very innovative thing. He is not selling 1 liter packet. It appears like an 1 liter packet, but it is 900 liters. And now he says, he say hum 140 ko de rahe, 160 ko de rahe. Then people think it appears like a 1 liter packet. And again, 1 liter, 1 kg, there is a difference. Then he will say, no. Inside it is written like that. He has made a declaration. But then, so this question of non-standard is also very important thing. We cannot. So my request is, the intention of the ministry is very good. We need to, provide a safeguard to the, from the lowest trader to the highest directors of the companies. There is no dispute about it, but do it in a very systematic manner. There are various safeguards and provided in various laws and other things, instead of doing away with the entire thing. Somebody also, if I am permitted, I will take 2 more minutes. None of the countries such a thing is there. Let us not get into those things. In India, we have a Dowry Prohibition Act. How many countries have this Dowry Prohibition Act? To my mind, no other country. Maybe Pakistan and Bangladesh. They are all originally Bharati hai, wo wahan bhi ho sakta hai. So there is no other act. Dragging Prohibition Act. Maybe it is not. In US, definitely. Dragging. So you will all remember that people have been killed
due to the ragging. Yesterday I issued a complaint. In Veda Pathasala there is a ragging. Generally, we have not attended to that, and people are doing it. So let us not get into it. And the American, US based, no. India is different. There, if there is a red light, nobody will cross it. If anybody will traveled, yeah, you will know. Even if there is no vehicle, no constable, they will not. They will stop in red light. In India, even if a constable, few whistle marega, usko chale jayega. That is the problem. Please understand Indian situation. Let us not remove certain things which you will get into a problem. This act has been enacted after a thought out manner only. Only thing is, a certain safeguard has not been done. Certain things which are done in other legal things have not been done. This type of protections, do it. And I am sure the industry will appreciate. I told Pankajji Yahi itself that you get central government approval. For any director, central government approval is there. That is sufficient for us. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. The last speaker for this session is Shri Amit Bhasin from FICCI. Hi, good evening, everyone, and thank you for the ministry, thank you for the department for holding this conversation. We have been talking about this for a long period now, and I think it's good to have everyone here and different views being shared in this dais today. I am representing FICCI FMCG committee. My name is Amit Bhasin. I think before I start on my points, it's in last some of the sessions, it's quite interesting to see such a diverse views coming on this topic, and I think I feel the views are still on some extremes. There is just, it was said that all businesses are not honest, right? And it was also said in the morning that the non-compliance is happening only at those 3 or 4%, which is the tail end of the businesses. I think, we have to start with this position that all businesses are not dishonest, right? And the consumers, business value consumers as well. It is a part of the ecosystem. If the companies start deceiving its own consumers, then they won't be able to survive. So I think, yes, for any law, there are non-compliances in the country, and that happens, and there has to be way to deal with it. At the same time, we have to start with the position of trust with the businesses. If we start with the position of mistrust with the businesses, that each business is trying to deceive and each business is trying to fool the consumers, then that does not serve the purpose. Then this will not take conversation any forward. I think, sir, you made very, very valid points. Thank you for that. You talked about international thing as well. I think, while the case for decriminalization has been well made out since morning, I think the classic example in our country is transition from PFA to FSSAI, right? It was an act with very, very serious criminal provisions. A lot of these deliberations happened at that time as well. Simple principle, two theories were applied. One was the principle of harm, and other was the principle of proportionality. If there's a harm happening to consumer, then yes, definitely. And I think no industry association is saying that we don't want to punish people when there is a deliberate harm being caused. So if it is a harm that is happening, it has to be severe. There has to be deterrence that has to be created. Other is proportionality. So what are we talking about? What are the offenses we are talking about when we say decriminalization? Things like font size difference between the MRP, things like smudging on the pack, things like size of the declaration that is being made on the pack, right? I agree these are important ones, but the question again is it really causing any harm to the consumers? And are these really deliberate? I think again the question to ask is, will any company just go and reduce the font size? So the well-governed companies don't do it. It is more than often inadvertent error only. These inadvertent error happen when lakhs and lakhs of SKUs are being produced on a daily basis, right? So no responsible company which is really has a huge reputation will do things like that, which is not going to give them any money. By the way, by putting font in the smaller size, they are not going to earn any profits. By having a small declaration on the pack or not putting the rupee symbol, they are not going to earn any profit. So I think we have to therefore distinguish, and I think that's the point I'm just trying to make, because I see the discussions were in two extremes. Either there's a view that all businesses are dishonest, or there is a view that we should completely decriminalize. I think we are just trying to say as FICCI that wherever there is a theory of harm, if consumer is getting any harm, please punish.
But wherever offenses are smaller, please keep the punishment proportionate with that. That's where the grading of punishments and everything is being discussed since morning as well. So I think those are the two principles I just wanted to set forward before I go with other points. I will try to keep it very, very sharp because I think we have discussed most of them. I think revision of penalties and the second offense is something that has been talked about. Yes, there is a need to revise it and make it more stringent when there is a repeat offense. There is no denial of that. As Fiki ma'am, we have submitted our proposal where we have said that if there is a repeat offense, then please punish harsh so that there's a deterrent created, right? So there is no denial on that. We have also proposed that there has to be an adjudication mechanism. I think, again, one of the learning from PFA was that there are a lot of cases which go and clog the judiciary system. There are a lot of cases which are just lying there without reaching any conclusion. And the judiciary system in our country, everybody is aware, it's already overburdened. So this can be a good attempt to really declog that system by putting an adjudication mechanism, which is already, by the way, a precedent is there under FSSAI Act, where an adjudication officer can put the right fine considering all the factors, what kind of profit has been made, what is the kind of nature of offense. So I think that is something that we have proposed from FICCI. Other one, again, point you have made of improvement notice, again, very, very valid point. And I think since morning, some of the principles which have been made by Honorable Minister as well of mens rea, intent of the person, if we really want to increase the compliance rate in this country, we have to give an opportunity for people to learn from their mistake. And that's where the whole concept of improvement notice comes into play. Allow that person to understand where he is going wrong, allow him to improve. If he continues with the same offense after that, of course, we have to take a stringent action. But please allow him to kind of have an opportunity to understand, appreciate the law, and then take right kind of steps. And hence, I think we have a support in FSSAI Act already. We can replicate it. If it can happen in food law, it can definitely happen in legal metrology as well. I think the last point I would just make, and again, my good friend said about directors nomination and manager nomination. While there is a view that exists that current section 49 present an opportunity to nominate any other person as a nominee under the act, the fact remains the section starts with the language said director. So it says that a director has to be nominated. So even if you have multiple offenses, the word used there is person. It does not clarify that any manager can also be nominated. So if at all the view of department is that a person of the stature of manager, which by the way is again in FSSA law that provision exists, we need to clarify this position that a person at the managerial level can be appointed as a nominee. I think the case again has been well made out why directors need not to be there in all the cases. Again, sir, with due respect, completely agree. If it is a harsher kind of a thing, theory of harm is proved, director has to be prosecuted, but not for all minor offenses. That's the only point I'm trying to make. So I think these are the few points I just want to kind of say. If we keep these principle of proportionality and principle of harm in mind, I think we can still find a solution which is good for industry, good for consumers. As I said, all of us are part of the same ecosystem. Consumers are as relevant for companies like us as it's relevant for the regulator, and therefore we need to find a solution which works for the entire ecosystem. Thank you very much. Thank you very much. A round of applause, ladies and gentlemen, for the eminent speakers for a very insightful session. Due to paucity of time, we'll not be able to take questions. You can connect with the speakers offline. Thank you very much for joining us for this session. Thank you so very much for sparing your valuable time for us. Thank you. Thank you, sir. Do we have any questions? No. बहुत महत्वपूर्ण विचार आए हैं. So one thing that has come very good from the controller Andhra Pradesh side, that there must be grading systems while making the compounding of the cases. So that the state may incorporate in their enforcement rules. So that way the most of the problems of the small industries may be reduced. That's I feel as a director legal control.
थैंक यू सर। ठीक है, समझ गए। जब कोई नया फैसला लेना होता है, कोई नया कानून का उसका प्रारूप सामने आता है, तो मन में शंकाएं पैदा होती हैं, कई प्रकार के सवाल भी खड़े होते हैं। उन सब का समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो विचार आपके लिए जा रहे हैं, उन विचारों को सरकार उनको ध्यान में रख के और कोई फैसला नहीं लेगी, यह भी नहीं होगा। अब देखिए, देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स। उसमें एक है जो गवर्नमेंट है, उसका विभाग है, जो अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। दूसरा उसका जो बिजनेसमैन है, और तीसरा जो कंज्यूमर है। इन सबके इंटरेस्ट में ही कोई कानून बनेगा और इन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, इसलिए मन में कोई शंका न रखा जाए। और मैडम, मैं तो आपसे कहूंगा कि एक एक विचार आपने नोट किया है और लिस्ट जरूर बनाइए। उसमें किसी विचार को कम महत्व न दिया जाए, क्योंकि अंतिम रूप से कानून का जो स्वरूप होगा उसका विचार करते हुए सबों का विमर्श, सबों का सजेशन सामने रहना चाहिए। और यही उद्देश्य है इस प्रकार से एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने का, मैं समझता हूं। इसमें कई विषय आए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी जो पैदा होंगी इसके कारण, तो वह भी प्रभावित होगा। तो उन सबको भी ध्यान में रख करके ये कानून देखने में तो बड़ा मीनिंगलेस लग रहा है और लग रहा है कि ये तो यूजलेस कानून है, लेकिन इसका बड़ा दूरगामी परिणाम है और बहुत दूर तक ये कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा। तो सबको ध्यान में रख के ही भारत सरकार कानून बनाएगी। हमें भरोसा रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जो संवेदनशील भी है और बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ एक एक विषय पर विचार करने वाला व्यक्ति है। और जो विभाग के इस मंत्री हैं, निश्चित रूप से वो रेडिकल चेंजेस के लिए जाने जाते हैं। जहां भी रहे उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है और परिवर्तन होना भी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने जो अपने लिए कानून बनाए थे, उनका व्यापार था, व्यापारियों का बनाया हुआ कानून था और वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो कानून उस लिहाज से उन्होंने बनाया था। क्या वही कानून चलते रहना चाहिए? यह भी एक विचार का विषय है। और इन 100-150 वर्षों में उस कानून वह कानून कितना प्रभावशाली रह गया, यह भी एक विचार के विषय है। तो जब कानून प्रभावहीन हो गया है तो उस कानून में क्या संशोधन हो सकता है, उसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है, सामने की जो आवश्यकताएं हैं, जो चैलेंजेस नए पैदा हुए, इस कानून में थोड़ा संशोधन करके और उसको कैसे देखा जा सकता है। तो ये सब कुछ है उसके पीछे, जो भाव है, जो भावना है भारत सरकार का। ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इतना भरोसा, इतना विश्वास तो रखना ही चाहिए। और सरकार ने जो सजेशन दिया है, हम तो धन्यवाद देंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि आपने कानून में कोई संशोधन करने के पहले एक बड़े हिसाब से और सबको आमंत्रित किया है, विचार मांगा है। जिन राज्यों ने सीधे पार्टिसिपेट किया है, उन राज्यों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। वह आगे भी अपना सुझाव दे सकते हैं। और फिर जो कानून संशोधन होगा उसमें इतनी परेशानी क्यों है? हमने कहा, लोग जो कह रहे थे, विचार रख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस कानून तुरंत बन जा रहा है। ऐसा नहीं है।
ये कानून का जो प्रारूप तैयार होगा उसे कैबिनेट अप्रूव करेगा, उसके बाद यह पार्लियामेंट में जाएगा। देश भर के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं संसद में होते हैं वो इसके बारीकियों को देखेंगे, उस पर गहन चर्चा होगी, तब संसद के सहमति से ही कानून बनेगा। और संसद में सभी राज्य के लोग हैं, आखिर वो देखेंगे ही, और उन्हीं के भावनाओं के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं भिन्न भिन्न राज्यों से। तो हमने अपनी कठिनाइयों को भी रखा है, कानून जो बनेगा उससे क्या फायदा हो सकता है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, सब तरीके से विचार हुआ, विमर्श हुआ। और आप सबने सब देखा है। मैडम, आपको तो मैं जानता हूँ, आप बहुत योग्य अधिकारी रहे, बहुत पहले से मैं जानता हूँ, और आप भी मुझे जानते हैं। तो आप ठीक ढंग से लिखिए और जो है वो मंत्री के सामने रख दीजिएगा, ताकि किसी को ये अनुभव ना हो कि विचार होते समय मेरे विचार को अनदेखा किया गया। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस तरीके से विचार विमर्श हुआ है तो लोकतंत्र में वैसे ही विचार भी होने चाहिए। एक अधिकारी भी कितना खुला, जैसे विचार नहीं दे रहा हो, डिबेट में भाग ले रहा हो, डिबेट कर रहा हो, इस प्रकार से अपनी बातों को रख रहा है, बहुत अच्छी है। अच्छा वातावरण में बातचीत हो रही, सब कुछ बिल्कुल खुले मन से सब बात हो रही है, कहीं कोई उसके मन में संकोच नहीं, और वो कह रहा है। तो इस प्रकार से जो विचार आमंत्रित किए गए हैं और यह जो आयोजन हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको भी, माननीय मंत्री जी को भी और विभाग के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विचार मूल्यवान हैं, सबको ध्यान में रखते हुए आप लिस्ट बना करके रखिए। सबको प्रणाम। Thank you very much. थैंक यू। हो गया? Ladies and gentlemen, kindly keep the applause going. Thank you so very much for joining us, for gracing the occasion with your presence. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, as we are running behind schedule, so we are merging the last two sessions. So without any further ado, let's kickstart the session. The panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and drugs and cosmetics industries and food and non-alcoholic beverage industries.
1 second. अब आपका ना टिक नहीं करा रहा हो. Your name is not tick mark. Can you please check with Mr. Shailendra? You will be attending the session. इस बार जो उन्होंने ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है. ये भी उल्टा है. इसको भी सीधा कर. Yeah, yeah. Don't worry. Ladies and gentlemen, we are now starting with the panel discussion on decriminalization of the Legal Metrology Act 2009 and drugs and cosmetic industries and food and non-alcoholic beverage industries. Please join me in welcoming Session Chair Shri Ranendra Pratap Swain ji, Honorable Minister, Food Supplies and Consumer Welfare Department, Government of Odisha. Can we all please welcome Honorable Minister, Food Supplies and Consumer Welfare Department,
Government of Odisha, Shri Ranendra Pratap Swan ji. Sir, a very warm welcome to you. Joining him on stage, Shri Kamlesh K.R. Pant, Chairman NPPA. A very warm welcome to you, sir. Dr. Navneet Tewatia, Indian Pharma Industry. Hearty welcome to you, sir. Shri Pankaj Fadnis, Indian Beauty Hygiene Association. A very warm welcome to you, sir. Shri Kajal Debnath, Senior Member SOCHAM, CRO, DFM Foods. A very warm welcome to you, sir. Shri Vijay Vagmare, Secretary, Government of Maharashtra. Hearty welcome to you, sir. Shri Vikas Salwar, Deputy Director, FSSAI. A very warm welcome to you, sir. Shri Ashim Sanyal from Voice. A very warm welcome to you, sir. Shri Arun Kumar, President, Dignity Restoration and Grievance Settlement Association. Shri Arun Kumar. I'll now invite on the dais Shri Kamlesh K.R. Pant, Chairman. Sir, would you like to initiate the proceedings? Okay. All the members of the dais, we are at the fag end of the workshop. Must be losing interest. People must be trying to go back home. But then, because of the paucity of time, people have lost interest. But I, for myself, is interested in this law. That's why I chose to stay back. We have clubbed the two sessions, very important subjects. That is drugs and cosmetic industries and food and non-alcoholic beverages industries. Now, just prior to our discussion, when the electronics and manufacturing industries was going on, the gentlemen, those who were dilating upon that subject, were telling that something doesn't go into your body. So we are we are not injurious, but drugs and what you call beverages and cosmetic, FMCG, that's a parallel market going on in the country. Parallel economy is going on. You may not be injurious, but you are spurious. That is there. So we are forgetting and equating everything together. Now that drugs and cosmetic industries, I was telling in the morning that you have n number of spurious brands. You just can't differentiate. Except father and mother, everything can be produced in a fake market. So Make in India has been duped by Fake in India. So in that background, drugs and cosmetics and food and non-alcoholic beverages, I must thank the department and none else than Mr. Piyush ji for including these very important topics which are the part and parcel of every Indian in their day-to-day life. These two subjects. It is the right of every consumer to not only have access to safe and quality food, but also in the right quantity, and also
vis-a-vis drugs and cosmetics, more so in drugs. I can say with certainty that application of this Act, food and non-alcoholic beverages, is by the most important aspect of the Act. Because as the Consumer Welfare Minister, I get hundreds of complaints every day on my departmental Twitter handle, on my handle, but also in my department, that is in legal metrology, mostly related to specifications, quantity, MRP, expiry date, etc., not mentioned in the packaged food packets, especially produced locally. Because this act, I think, is covered under the concurrent list. So the states have a stake in it. You cannot ride roughshod over everything because of the free market economic scenario where we are usuring a different standard. Can't apply the letter of the law and equally to everybody. That should be in our back of our mind. So whenever I or any member of our esteemed panel mentions the word beverages, it should be taken as only non-alcoholic beverages only. That is a statutory caution from me to everybody present in this important discussion. Government of India, in exercise of the powers provided under the Legal Metrology Act 2019, rules under 2011, and Legal Metrology Packaged Commodities rules under 2017, with amendments, especially in relation to e-commerce entities, legislated by keeping the interest of the consumers in mind, keeping the consumer in mind. That was the background how it was legislated in the floor of the parliament. Now, Legal Metrology Packaged Commodities 2011 rules, what it covers, the provision of the rules under legal metrology under respect of labeling food products broadly covers name of the manufacturer or packer, address or short address of manufacturer or packer, principal display panel, declaration on the commodity or the package, month and year of the manufacturer, best before or expiry date, net quantity, maximum retail price, common generic name, dimensions if any. These are the salient features on which the rules want us to abide. But however, the food and non-beverages packaged industries have raised their concern regarding some of the safety standards undertaken under this Act. If I am not mistaken, there have been several demands from the wholesalers as well as retailers regarding the difficulty they are facing in these acts. And they want to do away with the mandatory provisions. Now, violations of this law can lead to imprisonment. Besides, for companies to get into details of exactly where their product is manufactured or cumbersome, just country or of origin should be as fine as opposed to listing the exact location, town or city. The industry feels that these are to be done away with. There is a need to decriminalize the provisions of legal metrology. So today's last but not the least discussion that we are going in, to deliberate on these issues and how to make balance between the interest of the consumers without compromising with the rights and ease of doing business for the food and non-alcoholic beverages industries, and as well as the drugs and FMCG and the cosmetics industries. We have here in the House a distinguished panel to guide us and help the government to take an informed decision on this issue, which is set to the way business is done in India. Without delay, I am inviting the speakers to start off, but then somebody who was asked from the crowd that this should be in the public domain. I would request that whatever we are not the
we can't say that this is the macrocosm in the microcosm. The entire country is 140 crores. And from state to state, we have our own culture, language, different kinds of eating habits, other things. That has to be taken into consideration. So whatever we belch out here, that should be placed before the entire country so that they take a informed, because it will nevertheless, if you are going to go for a new act altogether, doing away with this, so we can't surrender to the market lock, stock and barrel. It will go to the parliament, no doubt, but we should be very careful to find out a good balance between the two. Otherwise, it will be like that the other person told, you know, in my town in Bhubaneswar, when it is after 9 o'clock, the traffic man goes away. Then you find everything is in a topsy-turvy. I do not know whether it happens in Bhubaneswar, in Delhi or not. So one constable is enough to put his foot down, the entire traffic is in order. The moment he goes out, you find pandemonium. That is our country. It's a good example, and that is how we must also conduct our acumen in the legal. So I want the distinguished persons to understand the nuances of our law and go accordingly and give us a good idea. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. I'll now invite on the dais Shri Kamlesh K.R. Pant, Chairman NPPA. Honorable Minister, sir on the dais, the panelists, respected panelists, and all the officers, media, industry associations, everybody present here. Good evening. I will be covering the perspective of Department of Pharmaceuticals. I am NPPA, some of you may not be knowing. So NPPA is basically National Pharmaceutical Pricing Authority. And the mandate of NPPA is to regulate and control the prices of the medicines and also to ensure availability and affordability. Pharma sector, as you know, basically comprises of drugs, and by drugs we mean both medicines, formulations, and medical devices also. We are governed by the Drugs and Cosmetics Act, which where the drugs means both medicines and medical devices, and they are treated in a same manner as far as the Drugs and Cosmetics Act is concerned. Then again, pharma sector is also governed by the Essential Commodities Act as far as the pricing, availability, and other affordability issues are concerned. So there is a drug price control order which ensures and regulates the availability, affordability, and control over prices of the medicines and also medical devices. Then, of course, there is a Omnibus Act, Legal Metrology Act, which applies across the board to not only pharma, but all other sectors also. So in that sense, pharma is a reasonably well-regulated sector, and rightly so also, because of the very sensitive and important and the human life is concerned in this sector. So in that sense, it is a very well-regulated sector. As far as Legal Metrology Act is concerned, drugs, when under the drugs, as I said, there are two broad categories: formulation medicines and medical devices. Formulations are already exempt from the provisions of Legal Metrology Act. That is so because Drugs and Cosmetics Act has very similar provisions to Legal Metrology Act. And since because of the various reasons, because of the similarity and other provisions of between these two acts, formulations are exempt from the Legal Metrology Act. At the same time, medical devices as of now are not exempt from the Legal Metrology Act, and they continue to be governed under the various provisions of the Legal Metrology Act. Pharma being a very reasonably well-regulated sector and a lot of overlap between the Drugs and Cosmetics Act and the Legal Metrology Act, we have been requesting that medical devices also need to be brought out of the provisions of the Legal Metrology Act. Similar to formulations,
medical devices should also be brought out of the provisions of Legal Metrology Act. It is not exactly decriminalization, but it is also a broad thrust of the Department of Pharmaceuticals to ensure that compliance burden is reduced, overlapping between these two acts are removed, and Legal Metrology Act could exempt medical devices also. And for this purpose, we are working very closely with the Department of Consumer Affairs. CDSCO, the Central Drug Standard Control Organization, is another stakeholder. We three are consulting very actively, and we are planning to reach a solution very soon. And I am sure that that will result in reducing the compliance burden also, and also promoting the ease of business, ease of doing business. And when I say that we want to reduce the compliance burden and promote the ease of doing business, that doesn't mean that we are ignoring the consumer's interests. I can assure you that we strike a very, very fine balance between the requirements and the rights of consumers and the needs of the industry. But it has to be understood also that pharma industry, which is the biggest foreign exchange earner, if you discount the software services, which are services and not products, I believe the pharma is the biggest foreign exchange for the country. Pharma industry, India is said to be the pharmacy of the world, and during the recent COVID epidemic also, the pharma industry has done a tremendous and very good job in terms of ensuring the availability and at the very reasonable prices. So we will continue to maintain a very fine balance between the rights of consumers and at the same time ensuring that the compliance burden is to the industry is reduced and ease of doing business is promoted. And I can tell you that these two things to achieve these objectives simultaneously is possible. We have been doing that. We have been, in fact, I can say that with the use of modern technologies, if the right intention is there, you can at the same time promote the consumer interests also and improve the compliance burden also and promote the ease of doing business also. In the Department of Pharmaceuticals, we will continue to promote this thing. And as far as the decriminalization part is concerned, of course, we are already working on bringing medical devices out of the Legal Metrology Act, but we support the decriminalization part of it also, while ensuring that there is a fine balance between the rights of consumers and the industry. Thank you. The next speaker is Dr. Navneet Tewatia from Indian Pharma Industry. Very good evening. Thank you very much for the invitation to be part of this conference. Shri Rajendra Pratap Swainji, the Honorable Minister from Odisha, Chairman of the National Pharma Pricing Authority, Secretary Wagmareji from Maharashtra, and other dignitaries on the dais and the participants. I represent the Indian Pharmaceutical Alliance, the IPA, which represents around 57% of the Indian pharma industry, around 80% of the exports. Mr. Pant just mentioned that India exports to various countries, and we are net export revenue generator for the country. So IPA contributes 80% of that exports, and we contribute 85% of the domestic R&D investment. So in a way, IPA represents largely the pharmaceutical industry. And the chairman NPPA has largely mentioned about the pharmaceutical sector, that right from the initial phases of research and development to the manufacturing, to the distribution, sale, every aspect of the pharma business is highly regulated. There are various legislations, including Drugs and Cosmetics Act, and there are some overlaps, and that's why pharmaceutical, all the scheduled and non-scheduled formulations, they are exempted. And we also heard that the medical devices are also still not out of the preview, but there are a few points which I would like to submit here for consideration, that there is another segment and very growing segment of the entire pharmaceuticals business, that's the nutraceuticals. They're still not out of the preview of the Legal Metrology Act, and at IPA, we believe that nutraceuticals should also be out of it. They should be treated
as drugs. In addition to nutraceuticals, there are other products, which are governed by FSSAI. I'll not talk about that because someone from the food industry will be talking about it. But there are products which are for special dietary use, which are for special medical purposes, functional food, and also some novel foods, etc. They should also be removed because ultimately it will be reducing the compliance burden because these products are anyway governed. And also, I would like to say that in case of pharmaceutical industry, our industry is having two consumers, or one customer and another consumer. Our physician is the customer and the ultimate consumer is the patient. So there is an intermediary who prescribes the medicines and the patient buys it, or it's provided otherwise through the health services. So in our case, the decision of buying this product is not ultimately lying on the patient. It's the prescription of the physician, and we believe the physician's prescription is the supreme. So just to secure the safety and also to ensure that there is no risk to the life of the patient, and patient take what is prescribed to them. There's one point which I would like to very clearly mention here. IPA has 24 big research-based Indian pharmaceutical companies, and before coming here, we have consulted with them. So one point which they have mentioned is that although pharmaceuticals are exempted from the Legal Metrology Act, but it is often observed that it is the packaged commodity rules that is it confused with. Pharmaceutical products and other products, they are confused by the enforcement agencies, and as a result, often there are notices which are issued, and in a very recent case where for one such incidence, one notice was produced, and for the similar incidents, the company received 13 notices for the same incidents. It was related to an advertisement. So first thing is that the clarity should be there on the ground to the enforcement agencies, maybe in terms of the training or bringing out more clarity in the law that the pharmaceutical products are exempted, and nutraceutical, as I mentioned, if they are also exempted, this should be very clearly, percolated down. And also this multiple notices, in a way, this doesn't add to the ease of doing business. So that's one point. And another point is that, this Legal Metrology Act, whenever it comes into force, whichever products are still falling under the preview, it will be applicable from 1st October 2022 as per the current notification. There should be sufficient time provided to the pharmaceutical industry for the implementation, given a buffer period of maybe 6 months or maximum 9 months. The reason being, in pharmaceuticals, all the packaging material is pre-printed. And someone from the telecom mentioned that the size of the phone and equipment is shrinking. You can imagine what's the size of the pharmaceutical or other health commodities products. It's very small. So already it's highly cluttered. There are other laws and regulations which pharma industry has to adhere to. And that's why, when the packaging material comes, the batch sizes, the MRP, date of manufacturing, etc., that is printed at the time of packaging after the manufacturing. So if the implementation is not progressive and if not sufficient period given, a lot of packaging material, I just talked to one of the contract manufacturing company yesterday, there is always a stock of 3 to 4 months. And given the COVID times, companies have learned that they are maintaining a very good buffer of 6 to 9 months. All that packaging material will go waste. Apart from the wastage of resources, it's also a big threat to the environment because that will all be going waste and will be just discarded. So with all that, I would like to conclude. From IPA, we fully support our companies. They are fully committed to have full compliance as per the law of the land. And from our side, full support. So thank you very much, and thanks to the organizers. The allegation that you have brought, is it under the purview of the Amended Act rules of 2017 or 2011?
that you must give it to the department. Yes. So if you allow, ma'am, maybe we will follow up with a written submission with all our members' views. We'll be very happy to do that. Yeah, sure. That in details you give, because Yes. you have multiple numbers of notices that has been issued, Right. either under the garb of 2011 or under the garb of 2017 packaged commodities rules, which is applicable to e-entities. Just dilate upon that and give it so that department Right. will be in a position to clarify. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Shri Pankaj Fadnis from Indian Beauty Hygiene Association. Good evening, everyone. Honorable Minister, my co-panelists and distinguished participants. Thank you very much for organizing this kind of workshop. It's very, very helpful because we exchange many views and then some very concrete, fruitful outcome comes out of this kind of discussions. So thanks a lot for this kind of workshop. I think the main thrust of this workshop is this, that whether decriminalization is important or not. I think the principle is this, and this is our North Star, that all our laws basically are on the same fundamental principle, that Sadrakshanaya Khala Nigrahanaya. It means that law is there for protecting the good people and punishing the bad people. And is this what we are achieving with this? I think answer is so far yes, definitely we are definitely achieving this with the present law. But is there a scope to further improve this? And that's where I think the discussion is going on. Many points were made, many concerns were expressed in favor of decriminalization, against decriminalization. And perhaps this discussion is going on not for today only. There's a history, I think, since last 4-5 years, I'm witnessing that a lot of debate is going on around this. There's a lesson for us from other laws. For example, Companies Act. The government appointed a committee under the chairmanship of Mr. Kotak, and that committee, there were representatives from the government, from the industry, and all concerned areas. That committee recommended decriminalization of many provisions. Out of, I think, 81 provisions in the Companies Act, 51 provisions have been decriminalized very recently, in last 2-3 years. So it's a very welcome step, because ultimately the aim is, in the beginning, as I said, the protection of good and punishment to the bad. If that has been achieved, then there is no need to further improve. But as I said, that as we move ahead, there is always scope to sort of improvise whatever we are doing. With the changing times, we need to really look into these matters with more minutely. I represent IBHA, Indian Beauty and Hygiene Association. It's an association of cosmetic manufacturers and brands. It's there in existence since 1937. It has almost 40 manufacturers and brands, large and small scales. We have a lot of small issues which crop up. For example, complete address is required. Customer care details are also required on the package. Now, company address is given, email ID is given, phone number is given, but by mistake, consumer care details, these words are missing. Now we immediately get a notice. Practically speaking, is there a harm caused by not printing those words? Because in this Google era, everything is available. On the package itself, all the details are available. Now, with this kind of small slips, whether we can say that this is a serious offense, there should be criminal prosecution, or we can take some lessons from our other act. Somebody has already explained about Food Safety Act, where there is a provision of improvement notice, and whether that can be issued. I think that's where I think we need to focus now. There are definitely there are definitely pros and cons while decriminalizing some provisions. Some concerns were expressed that
if there is no prosecution, if there is no punishment, or if there is no imprisonment, then there is no deterrence at all. But again, as I said, that we have the lessons from other acts. FERA was there earlier, it became FEMA. Again, many provisions were decriminalized. Same thing happened, I just gave example of Companies Act. Same thing happened when there was Food Adulteration Act, which converted into FSA. Again, decriminalization took place. So there are many such instances within our own country. And as we grow, as we are evolving, I think that the trust has to be there between the enforcers, enforcement agencies, and the industry. There are definitely some players who are bad players, and they should definitely be punished. And harshest punishment should be given. But there are definitely some concerns which are bothering the industry where there are minor slips, where the consequences are very significant. How do we address those issues is the main concern before us. So many points have already been made. I don't want to again reiterate those points because of the paucity of time, but I would just give last suggestion that if required, I don't know whether we have crossed that bridge, but if required, we can take cue from Kotak committee, and if that kind of committee or work group, if is formed, so that there are many concerns expressed, many views were expressed. Most important views are coming from the consumer's perspective, and if that kind of committee, if we can be formed with all the stakeholders, perhaps more concrete and absolute solution can be brought to the forum. Thank you. Thank you. I'll now invite on the dais Shri Kajal Debnath. He's a senior member of SHM and CRO DFM Foods. Good evening, everyone. Honorable Minister and my dignitaries in the dais. This is very important. Since morning has been the discussions. I represent Ashutosh. Ashutosh is a reputed associated chambers of industry, which is completed more than 100 years of its association. And since morning, the discussion is that now we have clubbed food, drugs, cosmetics. This is one of the major, I think, area which is creating those numbers we have seen this morning in the first offense. A lot of numbers has been there. A lot of has been talked about this since this morning. Just one thing I just wanted to bring to everybody's notice that if we as a country aspire to grow and wanted to see the vision that, okay, we also wanted to be like more than what US or any other developed countries there, we have to start with somewhere. There has to be some change has to be there. Similar discussions we are doing in 2006, 2005, when we brought a change. Industry has worked closely with the Ministry of Food Processing and Ministry of Health, and it was understood that those kind of regulatory regime has to be modified, has to be changed. Worldwide, a delegation from government offices has gone there, studied, and then those changes has been brought. And also there has been discussion that one food law, one nation. Those discussion also has happened. And now in the similar lines, I think it is very important that on legal metrology also we need to have some kind of trust. So it's not like, there has been a lot of good work has happened with the industry collaborations, bias for actions to, those are the various kind of competencies which the behavior from the industry has been there with the ministry. If I talk about recent USP which has come, you go and see a lot of industry products has already implemented this. Although it is kind of commitment from industry to do that, but at the same time there are some concerns which we have discussed with Rohit sir, the secretary. He has been very kind to understand, and then there has been a committee has been formed, and there has been FAQ has been getting formed. So similar approach even for these, for all these, whether it's a nomination. Since morning a lot of discussion has happened, so I'll not talk in details. These are concerns for industries, like how a directors, whether a product which of 100 grams is not meeting the
not permissible error. It could be for various reasons. The machine is running and millions of pouches are coming, and there has been some fluctuation of the kind of power has happened, and because of that there is a variation has happened and a lot of packets has gone. The quality control has got some time to check these products, and during that time those things have escaped. Now those packet has been found and has been a kind of, it has been booked. So is it the way? I think we should have given a chance to understand. And industry cannot deceive consumers, and with deceiving consumers any brand cannot be. Whether you take any names, all of us we use from since our morning tea or toothbrush to whatever we go to sleep. Whatever consumer products, food products we use, so whatever we use, sir, so we this cannot be appreciated, and if had it been a deceiving consumers, this has been appreciated only by these consumers. And the spurious things which has been there, the people who does not follow the compliance, they should be booked. And once they should be booked, they are unorganized people, they should be brought into organized sectors. Those discussions should be brought. That is not representing the whole country. The country which is representing what good work we are doing, we should showcase, and we should make it ensuring and giving a trust. Even if it does not work, we can always go back and change the law. I mean, we should be able to do it in a phase-wise. So if today director has to be nominated, we make it for like FSSAI regulation, which is a similar regulations. A lot of things like declaration, ingredient declaration, so similar things we haven't done, and we have done it in 2006. Now we are sitting on 2022. I mean, like, this has been proven. So similar such kind of things, success stories, we can have a kind of piloting, having data, feedback, and start doing it. And then we say, okay, these are the sections we have done it. We have graded its punishment also. We have certain things we have done. And then this has to be practiced. And I think one more thing, Minister Sir, we should also practice. There should be a lot of industry should be made responsible as a champion to really propagate how which has to be done. Like a lot of MSME sectors has to be handled to see how the declaration has to be made, how this has to be made in the various machines, various settings has to be done. Otherwise, many times because of ignorance also, these things happens. Because otherwise, for any restaurants, any places where consumer rather ask, "Bhai, ye thoda sa kam ho raha hai aur thoda zyada dal do." So there is the, I mean, and that industry fellow has been always been kind ki nahi aur le lijiye, something like that. So I think that relation somewhere we have to propagate, rather than we should look at the negative side of it, and we should look into it. If any font size is very small, but you can see 100 gram hai kya. If there is a specific regulation, sir, that if you declare 100 grams, on the both side, it has to be, space has to be left, double the font size and equal size from the top and bottom. So what happens, any pouches is running in the machines and it is printed. So because of some fluctuation, there has been some kind of setting has been done, but consumer can easily see that it is 120 gram. But officer will say, no, there is a 1 mm here and there has happened, you have been booked. So from the whole company, from the top to bottom, has been running pillar to post to solve that problems, rather than focusing on the business or improving that. So that's the way a lot of productivity is getting lost. We need to take a cognizance of this fact. And likewise, millions of plants, if they are only engaged to resolve such issues, I think we are not really doing any productive things. And that's the way we should really look into this. Those can be addressed in a different way, improving notice or any other instrument, but not this is the way. And industry deserves to get a chance to really rectify and come back. Yes, for over so many years we have done it. We aspire to go it forward. Please give us a chance. Whether you name it as a decriminalization or modification, there has to be some change. We cannot go with this kind of law anymore. And with these things, I don't want to go in details of granularity. A lot of my speakers has said, whether it's a labeling, whether it's a nomination of directors, whether it's a permissible errors, and many other small things which really need to be looked into, and it's not harming any consumers actually. So with these and food industry
takes a lot of things. We do collaborate with industry association, as I said, that regarding USP also we have been doing. So we always been committed to come forward and sit with government to find out a solution to this. This cannot be only through this one session of summit. Yes, a lot of good points will come, but there should be a lot of other committees, sector specific also shall be made, and a lot of discussion should happen. And we should make a progress even in a phase-wise manner also, should be the starting point. We should not keep to start it also. And that will deter, progress of the industry, progress of, we talk about farmers, double the income of farmers. How a food product can create without food processing industry growth? It is giving 9 to 10% of GDP. So I think very important. I congratulate Legal Metrology, Ministry of Consumer Affairs, Honorable Minister Piyush sir, for organizing this. And I think it's very important. With this, I think I just close my discussion. Thank you. Thank you very much. I'll now invite on the dais Shri Vijay Wagmare, Secretary, Government of Maharashtra. Honorable Chair and dignitaries on the dais and off the dais, good evening. The good thing about our session is that almost everything is covered, and it's more of a recapitulation mode that we are into, because whatever sector that we are dealing with or talking about, the act remains the same. So most of the points I think are more or less the same. So I would not only limit to the packaged goods as such and the non-alcoholic beverages. I find that there are not only 2 points that we are discussing. One is about consumer protection, and secondly about ease of doing business. So when we are talking about decriminalizing, we have to see whether it is actually leading to ease of doing business. That is the only point, because whenever there is a business done, that is done, and you get a consumer. And once you get a consumer, you need to have a protection against it. And we have been talking about finding the fine balance. And I think in the land of Buddha, we have to be going for the middle path. And that is what I would be talking about, and restricted to the provisions. So when we are talking about decriminalization, we are talking about intent, the main Syria part of it. So that is one part. Ease of doing business, when we are talking about it, we are talking about the process, whether whatever process is being prescribed, is it good for the business, is it conducive for the business? It is being presumed or assumed that whatever is the Legal Metrology Act is actually coming in the way of the business, which I don't think is the case, because if you are talking about packaged, non-alcoholic beverages, if there is a distillery or any other good product, organized product, you will find n number of packaged drinking waters in the market. And if you don't have a regulated, somebody to regulate that, then I don't think it is going to be good for businesses who are actually into organized sector, or for the consumer also. So let me restrict to the ease of doing business. The word that was used in the morning session was Inspector Raj. हम अभी भी चाहते हैं कि Inspector Raj रहे. तो उसके लिए जो हमने भी कहा है, जो हमने भी कहा है कि you need to have the online, the online processes that are there. Digital intervention करेंगे आप categorize करेंगे businesses को, तो better रहेगा. If you categorize the business, हम कहते हैं कि छोटे छोटे ट्रेडर्स है, वो नहीं है, सब्जी वाला है, वो क्या करेगा and all that. So just categorize the number of businesses into different categories. We can't equate them to somebody who's selling gold or silver. तो आप उसको categorize एक बार कर देंगे तो it will introduce the randomness. तो आपका वो सबसे लो कैटेगरी में चला जाएगा, उसके पास में आपका इंस्पेक्टर जाएगा ही नहीं, because what's the point in going and apprehending a सब्जी वाला compared to somebody else. तो वो randomization अगर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो इंस्पेक्टर राज का जो कहना है वो शायद बहुत कम हो जाएगा. So that is the one part of it.
then there are alternative mechanisms. When I was talking about petroleum sector, तो पेट्रोल पंप में आजकल जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी का आदमी जाता है, जो मुझे बताया गया है, he says कि he alone is not responsible for whatever is happening there. There are 3 or 4 people who are going with him, and all of them have to sign. One is the company person who is there, and one is the legal metrology person who is there, and then there is third person. So there are 3 people who actually verify कि what is happening. So second is about introducing something called hallmarking. आप hallmarking का बात कर रहे थे. So these kind of independent mechanisms can lead to having a better business and ease in that. Now सर ने सुबह जो बात की थी कि 1 लाख का जो स्टैटिस्टिक्स है, तो आई वाज लेकिन एज अ सरकारी अफसर आई एम वेरी एप्रिहेंसिव अबाउट इट. आपको शायद 1 लाख बहुत ज्यादा लगता होगा, मुझे बहुत कम लगता है. मुझे लगता है 1 ही लाख केसेस है, एंड हाउ कम ओनली 1 लाख केसेस आर देयर. सो आई आस्क्ड माय पर्सन, आई सेड कि कौन सी केसेस है. तो ही सेज कि सर वो केसेस जो है दे आर बेसिकली अंडर सेक्शन आई थिंक 24 विच इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उसकी केसेस. अगर वैसी केसेस है then I think there is a case of excluding certain sections. So let us not throw the baby with the bathwater. What we need to do is focus on certain sections. I will speak about the sections. One is the section 26. Section 26 अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा है tampering of the weights and measures. So tampering shows the intent. There is a criminal intent. तो वहाँ पे section 26 में है. सेम इज देयर इन सेक्शन 30 सी एंड डी. सी एंड डी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी शॉर्ट एंड एक्सेस वाला जो प्रोविजंस है दे शो द क्रिमिनल इंटेंट. देन देयर इज सेक्शन 36(1), सेक्शन 36(2) एंड ऑब्वियसली देयर आर सेक्शन 37, 38, 39, 40 विच आर वेरी फंडामेंटल. तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पे दिखता है एनसीरिया है, इंटेंट है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली एम्बेडेड इन दैट एक्ट. एंड देन इन दोज प्रोविजंस आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर keeping those provisions. Rest of the provisions आप उसको एक बार मौका दीजिए, 2 बार मौका दीजिए. इट्स अ मैटर ऑफ बिहेवियरल साइंस. वो बताएंगे आपको कि कितनी बार मौका देने के बाद आदमी सुधरता है. 3 में देगा या 4 में देगा. सेकेंडली देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट कि 10 लाख कर दिया तो सब्जी वाले का क्या होगा. वो जो आई थिंक दिस इज एन अपर लिमिट दैट इज बीइंग स्पेसिफाइड. दिस इज द अपर लिमिट कि 10 लाख तक कर सकते हैं. आज की डेट में सिर्फ 25,000 तक कर सकते हैं. तो ये अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने काफी अच्छा बताया. कैन वी जस्ट ग्रेड देम? वी हैव सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ द केसेस. हमारे पास आज की डेट में इंस्टेंसेस ऑफ केसेस है हमको जहां दिखता है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ केसेस विच हैव बीन बुक्ड टिल डेट. तो आप उनको ले लीजिए, लिस्ट कीजिए, उसको कैटेगराइज कीजिए कि भाई ये फॉन्ट साइज का केस है, ये इसका केस है, ये स्पेसिंग का केस है. तो ऐसी अगर केसेस है वी कैन लिस्ट देम इन एन एनेक्चर एंड से दीज आर लाइक माइनर काइंड ऑफ केसेस व्हिच कैन बी एक्चुअली compounded n number of times because those are not actually intentional, those just happen. So that is what I just wanted to take. One is about intent, second is about ease of doing business. Thank you for listening to me. Thank you very much. I'll now invite on the dais Shri Vikas Salwar, Deputy Director, FSSAI. Good evening, ladies and gentlemen. Respected Honorable Minister Sir, and all the dignitaries present on the dais, and all the respected officers and media personnel and other participants. As already summed up by my co-panelist, a lot of discussions has already happened about the various provisions and their interplay with the other acts and provisions. So first of all, I would like to share with the House a few details that related to Food Safety and Standard Act 2006. As the most of the industry people must be knowing that we are going for the comprehensive revision of our FSS Act also, along with the licensing regulations, which are basically our main pillars of enforcement mechanism under this Act. So 3 provisions that we have specifically recommended for decriminalization under our own Act is, one is that in case the food is found unsafe, but no injury or loss of limb or life has been caused to anyone
then that offense can be compounded. Means that can be just go for the adjudication. At present, the mechanism is that even if the food is unsafe, but no injury has been caused to anyone, despite that, the offense is a criminal in nature. So it is a very big change and very, I think it's a great relief for the industry also. Many times because unsafe could be of various reasons, but practically they may not have a significant bearing upon the health of the consumer. So this is a key change that we have already proposed to the ministry. It is not consumed by somebody. Yes, sir. Many times it is not consumed, or it is sometimes consumed also, but no, it's not significantly related to the any harm. Because if you see the definition of unsafe food now, many times the food analyst, practically speaking, many times food analyst does not or fail to correlate with the deleterious nature of the unsafe food. Means they just go by one subsection and say since this is not present or this is absent from the food, it is unsafe. But the intent of that provision is that it should be proven beyond reasonable doubt that it can cause injury to someone, basically. So substandard, if you see our act, there is not much difference in terms of the definition substandard and unsafe. The cardinal difference is that it should be injurious to the human health. But practically, these facts are not appreciated by the food analyst, which leads to the unnecessary prosecution cases. So we are trying to address that aspect without compromising with the health and safety of the consumers. Then another provision is that earlier, if someone obtains any approval or license from the authority by giving any false information, then that was also a criminal offense. But we have decided that we may ease that also by making it an adjudicable offense, although we have increased the fine so that we may retain the deterrent impact of the same. Further, we are also going by the philosophy, let us first trust the business and then verify. Rather than going the other way around, we will presume that all the businesses who are actually intending to do the business will not cheat us by giving us any false information or documentation. Then the another provision is that punishment for carrying out food business without license. This is a very big issue, especially when after 16 years of its implementation of this act, we may see that still a large section of our food business is still in the informal sector. So our approach of our government as well as policies are towards to bring these informal sectors within the formal domain. So key challenge that they faces is that they are doing business and they may be doing bona fide business also, but because of this provision, they all become liable for prosecution. Means it is not that they are deliberately deceiving or they don't want to obtain simple 100 rupees registration or 1000 rupees license, but the ground reality is that still a large section of our economy in the food sector is in formal sector. If we want to bring them in the formal domain, let's first give them some relief. So we have proposed to decriminalize this offense also. If you are found, although if you are found without carrying out food business without license, then you may be liable for a fine up to 3 lakh rupees. That is up to the court to decide. That is up to the adjudicating officer to decide. Then with the legal metrology, we have just one provision mentioned in our all regulations, that is in the packaging and display, or that is now that is the latest amendment of 2020, in which it reads that the size of numeral and oblique or letters required for declaration of net weight, retail sale price, date of expiry, or best before, or the use by date, and consumer care details on the principal display panel provided in the Legal Metrology Act 2009. So this is the provision that we have incorporated in our labeling and display regulation, that these declarations should be as per the LM Act 2009. One of our senior co-panelists just talked about this improvement notice. It is a very, I think it is a very useful and facilitative provision under the FSS Act. Under Section 32, an FBO may be given an opportunity to improve upon. So it is a very good measure, rather than straightway going for prosecution or prosecuting. If it is felt that the offense is minor one that can be improved upon,
the concerned food safety officer or designated officer may issue an improvement notice to the food business operator so that he can improve upon. So these are the certain salient provisions where the Food Safety Act and Legal Metrology Act intersect. So here I would put my words to rest. Thank you very much for listening. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. I'll now invite Shri Asheen Sanyal from Voice. Honorable Minister, sir, dignitaries on the dais and off the dais, a very good evening to all. Representing a consumer organization, I must say that this is an exercise of trying to make the North Pole meet the South Pole, because the firm belief is that if business is correct or right in suggesting something, has to do something with a consumer detriment. So one has to prove me wrong in that particular sense, because of simple reason that it's a matter of experience over a period of decades that we have seen that where all businesses have gone wrong, why they have gone wrong, and what corrective measures have been taken by respective governments, states to correct them. In fact, there is nothing called voluntary or philanthropy in business. They are there, and we firmly believe in that. They're there to make profits. They're there to make business sense out of their operations. They pay very high salaries, so they have to survive. And profit being the motive, obviously, consumer health is obviously one of the last on the list as far as the corporate brands are concerned. So this is a matter of concern. Today we are obviously here to talk about legal metrology amendment and criminalization, decriminalization of the entire act. Let me take cue from what Director from FSSI just said. Now, consumer organizations firmly believe that the PFA of 2006 repealed by the FSSI Act is something of a consumer detriment straight away. Because of simple reason, what has been taken away from that PFA Act? It's been decriminalized. Thereby, the penal options put by FSSAI per se, and it's just a direct comparison, in fact, have been welcomed by the industry because industry has money to pay. And whenever you're talking of doing ease of business, believe me, any law, any act, or any regulation will come in the way of businesses flourishing. Because the law is made to actually act as a deterrent. And if it doesn't act as a deterrent, it's not an effective law. So we are actually comparing each other and contradicting each other by saying that, the law should be diluted, act should be diluted by removing certain provisions. Criminalization, we firmly believe that should be minimal in terms of the so-called criminal element. But the question here is, who's the judge and the jury? Is the officer on the ground the judge and the jury? Is the food safety officer on the ground the judge and the jury? Who's giving that judgment that this is criminal, this is not criminal? We have to therefore lay down basic principles of decriminalization in terms of suggested by numerous persons in terms of categories being set. Very obviously, you won't equate a Sabjiwala with a MNC. Now, when MNCs goes wrong in any of the Legal Metrology Act provisions, believe in me, they are violating the law even more because they have automated systems, they have trained manpower, they have ultra-modern factories, highly paid staff to control all factors just to ensure that they comply with the law. And if they are not complying with the law, then the MNCs and the large corporations are first to be blamed. They are the first criminals. What do you mean a consumer just has earned a loss of 1 rupee? This is ridiculous. Imagine that 1 rupee means so much to that consumer multiplied by so many things he's buying per day, per hour, per week, per month. And imagine that 1 rupee going into the pockets of that corporate or brand multiplied by the millions of products that he's making.
it doesn't make business sense. It does. So there is that intent, as everybody was talking about the intent. There's a very strong intent to do so. Of course, I am being an extremist, being a consumer, in fact, but we have seen this happen. And to basically decriminalize, one has to play a very, very sensitive role as regulators, as government, as the department. Because of simple reason, the intent is never very, very clear until it goes for a judgment. So we have to make provisions to ensure that decriminalization process in the Legal Metrology Act is done with due caution, with obscene caution, and not to believe in large companies, small companies, MSMEs. This voice of decriminalization has not come from the small vendors, which the Honorable Minister was talking today morning. वो सब्जी वाला क्या उसको आप कोई चलान करता भी है उसको? I don't think so. वो चलान तो उन्हीं को करता है जिनसे जहां से उनकी वो सोर्स ऑफ इनकम बनती है, उसके डिपार्टमेंट का एक्सचेकर का सोर्स ऑफ इनकम बनता है. सब्जी वाला बेचारा क्या करेगा? So is ease of business from, are we talking of the so-called the MSMEs? Are we talking about from the street vendors? Or are we really actually evading the main topic, that is the large corporations? We are actually talking of the large corporations operating in the Indian ecosystem as so-called bona fide sellers, people who believe in that brand. And the truth is that we as consumers believe in brands because we believe they are giving every worth of that money that I'm spending. So the word of caution here is that distinguish not brand-wise, not MNC-wise, not corporate-wise, but distinguish between the thela-walas and definitely the large corporations. Yes, there should be that particular level of compounding. And just taking another very small example of, let's say, Motor Vehicle Amendment Act, passed in 2019 along with the Consumer Protection Act. What does the Motor Vehicle Act do? We did a 5-year discussion on that particular thing. Believe me, 5-year discussion before the act could be passed. There are compounding, offenses. Most of the offenses are compounding offenses, and with a heavy fine as compared to what it was in 1988. But the criminal offenses, basically, for example, drink driving, underage driving, creating casualties on road in terms of IPC 302, 302A, these are the things that are non-compoundable. They are basically meant for the civil courts. Exactly similar way, this particular motion should be looked into by the Consumer Affairs Department, that when you decriminalize, please look into the categories very carefully, and those categories not emerge from the sectoral point of view, in terms of, electronic sector, food sector. That's not the way to look at it, in fact. It is the livelihood of many. Look at from the livelihood point of view. In fact, in terms of income that is generated, GDP that is creating, that's the way to look at it. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the House is open for questions. Any questions? I am from Legal Metrology, Telangana. Here. I am Regional Deputy Controller, sir. Legal Metrology, Telangana, sir. Sir, as of now, just leave the legal metrology, decriminalization, everything, sir. That's what I'm trying to say is, take the consideration of stents which are used in the medical hardware. So previously, the hospitals used to charge around 2.4 lakhs for each stent. After it came into legal metrology purview, the prices are drastically decreased, right from, you can say, 58,000 to 70,000. Generally, our industries, they see on the profit motive. But if you take into consideration of consumers, the profit is very, very high, sir. Just I am giving the example of this. Sir, another thing is that previously in morning session also, most of the people talk of that excess pricing. Say, consider if I go to
star hotel something. Of course, star hotel is not our purview, but you can see some high rated hotel. They charge around 4,000 for a liquor or some any bottle package item, whereas it costs around 1,600. But our act says that only penalized for 2,000 rupees. In a day, that hotel man, they may earn a real profit of 1 lakh. But he doesn't mean, I mean to say, you don't bother to pay 2,000 rupees as penalty. But our inspector daily cannot go to a hotel and register every day case. But see, what I am trying to say is, just see whatever the act in purview of consumer interest. That's it. You mean to say that electricity, consumers, it is not electronics, electricity means the state electricity boards. But the tariff, he's talking about what? So he's talking about one was medical device. Medical where devices he and said excess charging in that package. initially, if you remember, sir, that the stents were they were costing very, very high. And then they were brought under the Legal Metrology Act, and then the profits have actually reduced. So this is like insane profiteering on a part of... No. I mean, stent prices were reduced not because of legal metrology. I don't think legal metrology has any price control. The stent prices was controlled by NPPA under the drug price control order. And there is a methodology called trade margin rationalization that we are working on, and we have implemented it also for some products. So that brought down the stent prices from, as he said, from very high levels to around 20 to 23,000 rupees. But that has nothing, the stent price control has nothing to do with legal metrology. I don't know, I'm not a legal metrology expert, but I don't think price control is, stent price control is part of legal metrology. Price control is with NPPA only. But the department had actually requested that this should be brought under the Legal Metrology Act. And that is how the medical Metrology has devices... acted as a sword of Damocles. That's why it was in the news. That's right. Because of her department. That is the deterrent. That's right. He is unable to catch the sentiment that he's projecting. After that only it came out. In Tamil Nadu, it was a headline news. Yes, sir. Most of states they have. Sir, another thing is that putting a green mark and red mark, vegetable and non-vegetable. Sir, farm industry, they got some Bombay High Court, some state stating that it is very difficult to prescribe whether that particular molecule is vegetarian or non-vegetarian. Most of our Indians are very sentimental. We consume only vegetarians or something. So that is a problem. Do you have in our budget for manpower manning this department? Your budget has been slashed. Sir, actually, at the center, we are basically into the policy making. Because it is under concurrent list, it is actually the states who have to do the day-to-day administration of the act. So I think, sir, if we use technology, as one of the earlier speakers had also mentioned, that if we are able to use technology in a big way, then perhaps this, this harassment issue that the industry cites, that can be reduced. That can be standardized. That can be standardized. It can be made more transparent, so that even like every time you cannot flog and say that it is the inspector who is making money, and because of that he is issuing notices. There can be cases where there are genuine, lapses. And consumer cannot be, he cannot be held responsible that every time you have to see what all has gone wrong and you file cases. One of the important things is for this whole regulation of this act is to guarantee the consumers maybe even an assurance of what the weights and measures that have been claimed are what they are. So we are not saying that you make untruthful claims. It is only to this respect that we are trying to regulate. That whatever is written on the packet should adhere to what it is. You have to standardize the entire country. That is what he wants.
that in that part of the world and this part of the world, you have to give a standardized yardstick from center. Now that your budget has been slashed, that I understand, all the states are also going, there is a manpower, less some manpower. In our department also, we are finding it out. Anybody else? Sir, I am Pandurang Biradar, Joint Controller from Nagpur. Sir, this workshop should be called as a partial decriminalization. हमको ऐसा लग रहा है कि सब decriminalization हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए, तो it should be called partial decriminalization. जब हम decriminalization की भाषा करते हैं तो सब ये सब offense होने की बात है. तो offense ना होना चाहिए. कंज्यूमर का इंटरेस्ट इन अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होने के लिए कंज्यूमर मस्ट बी एजुकेटेड सर. उस पर ज़्यादा चर्चा होना चाहिए. हम कितना भी फाइन करेंगे तो वो लोग नहीं रुकेंगे सर. जितना ऑफिसर अगर फाइन करने से जितना कंट्रोल आता है उससे ज़्यादा अगर कंज्यूमर एजुकेट हो गए तो ज़्यादा आता है सर. अभी जितने भी केसेस होते हैं वेट एंड मेजर के सर, इतना पॉपुलर डिपार्टमेंट नहीं है सर. जिस पर केस होता है उसे पता चलता है मुझ पर केस हुआ है, जिसने केस किया उस पर पता हो जाता है. बहुत लोग नहीं जानते सर. इट्स अ फैक्ट. I have been working in the department. हाँ. You want that there should be massive IEC activities. जागो ग्राहक जागो जैसे. ज़्यादा होना चाहिए सर. That has to. It's my personal experience sir. I have been मैंने एक WhatsApp number. IEC budget madam. That has to be done. और we are going in for the free market economic scenario. What the economy ruling the roost outside the country also has a impact on our internal economy. What is you? हाँ, बाकी डिपार्टमेंट का जब कार्रवाई होता है सर पूरा मीडिया का अट्रैक्शन हो जाता है. मगर जब वेट एंड मेजर का कोई कार्रवाई होता है तो कोई न्यूज़पेपर उसका न्यूज़ भी देता नहीं है सर. इसलिए लोगों को पता भी चलता नहीं कि ऐसा वेट एंड मेजर है. इसलिए तो ज़्यादा इस पर कंज्यूमर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, मेरा कहना है सर. You mean to say that ease of doing business is getting more focused, and whatever action you are taking, that is not being in the public domain. मैं वही बोलने वाला था सर. There are 999 कस्टमर है और 1% बिजनेसमैन है. मगर we talk more about businesses. तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर. Always there should be the more focus on the consumer. Department is for the consumer. So wherever there is organization, wherever there is a workshop, तो हर बार हम consumer interest के लिए बोलना चाहिए सर. हम बोलते कि investment असर हो जाएगा, ease of doing पर business पर असर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर. If you protect interest of consumer, everything will be aligned. You mean to say that decriminalization should not mean that we pardon criminals, but it should be used in a non-discriminatory manner. It should be partially decriminalized, sir. Yes. अगर नेट कंटेंट का केस होता है, अगर इंडस्ट्री दूसरी बार करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है सर. It should be criminalized. वो क्रिमिनल ऑफेंस ही होना चाहिए सर. अगर कोई वेट एंड मेजर में फर्क करके माल ज्यादा लेना अलग है और गलती से माल कम देना अलग है. Sum total of his submission is that the business has the upper hand. Whenever there is a clash of interest between a consumer, whatever he might be on the last rung of the society, that man is a consumer. If there is some interest which is contrapuntal to the interest of the ease of doing business of the business organization, business people have the upper hand. So consumer we must give more. No, businessmen should have upper hand whenever we are talking about income tax, GST and all other things. Whenever we are talking about consumer protection, consumer should have upper hand, sir. Good. Consumer interest के बारे में बात होना चाहिए सर. Anybody else? Sir, just to, if you allow me. तो कंज्यूमर इंटरेस्ट के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि हम लोग सभी ई कॉमर्स में आजकल घर से ऑर्डर करते हैं, पसंद नहीं आया रिजेक्ट करते हैं. कंज्यूमर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कर देते हैं, कंज्यूमर को जो भी चाहिए रिप्लेस भी करते हैं. सो consumer, I mean there is something like industry cannot grow without consumer deceiving consumer, and it has been there somewhere. Sir, but when the legal metrology things are coming in the picture, I totally agree with you. Everybody has to be made aware what is right, how it is to be done right. That is what I am saying. On that area, there has not been much. You also do it in your CSR activities here, where you make millions out of money. I am saying that you also take up because similar my FSC director also no, say that's the fast track training by FSSI. I think
there are some lakhs together training has been done across industry, online, offline, and lot of champion has been made. तो उनका काम ही था, corporates को भी बोला कि you also take participation of so many things, and this has been a gradual improvement all industries among like this. So I fully agree with you that is something is a change of the game actually, the whole stuff. Laws are made not to create barriers to trade and industry. Yeah. They set the minimum standards to conduct business and provide the best value for money to the consumers. This is the benchmark on which we must work it out. So in our state, our Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik ji has made 5 T. Each one of us have to abide by it. We are accountable to the citizens. Like that, there should be some accountability to the entire industry people. Come one, come all. We are making free market economic scenario in fusion into India. But that doesn't mean that you are above the law. There's some deterrence should be there. We will facilitate. But facilitating doesn't mean that riding roughshod over the interest of the consumers. That is what he wants to tell. Definitely. Centric. It should be consumer centric. Yes, sir. At least this department should be consumer friendly, sir. It should evolve. It should. Yes. Consumer protection. ये department के बारे में तो मेरा ज़्यादा उम्मीद है, sir. Now your senior man is going to substantiate. Just one point. When we are talking about consumer protection, our department also has what is called as district forums. We have district forums at the district level and the state level also we have. And just to give you a brief, there was a parliamentary committee which had come to Maharashtra, Mumbai, regarding the increasing number of grievances that people are having against the e-commerce. So let us not say that e-commerce के कारण में हम consumer को बहुत अच्छा rights दे रहे हैं या हमको बहुत दे no, we are giving lot of rights to them of refusal and all that. There are so many complaints where people are saying कि हमें कोई मौका ही नहीं मिलता है कि हमारे grievances हम address कर सके क्योंकि everywhere you have a helpline and there is no person. So it is just like the virtual meeting on July and the practical meeting today, physical meeting. So that is the difference. Yes, sir. So the deeper we go, finally the consumer gets shortchanged. So that is a fact. So I think my department person has rightly said that as a consumer affairs department, consumers is at the center of our discussion and should always be at the center of discussion. Thank you. I think no more questions. I have a point to make, sir. Please make it. Please do. And this is more of my personal, I would say, observation that, I heard it with some of the business leaders that, the women in leadership positions, having the directors booked is one of the reasons that many people, especially in the family business, would not like women to be the directors because they'll have to go through this harassment. So please, ma'am, have a look at it. You can analyze, how true it is. In this department, it is gender equality. Madam is at the helm of affairs. Yes. You must see that. So that I have heard it from a couple of people that this happens. She is at the helm of affairs. So you can't say that gender equality is not met in this department. Here it is there for everyone to see. Now I hope the meaningful discussion and valuable suggestions made by experts in this field will help Honorable Minister Piyush Goyal ji to take suitable actions and bring up a very good Legal Metrology Act which will be appreciated by one and all, where everybody will have their say. With these words, I thank the panel of experts. Thank you. Thank you. Let's pose for a photograph now. Thank you very much. Madam, can you honor us? Ma'am, you come here. Come. Of all the persons of the world, please come. Ladies and gentlemen, a round of applause for the distinguished dignitaries present on stage for a very insightful and a thought-provoking You can session. come up. Anybody else who wants to be part of this?
Thank you very much. Thank you. I request Ms. Nidhi Khare to please stay back to render the closing remarks. I take this opportunity to thank everyone who participated, and right from the morning, I have seen the kind of energy in this room. It has been simply unparalleled. We never thought that so many people will actually physically join this meeting, and the consumer organizations, or whether it was the industry organizations, the officers from different states, everyone has participated, and I really thank from the bottom of my heart all who attended. I also want to thank my own team, Anupam, who led it brilliantly, Ashutosh, Mr. Dikshit, and above all, our secretary, Mr. Rohit Kumar Singh, who has led the entire team to have this as a very successful event. I look forward to your suggestions. There were people who also joined online, and from the very beginning, there were many people who could not attend physically. They had also joined online, and I also want to thank them. I feel that more such occasions should be organized, because when we actually hear each other's perspective, we can also, make changes in our approach. And I'm sure this workshop will pave way for the intended benefit. We will definitely look into it, that the minor harassments which are unnecessarily caused, they can be done away with. But at the same time, the bad people need to be punished, and that we can assure the consumers, consumer activists, and also the consumer organizations. Thank you very much. Please, I welcome you to the tea. If you can now join us for tea. Thank you. Thank you very much. We request the gathering to please join us for high tea. The same is organized in